के आम बॉम्ब ब्लास्ट काम टॉप क्लास मेरा शांत सा मिजाज फिर भी अवाम बहुत मास जैसे नाम मोहनदास मनी ऑन माय माइंड गांधी विचार मेरे साथ नमक हराम लो पर मैं खाता स्वाद अनुसार पिछले मार्च तक थे गिने चुने यार मेरे साथ अब ये सफर लगे डांडी मार्च 1000 मेरे साथ घमंड जन्म जात ना किसी को कम तू आंख आज दिखता आधा जो वो बन ही लेगा पूरा चांद बने फैनिस लाइन से मेरे चंद साल पहले आज भी ठंडी कर दें रैपरों की जल्दी कहाँ क्रिमिनली अंडररेटेड बड़म फाइन दो कत्ल करे गाने मेरे टुल्ले बोले फाइन दो को साइन करने की सोचो मत सालो मेरा साइन लो देख आगे सर पे मेरे टांके क्योंकि पार्स करे माइंड ब्लो बावे सीनी गलत आए की जिंदगी मुझे जीनी गलत बावे सीनी गलत यार तो सब सही थे मैं फीली गलत हुआ बावे सीनी गलत आशिकी तो सही थी पर फीलिंग गलत हुआ बावे सीनी गलत बावे सीनी गलत बाबा देता ट्रिप मैजिकल फ्रॉम मशरूम सिटी तेरी माशुका फिदा तो मेरे अक्षरों में थी ढंग से याद नहीं पर मस्त मूड में थी सुबह देखा मेरे वस्त्रों में थी होना जोक्स पे ऑफेंड नहीं जेंटलमैन में मेंटली 100 से ज्यादा बंदियों को सेंड करता रैंडम कमेंट नहीं फैंस मेरी फैमिली पर हेटर्स लगते बच्चे हाथ जोड़े गिरने लगते जैसे स्कूल की असेंबली गलत फाइट तूने कर दी पिक हम स्टैंड्स ये मार्शल आर्ट मेरे पंच लाइन का टोकी किक इनके वैक्सीन को बेअसर कर दे हम इतने सिक वैक्सीन ये रैपर लगते ऐसे कि ये सीखते रैप फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ओजीज की रीस करे ओजी स्टॉप प्लीज बदतमीज तू ना होगा ठीक भरता जा तू फीस जैसे गैर सरकारी अस्पताल में मरीज बावे सीनी गलत आए की जिंदगी मुझे जीनी गलत बावे सीनी गलत यार तो सब सही थे मैं फीली गलत हुआ बावे सीनी गलत बावे सीनी गलत आशिकी तो सही थी पर फीलिंग गलत हुआ बावे सीनी गलत बावे सीनी गलत यो Hey guys, what's up? Welcome back to the channel and आपने बोला PMSL लाइव करो। आज हम PMSL लाइव करने आ चुके हैं, वॉच पार्टी कर रहे हैं PMSL की। लेट्स गो गाइस। आपके भाई ने फुल बूम बम परमिशन वगैरह ले ली है। PMSL PMPL फुल कंटिन्यू आज के दिन पे वॉच पार्टी होने वाली है। लेट्स गो बॉयज। अगर हम आप सपोर्ट कर रहे हैं ना इतना गाइस, आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप भी गाइस एक लाइक दबा दो, बटन इतना सा कर देना। आप लोगों ने बोला PMSL की वॉच पार्टी चाहिए, सो लो भाई PMSL की वॉच पार्टी लेके हम आ गए। और बताओ तुमको नेक्स्ट क्या चाहिए। वेलकम बैक टू द स्ट्रीम शारिक भाई, अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो। अगी भाई PL की टॉप 10 पिक टीम शारिक भाई वो तो अभी बताना मुश्किल होगा क्योंकि लॉबी बहुत टफ है। बाकी कल हो रहा है PL तो देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो सवितार भाई, व्हाट्सअप। अवतार भाई की हाल चाल? बढ़िया। एक बार हाई कर दो, वेलकम कर दो यार एनर्जी के साथ। क्या कर रहे हो लॉन्जो? इतना खाली खाली हमारा चैट नहीं रहता है जब भी हमारी स्ट्रीम स्टार्ट होती है। PMSL के लॉन्डे देखने वाले हमारे, जल्दी से गाइस एक बार मेक श्योर टू हिट द, जल्दी से कमेंट कर दो गाइस जल्दी। इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो हेलो हेलो, यस वॉइस तो ऑडिबल है। तो अभी हमारा सीन चल क्या रहा है बाय द वे? PMSL क्या सीन है? मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ PMSL। आज के दिन का फर्स्ट PMSL है मेरा, आज जो हम देखने वाले हैं लाइव। वैसे लैन हो रहा है, सारा कुछ है। चलो भाई देखे क्या सीन है। टेल में देखते हैं। 214 ओवरऑल स्टैंडिंग्स। ओके गाइस, हेल, फेज, वेम्पायर, यूडू, बेकन, पर्सिया, शाइन लाइक डायमंड, वॉइन, रैक्स एंड स्टेम बूम। शाइन लाइक डायमंड वियतनाम की टीम है, दे आर डूइंग डैम गुड। ओके भाई, वीक 1 वाज गुड, वीक 2 इतना अच्छा नहीं था। आज देखते वीक 3 आज से स्टार्ट हो रहा है कि कैसा इनका वीक 3 रहता है। आज के दिन बी ग्रेट टू वॉच द शाइन लाइक डायमंड का टीम। पर्सिया काफी अच्छा गया है, 201 पॉइंट, 214 पॉइंट। कंसिस्टेंट खेली है, फेस कंसिस्टेंट रही है। वेम्पायर का बहुत बड़ा डाउनफॉल है। यूडो अलायंस काइंड ऑफ लाइक एक बोल सकते हो आप, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। पर्सिया गाइस, दिस इज द रैंकिंग बिफोर, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी लाइक काउंटडाउन उसमें चालू है। तब तक हम देख लेते हैं ओवरऑल सिनारियोस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो जो कि आपको पता होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी।
और तब तक हम अपनी चैट खोल हाय हाय हेलो हेलो मोनी रुल वाइटी। एक नंबर भाई, आप बताओ बढ़िया। कमेंट ना करे, बहुत मजा आता है पीएमएसएल में ब्रो। ओके मेरे भाई, पीएमएसएल आपने बोला और अब पीएमएसएल पे आ गए। चलो बॉयस, चलो आने दो गाइस। बहुत मजा आता है पीएमएसएल में। ओके भाई, आज देख लेंगे कितना मजा आता है पीएमएसएल। STE। ओके भाई। एन एन बुलर भाई STE। ब्रो अभी ST वाला पीएमएसएल के जो मैचेस वो 5:30 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी पीएमपीएल्स के। एंड उससे पहले वी आर डूइंग सम मैचेस लाइक पीएमएसएल के जो भी मैचेस होंगे हम उनको देखेंगे। हेल इज अ गुड टीम अभी अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स। यस दे आर टू डोमिनेटिव। हेल के अंदर कुछ एडिशंस हुए हैं, जितना मैं गलत नहीं हूँ तो BRU का टाइगर वगैरह जो इसमें एड ऑन हुआ है। यस गाइस, जो मैंने आपको बोला था टाइगर एंड स्काई ओनली आने के बाद ये टीम ना बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो चुकी है। पूरे हेल जो है एक नई टीम बनी है। स्काई ओनली अगर आपने देखा होगा BRU में PMGC के टाइम पे, एंड टाइगर को भी आपने देखा होगा BRU में। सो ये दोनों बंदे आने के बाद इस टीम में काफी अच्छी एडिशंस हमको देखने को मिली है। अगर हम रोस्टर की बात करें, हेल का जो रोस्टर था कंप्लीटली अभी चेंज हुआ है। इन्होंने काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को यहाँ पे उठाया। एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे ये जो हमारे जय रावल भाई है, ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अपना लाइक हेल के अंदर, अगर आपको नहीं पता है। एंड इंडियन अपने बंदे हैं जो ओनर है हेल के, जितना मेरे को सुनने में आया था। सो यस, लाइक गुड थिंग। लाइक यहीं से अपने गए हैं भाई, उन्होंने वहाँ पे बाहर एक्सपेंड करा है। एंड रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने। सो यस, जिन लोगों को नहीं पता, स्काई ओनली एंड टाइगर एंड दीज आर द लाइन ऑफ फ्लैश, गेट स्लो, नटीन्स। बाकी आई डोंट नो अबाउट द फ्रैगिंग वगैरह कहाँ दिखेगी, मुझे कोई बता सकता है हु इज द टॉप फ्रैगर एंड ऑल वाली चीज जो भी देखनी थी वो काफी इंटरेस्टिंग रहता अगर हमको यहाँ पे दिखती। ओवरव्यू में चलते, क्या पता वहां पे दिख जाए हमारे को कि क्या चल रहा है सिनारियोज और MVP रैंकिंग के अंदर। ऐसा सचिन केस तो नहीं है, चलो कोई दिक्कत की भाई आज मजा आएगा PMSL देखने में। यस मेरे बॉय ऑल इन वन PK व्हाट्सअप। हेलो हेलो आकिब इफरान भाई, की हाल चाल? एकदम बढ़िया हो क्या? क्या चल रहा है? सब कुछ एकदम मस्त बढ़िया। तो गाइस जिन लोगों को नहीं पता है, आज के दिन पे अपन PMSL स्ट्रीम करने वाले हैं। PMSL PUBG मोबाइल सुपर लीग 2023। एंड टुडे विल बी द, आप बोल सकते हैं हमारा पहला दिन है PMSL का मैंने एक भी मैच नहीं देखा है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल द टीम्स। वीक 3 स्टार्ट हो रहा है उनका। तो करंटली रैंकिंग्स आपकी स्क्रीन के सामने। फेज मेला है टॉप फ्रैगर। ओके फ्रोजन भाई, फेज मेला इज द टॉप फ्रैगर, ठीक है भाई। देखो आज क्या होता है, मेला भाई टॉप फ्रैगर मेला भाई हमारे बढ़िया मार रहे हैं, मतलब मेला भाई। हाँ हेलो शारिक MB भाई व्हाट्सअप, की हाल चाल? एंड गाइस अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत ज्यादा खुशी होगी। आज इतना जल्दी क्यों सुमन भाई? PMSL PUBG मोबाइल सुपर लीग इंडो, लाइक थाईलैंड वालों का जो कंपटीशन चल रहा है उसको देखने के लिए यार हेयर। यूडो अलायंस बहुत बढ़िया, यूडो अलायंस को भी देख के बढ़िया लगा। बेकन टाइम बढ़िया, बेकन भी थाईलैंड के भाई। टॉप 5 टीम में से 4 टीमें थाईलैंड की है, सेम कंसिस्टेंट। कैसे हो? एकदम बढ़िया। AE रोजमेरी हाईएस्ट डैमेज लीडर। रोजमेरी इज अ डैम गुड प्लेयर ब्रो। जो AE अल्टर ईगो लाइमैक्स का जो इसमें जो ये प्लेयर है ना भाई, ये इतना तगड़ा प्लेयर है ना। ये BTR में जाने वाला था पर जमा नहीं, ये जो बंदा है जमा नहीं इसका। ये जो बंदा है इसका जमा नहीं है, लाइक ये इसका रिजल्ट स्टैट है भाई, एक बार देखो इसको। ओ हो, मतलब इसका जमा नहीं था BTR का, इसका रूमर आ रहा था, ट्रायल भी दिए बट लास्ट में चीजें नहीं हुई तो 70 यहाँ पे गया था इस पे। MVP रेस में रोजमेरी है नंबर 1 पे। यस यस अवतार भाई। बट इसके आप देख सकते हो गाइज, ये इस बंदे का लाइक आप समझ लो जो skill है, ये इसके अवार्ड्स है जो यहाँ पे जीता हुआ है। PUBG मोबाइल प्रो लीग में गन स्लिंगर, PUBG मोबाइल प्रो लीग में वीक 2 में टर्मिनेटर था, सीजन MVP रहा हुआ इंडोनेशिया पे। फेवरेट MVP PUBG मोबाइल प्रो सीरीज इंडिया। देखो गाइज MVP जैसे टॉप है ना, वैसे ये रोजमेरी बंदा है। PMSL से भी कुछ स्लॉट है क्या? सुनने में तो आया बट अभी तक ना PMWI का सीन अननोन है गाइस। PMSL का पता नहीं है सीन क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई थिंक यू वेट गाइस, आप सभी लोगों को एक बार वेट करना चाहिए कि क्या सीन है क्या नहीं है। नूजी इज माय फेवरेट प्लेयर फ्रॉम थाईलैंड एंड ये पर्सिया फेवरेट टीम बिकॉज ऑफ लक्सी। लक्सी एंड जक्सी तो मार रहे भाई। आज देखो लक्सी जक्सी का डोमिनेशन क्या आता है। लक्सी जक्सी का डोमिनेशन आज के दिन पे देखो।
क्या रहता है। बाकी तो लक्ष्य सक्सी ने बहुत, परसिया ने बहुत तगड़ा मारा है वीक 2 पे। वीक 1 पे अगर आप देखते हो, ये वीक 1 है, वीक 1 पे वेम्पायर के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं था। देन सेकंड वॉइन, फेज एंड हेल, दीज आर द टीम वीक 1 पे। जैसा हमने बोला शॉर्ट टूर्नामेंट का गेम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है भाई। वीक 2 पे तो भाई लक्सी सक्सी का डुओ क्या खेला है भाई। हेल टॉप पे एंड परसिया ईवोस हैट्स ऑफ भाई। देन फेज में मेला तो मार ही रहा है एंड अलायंस बूम बूम इंडोनेशिया की चैंपियन है अभी। तो आगे देखो क्या होता है। ब्रो आज पीएमपीएल ऐसे है, यस मेरे भाई आज होगा, कल छुट्टी होगी। 5 डेट गेम का कुछ पता नहीं। 5 डेट मतलब गुड आफ्टरनून आएगी भाई, गुड आफ्टरनून मिस्टर पीपी, हेलो सैंग भाई कैसे हो। हेलो भाई, हेलो रेड्स कलोपी, कैसा है मेरे भाई। कहाँ से इंटरनेशनल में डोमिनेशन होगा इंडिया का। प्रो गेम तो आने दो यार, आप क्या कुछ भी मतलब बोल रहे हो भाई। पीएमपीएल टर्की स्ट्रीम करना कभी, टफ रीजन है भाई। मैं पीएमपीएल टर्की तो भाई ऐसा टफ रीजन है वहां पे आपकी ना, आपको मतलब एक ऐसा रीजन मैं बताता हूँ पूरे कम्युनिटी पे अभी के टाइम पे। लाइक एक साउथ एशिया एंड एक टर्की, दीज आर द रीजन जहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी फेवरेट टीम छूट सकती है। इतना कंपटीशन हो चुका है इन रीजन के अंदर कि आपकी जो फेवरेट टीम है आप सोचोगे यार ये टीम ना पक्का जाएगी, बट वो टीम छूट भी सकती है जाने से। वीक 2 पे वेम्पायर अच्छा नहीं खेले, यस अच्छा लगा। पीएमएसएल वॉच पार्टी करे, थैंक यू सो मच भाई। बीटीआर आउट परफॉर्म दिखाता हूँ, डूइंग गुड ब्रो, व्हाट अबाउट यू। एकदम बढ़िया सैंग भाई, और एकदम बढ़िया। और आप सुनाइए क्या चल रहा है, हाउस द जोश। इन्फिनिटी को क्या हुआ, इन्फिनिटी को क्या हुआ, इन्फिनिटी खेल ही नहीं रही मेरे लॉन्जे, इन्फिनिटी है ही नहीं इसमें। ये बाबा ये वो है सुपर लीग है मेरे भाई, ये सुपर लीग है इसमें। ये सॉरी यूट्यूब पार्टनर बोलता हूँ मैं हमेशा, ये पबजी मोबाइल पार्टनर टीम्स है मेरे भाई। और इसमें कुछ क्वालिफाइड टीम्स भी है एंड जिनको यहाँ पे अलग से बेनिफिट रहता है भाई। बहुत नीचे नहीं चल रही है बीटीआर, बीटीआर का सीन क्या हो रहा है भाई। बीटीआर कुछ ज्यादा नीचे नहीं चल रही, बीटीआर का रोस्टर अगर मैं गलत ना हूं तो वही है, बीटीआर बहुत बॉटम पे चल रही है भाई। लक्सी जक्सी को छोड़ा नहीं बीटीआर ने। और क्या फाड़ रहे हैं भाई वो। हाय ब्रो, हेलो सैयद भाई, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया कूल बॉय। 5 डेट मतलब 5 5 अप्रैल, ओके। गेम का तो कुछ पता नहीं है। इन्फिनिटी को क्या हुआ ब्रो, कुछ नहीं हुआ, उनको स्लॉट नहीं मिला पार्टनर वाला, यही सीन हुआ होगा। लिक्विड यू हाई राइजन स्वाफेल 70 एंड जेनफोस, जेनफोस। ओके सो दिस इज द लाइनअप, आई थिंक जेनफोस नहीं लग रहा खेल रहा है जोरल, और क्योंकि जेनफोस लॉन पे है और पे राइजन मिजरी लक्सी जक्सी ये तो जा चुके हैं, बाकी इसमें कोई है नहीं। तो गाइज मोस्टली लाइनअप यू है राइजन सैफल 70 और अपना लिक्विड है, इनमें चेंजेस होते हैं बीटीआर के अंदर। ब्रो मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद मेंबरशिप, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत चिल भाई। पीएमपीएल पाकिस्तान वीक 2 देखो, इतना अच्छा खेल आइए ब्रो, जरूर देखेंगे। बीटीआर बहुत खराब खेल रही है न्यू वाली लाइनअप। यस भाई, पीएमपीएल पाकिस्तान वीक 2 देखो, इतना अच्छा ब्रो, इसके बाद देखेंगे ब्रो, अभी तो पीएमएसएल ऑफिशियल टूर्नामेंट है, देन इसके बाद करेंगे। यस गाइस, दिस इज द थिंग जो मैंने आपको बताया बीटीआर का। ये दो नए प्लेयर है 70 और अपना स्वाफेल। स्वाफेल आई गेस गलत नहीं हो तो मैं एनएफ उससे आया हुआ है, एनएफ से। एंड ये आपका आया हुआ है 70 अपना जेन, लाइक उसका जेनेसिस डोगमा से 70, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना हमने सीन को देखा हुआ है। बाकी गाइज आज का दिन वीक 3 स्टार्ट होने वाला है, क्या लग रहा है वीक 3 पे कौन सी टीम डोमिनेट करने वाली है। ऑल्ट्रीगो, लाइमैक्स, बेकन, वीटिया, बूम बॉक्स, डीबीडी, द सेवियर, फेस, गीक, जी, हेल, इवोस, परसिया, पीबीई, आरक्यू, आरआरक्यू, सैम 9, ये अपने डायमंड वाली टीम है। ये टीम सीक्रेट, वेम्पायर, वॉइन एंड यूडो लाइंस। नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ, और हमने पोल भी रखा हुआ है जिन लोगों को नहीं पता, आज के दिन ये टीम्स आपस में बैटल करने वाली है। शाइन लाइक डायमंड इसका नाम था, सॉरी, शाइन लाइक डायमंड एंड डोंट ब्रेक ड्रीम्स, प्ले बुक ई स्पोर्ट्स उसका नाम था। रिफ्रेश रिफ्रेश कर लेना गाइस, गाइस रिफ्रेश 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 रिफ्रेश। हमारा जो ओबीएस है वो काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर गया था। पीएमएसएल इज टफ कंपटीशन देन ईयू।
यार रीजन टू रीजन चीज रहती है। गाइस जल्दी से इसको 100 लाइक करवाओ। हमारे को 143 लोग अभी देख रहे हैं। जाओ जल्दी से एंड अब अपन स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कितना रहा स्ट्रीम टाइम देखने। अभी स्ट्रीम टाइम था तभी मैं आपसे बातचीत कर रहा था। 7 मिनट है। सो गाइस लेट्स गो। जंपर भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम जंपर भाई को देख रहे गाइस। लेट्स गो फुल एनर्जी। पीएमएसएल फर्स्ट डे ऑन योर स्क्रीन। आपने बोला पीएमएसएल स्ट्रीम करो, हम पीएमएसएल स्ट्रीम कर रहे हैं। सो गाइस आज फुल बूम बाम सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर हिटिंग नोवा। सब लोग पाई डब्ल्यूबीजी के लिए चीयर कर रहे हैं बट लास्ट ईयर डब्ल्यूबीजी नॉट क्वालिफाइड डब्ल्यूबीजी स्प्रिंग एंड समर। क्लैश ऑफ फ्रेंड्स कोई यहाँ पर किसी को हेट नहीं कर रहा है। ये तो आपका पहला कमेंट आपका ही आया है नोवा से रिलेटेड। पहला पॉइंट तो ये। एंड सेकंड पॉइंट ये सारे के सारे जो मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेस है नोवा का ऑल ओवर द ग्लोबल। जब वो अच्छा खेलते हैं उनको लव मिलता है, जब वो अच्छा नहीं खेलते उन्हीं फैंस के थ्रू उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड ये जरूरी नहीं है नोवा के साथ होता है, ये हर एक बंदे के साथ होता है। और कहीं ना कहीं आप भी जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती होंगी तो आप सोचते होंगे अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, इसको ऐसा नहीं इसको ऐसा खेलना चाहिए था। एंड कई लोग वो चीजें अपने चैट पे लिख देते हैं एंड कई लोग हेट भी देते हैं। तो चीजें ऐसी होती है। जितना बड़ा फैन बेस उतना बड़ा हेट वाला सीन होता है। एंड टीम्स नोज बेटर, उनको खेलना है बढ़िया, उनको इन चीजों का भी पता है कि सीन क्या होता है क्या नहीं होता है। वो लाइक उनको अपने लाइनअप पे ट्रस्ट है, सारी चीजें अपना बकल अब भी कर लेगी, कम बैक भी कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अंडरस्टैंड वाली बात यही रहती है। अगर हम देखें, अगर आप अंडरस्टैंड करो, छोटी 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 सी चीज मैंने बताई है। अगर लाइक जो देखने वाली ऑडियंस है वो थोड़ी सी मिच्योर हो जाएगी सो वो हेट वाला सीन कभी आएगा ही नहीं। फीमेल पाकिस्तान कब देखोगे ब्रो? सुन अभी हमने कल परसों स्ट्रीम करा था, उस टाइम आपने बोला नहीं, नहीं तो हम जरूर देखते उस टाइम पे। हमको थोड़ा जल्दी उस टाइम वैसे स्ट्रीम भी एंड करना पड़ा था, कोई दिक्कत की बात नहीं, देखेंगे भाई। पीपी का राउंड 2 KB मतलब एमपीएल बीके देखो भाई। भाई ओच पटी अभी कौन सा लाइव हो रहा है भाई? लाइव नहीं हो रहा है भाई, लाइव अभी पीएमएसएल हो रहा है, अभी पीएमएसएल लाइव कर रहे हैं। लो भाई Here we go, the LAN event PMSL PUBG Mobile Super League आपकी स्क्रीन के सामने। एंड टोटली अगर बताऊं मुझे पीएमजीसी वाली वाइब्स आ रही है सेटअप्स वगैरह देख के। पीएमजीसी में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वाइब आपको देखने को मिली होगी। बाय द वे अगर आप क्वालिटी बोलोगे, क्वालिटी इज आई थिंक यस क्वालिटी इज गुड, क्वालिटी इज टॉप नॉच। एंड लो भाई आ जाओ भैया पीएमपीएल की वॉच पार्टी करो यार। पीएमपीएल मैं नहीं कर रहा ब्रो, वहां पे एक और टीम शायद डिस्क्वालीफाई होने वाली है तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं है करने का। एक और बंदे का बैन हो गया अकाउंट। मैं वीडियो आज बनाने वाला था बट मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहा। ऑफिशियल का एक बार आ जाएगा तो मैं उसके बाद ही आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक टॉपिक को ज़्यादा खींचना मेरे को पसंद नहीं है। तो अगर अभी आज या कल तक नहीं आता है ऑफिशियल का कुछ रिजल्ट सो हो सकता है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। ऑफिशियल का वेट कर रहा हूँ 1-2 दिन का, नहीं तो फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ऑफिशियल का जन आएगा तो देख लेंगे बात की बात में। भाई आप पीएम पे अपना आज भी सपोर्ट है नोवा को, कैसे भी खेले कमबैक होगा, दे आर वर्ल्ड चैंपियन। यस मिस्टर पीपी। भाई आप पीएमपीएल की वॉच पार्टी करो ब्रो, बता दिया मैंने सीन। दोज हु हेट नोवा दे चीयर फॉर ओनली विनिंग टीम, हाहा। एंड whoever win पीएल सीजन। पीएल का राउंड कब है? पीएल का राउंड 2 ब्रो कल 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 पीएल कल होगा। क्रिप्टो नहीं खेलता, क्रिप्टो खेलता है ब्रो अरेबिया का थोड़ा पीएमपी रिलेटेड ट्विस्टेड माइंड से खेलेगा वो। भाई आप पीएमपी ल्यू की वॉच पार्टी मैंने बता दिया। लैन है, यस मेरे भाई लैन है। 1 महीने का लैन इवेंट है, 2 वीक हो चुके, तीसरा वीक चलेगा देन ग्रैंड फाइनल्स होगा। कल हेड स्टार्ट पॉइंट्स है क्या पीएल में? यस मेरे भाई हेड स्टार्ट पॉइंट्स है, अभी टीम्स को रहेंगे। बट वो ये जो टीम सबसे लास्ट में क्वालिफाई होगी, जो 10वें रैंक की टीम होगी, उसको सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा। टॉप की टीम आई गेस 25 बोनस पॉइंट लेके जा चुकी है, दैट इज टीम पाए। क्रिप्टो मैं बता चुका हूँ ब्रो। हाय मुगल भाई क्या हाल चाल? लाइन है, यस मेरे भाई लाइन इवेंट हो रहा है। मिस इंडियन टीम डोमिनेशन, यस आई एम फैंस नोवा। ओके भाई ब्रो इफ यू सी योर एंड अदर यूट्यूब पे कुछ लोग बोल रहे हैं एनवी एरा इज एंडेड, तो बोलने दो। अगर कुछ लोग बोल रहे तो बोलने दो भाई, बोलने में क्या जाता है। पीएमपी अफ्रीका वॉच पार्टी करो ब्रो। ओके साइबर सर्चिस भाई। वेम्पायर का 1 वीक में इतना बड़ा ड्रॉप कैसे आ गया परफॉर्मेंस? मे भी कुछ नई चीजें ट्राई करो। कुछ सुनने में आया था मिल्टा पावर का ड्रॉप का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। मेरा तो आज के दिन का पहला दिन का मैच है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाय द वे मैं थोड़ा सा अपना टाइटल में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, इस 2 मिनट रुकना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीएमएस,
तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप अभी भी देख रहे हो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। चलो भाई, PMSL ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट मैच थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा।တော်စော့ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ week 2မှာ गाइज कुछ इंटरव्यू चल रहा हैတင်တော့တပွဲကိုရယူထားနိုင်တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတို့ဒီအသင်းသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေပြောင်းလဲမှုလုပ်ထားတာရှိ भाई ये पूरा मेरे को ना PMGC का लग रहा है, काउंटडाउन का। आप वो देख रहे हो, थीम थोड़ा टेम्पलेट है PM CD ဆိုပြီးတော့ plan ပြင်ဆင်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံတာပြင်ဆင်ထားသလိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်သွားမှာပါ तो बस सिर्फ क्लोज रेंज में फाइट लेती है बस। अरे 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 भाई क्लोज छोड़ो भाई, इसकी बात ही नहीं। हेलो मैट्स गेमिंग, क्या हाल चाल? कल कितनी टीम क्वालिफाई होगी? 10 टीम है भाई। भाई नोवा कल के दिन पे मारेगी। देख कल के दिन पे #1 आना टीम के लिए जरूरी, अकॉर्डिंग टू द बोनस पॉइंट। जो #1 पे नहीं आएगा, जो जितना बॉटम होगा उसको उतने लो पॉइंट मिलेंगे। एंड आपको पता है शॉर्ट टूर्नामेंट में हेड स्टार्ट पॉइंट कितना ज्यादा वैल्यू रखता है। တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်နဲ့တူရတာတဲ့ယက်တိပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ် Yeah, to the supporter in Myanmar, we just want to say about that. We all need to be together. भाई कितना ये जो लाइक ट्रांसलेट कर रहा है, कितना ज्यादा मतलब समझ रहे हो एक तरीके का। Good luck for your upcoming game. Hope to see you guys going to the grand final. See you later. Bye guys. Yeah, see you. Yeah, thank you. All right, so Yeah. now we're done talking to Genesis. I love seeing the brotherhood within them, but let's talk about another team that I really want to talk about here, and it's going to be BTR. And as we all know, लो भाई आपकी BTR has had one of their biggest years back in 2019. Let's ask them how they feel about making this year be one of their biggest years. Hello, BTR, are you here? Swavel, my man, come on, let's have a chat. Let's have a chat. All right. न्यू गाय। So for Swavel, first of all, how are you doing today? How are you feeling? I'm feeling good today. You're feeling really good? I love to hear that we're feeling good. We had a chat earlier and we're currently best friends, so I love this. Ha So ha let's ha talk about ha, rankings. क्या बात है? So as you know that you are one of the teams currently at number 15 and 16, and you guys are almost on borderline being eliminated. So how do you feel in terms of confidence? Do you guys think that you'll have a better performance and make it to the top 10 by this week? Yeah, we must confidence this week because we have points back to secure we can play in grand final. Right, so he says that they're feeling really confident, they're having a good week, and they're very confident they'll be going to the grand finals. So this week is the last week, and we all know that for you guys have only gotten 2 chicken dinners. So in week number 1 and 2. So last week, your performance was kind of inconsistent. Do you guys think that you guys are going to be making any adjustments this week to achieve better scores? Yeah, we learned a lot from week 1 and week 2, so we have some preparation. And we ready for this week. Right, so they learned a lot from week number 1 and number 2, which I'm really excited to hear. And they are definitely ready for this week. So, you know, maybe we'll see one of the most interesting things, which is the Raja comeback. That was when I first joined PUBG Mobile. That was the most that everyone talked about. Raja comeback, BTR Raja comeback. So can we see that happening? आपको आवाज नहीं आ रही क्या? Yeah, wait and आवाज नहीं आ रही क्या? we will prove it today. Ooh, love to hear that. Now, before we go, do you guys क्या have तो रही anything आवाज? you guys want to tell your fans over in Indonesia? Over team in Indonesia or all team in here? Okay, you know what? All teams. Okay. So, I think good luck and you get कास्ट को कंफ्यूज कर दिया भाई। होस्ट को कंफ्यूज So कर that दिया is भाई। going to be the end of my interview. Thank you guys so much for watching. And now we're going to send it back to the main stage. BTR, good luck, and I'll see you guys later. Bye. Guys, crazy भाई, crazy. Here we go. PUBG Mobile Super League, the LAN event on your screen, boys. Have you seen dance when BTR was wiped out from old BTR team? नहीं ब्रो, देखा नहीं दीपशिका गढ़ का भाई। देख लेंगे, आज होने वाला है मैच, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साउंड बहुत कम है, बढ़ाया था ब्रो, साउंड मैंने पूरा बढ़ाया था साइबर भाई। सैफल की कितनी है जो बुरा लग रहा है? अरे भाई कल एक दिन का ही है PL, कल एक दिन का ब्रो, 4 दिन का होगा, एक दिन का क्यों होगा? PL में फाइनल्स कितने दिन का है ब्रो? 19 तारीख को है, 3-4 दिन का फाइनल्स है। और भाई कुछ लोग बोल रहे हैं नोवा गन पावर। अरे भाई नोवा गन पावर छोड़ो यार, कल बात करेंगे PL, अभी PMSL पे ध्यान दो। वेम्पायर को हर बार फाइट लेते थर्ड पार्टी कर दिया जा रहा है। ओके भाई, ये अपना मुंह लटका के क्यों खड़ा है? अरे चलो बॉयज, let's go boys. Overview total prize pool $250,000 कन्वर्ट करके बताओ कितना होता है? PMSL prize pool is increased now. Oh,
अभी देखना गाइस कितना फास्ट पिच गेम होगा, कितना फास्ट पिच गेम होगा। आप भी बोलोगे भाई इतना फास्ट गेम। आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन मनंजन भाई, पूछिए पूछिए जरूर पूछिए। हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा है तो आप सुपर चैट दे के पूछ सकते हो। जोकिंग ब्रो। रोहित चौधरी STE, यस मेरे भाई ST आपकी आएगी इसके बाद। रमेश आप बताओ बढ़िया। 2 करोड़ प्लस, ओ भाई गॉड। लो भाई फर्स्ट 20 पॉइंट, बाय द वे गाइस ये बोनस पॉइंट है, रैंकिंग पॉइंट नहीं। ये गाइस ये बोनस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ PL से रिलेटेड। अब देखो जो टॉप 5 टीम थी वो तो अपना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये जस्ट, कि PL में जो टॉप 5 टीम थी वो तो इतने इतने बोनस पॉइंट लेगी, हेड स्टार्ट पॉइंट जो उनको ग्रैंड फाइनल्स में मिलेगा। अब जो ना टीम होगी, लाइक अब जो 15 टीम्स खेलने वाली उसमें से 10 टीम क्वालिफाई होगी, तो 10 टीम भी जो क्वालिफाई होने वाली है ना उसमें सबका एम रहेगा हमको #1 आना है। जो #1 आएगा वो 5th रैंक पे जाएगा, जिसको लाइक थोड़े अच्छे डिसेंट प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे। जो क्वालिफाई होगा 15th पे उसको एक प्लेसमेंट पॉइंट है, ये तो चलो ज्यादा दिख रहा है, ये दूसरा फॉर्मेट है। तो इसीलिए गाइस कल का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हियर वी गो, पार्टिसिपेटिंग टीम्स आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें से 4 टीम आपकी क्वालिफाइड टीम्स है, रेस्ट ऑफ द टीम्स जो है वो आपकी यहाँ पे है आपकी पार्टनर टीम PUBG वाली स्पोर्ट्स की। कल से भाई अंधा पैसा भाई, $2.5 लाख अंधा पैसा। कल से PL स्टार्ट है, कितने दिन का है? 5 है कल का है ब्रो, 4 दिन का है। लो गाइस बोनस पॉइंट्स रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। हेल इज इन टॉप, इज इन सेकंड, देन VP, बेकन, यूडो अलायंस, परसिया, RRQ, देन आपको दिखने वाली है शाइन, देन Sam9, बूम, ऑल्टर ईगो लाइव मैक्स, वॉइन, गीक, द सेवियर, BTR, जेनेसिस, esports, box, DBD, PBE, and DS. By believe me, PSL is very interesting and competitive. देखते हैं आज, just chill guys who ever support Nova, they know what they need to do for a game. Yes, obviously Rishi Gaghatka, they teams know better and like fans knows better कि किस तरीके से नोवा कमबैक करेगी। यहाँ पे लड़ने वाला सीन नहीं, एक्चुअली सीन क्या होता है, एक और सीन क्या है, कोई नोवा के फैन है, कोई यहाँ पे WBG के फैन है, कोई पाई के फैन है, कोई ऐसी टीम के फैन है जो अभी अच्छा खेल रही है, तो नोवा अच्छा नहीं खेल पा रही है, तो वो क्या करेंगे, वो नोवा के जितने फैंस है उनको कुछ बोलेंगे, एंड नोवा के फैन ट्रिगर होंगे, फिर वो वहां से बोलेंगे, चलता है। सो इट्स बेटर टू बी काम और अपनी टीम पे बिलीव रखो, दैट्स इट, दैट्स द एम, दैट्स द गोल आपका जो रहना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स को देखते हो, अगर आप फैन हो। भाई आज PMSL में कौन सा टीम टॉप 1 आएगी ब्रो? देखो क्या आता है, हम साथ में देख रहे हैं। विच टीम यू क्वालिफाई फॉर PMWI अकॉर्डिंग टू फ्रॉम सी? हो चुके PMWI के लिए क्वालिफाई, साई तेजा PMWI के लिए टीम क्वालिफाई हो चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि भाई यू आर रियली अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, जस्ट एन एडवाइस, PL के अगर फेस कैम से स्ट्रीम करोगे तो ज्यादा बढ़ जाएंगे ब्रो। व्यूज का सीन ही नहीं है, इट्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स की बात होती है। तो यस अभी मेरी सेविंग्स ऑन गोइंग है, बट लाइक समझ रहे हो, मैंने आपको पहले बोल रखा है, जो मेरा मैंने छोटा मोटा सेव करा हुआ था सब कुछ, तो मैं लैपटॉप पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। चाहता तो मैं PC बिल्ड करना चाह रहा था, बट वो थोड़ा कॉस्टलियर था, तो मेरे को आपको क्वालिटी देनी थी, दैट्स इट। फॉर दैट क्वालिटी PMGC ऑन गोइंग था, मेरे को क्वालिटी देनी थी, तो मेरे को अर्जेंटली बेसिस पे लैपटॉप पे इन्वेस्ट करना पड़ा, तो वो सेविंग चले गया। अगर आप मेरे को फेस कैंप पे जाना है तो मल्टीपल लाइक सेटअप इन्वेस्टमेंट आपको पता है एक चाहिए, तो उसके लिए मेरी सेविंग ऑन गोइंग है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब मेरी सेविंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं श्योरली गाइस फेस कैम्प करने के लिए उतना ही इच्छुक हूँ। सेकेंडली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को माइक में इन्वेस्ट करना है कि मैं डिस्कॉर्ड पे और भी लोगों को ला सकूँ, क्योंकि मेरा जो माइक है इसमें सिर्फ आपको वॉइस जाता है, मेरे को दूसरे का वॉइस सुनता नहीं है जो डेस्कटॉप कॉर्ड। लॉट ऑफ थिंग्स मेरे को उसमें फोकस करना है। इस मंथ मेरे को माइक जैसे भी करके लेना है, उसकी सेविंग चल रही है। हम बाकी जब फेस कैम्प के लिए टेंशन ना लो, आने वाले टाइम पे हो जाएगा। हम नोवा को कभी हेट नहीं देते, बट नोवा फैन हमेशा ही सपोर्ट देते। अरे छोड़ो ब्रो तुम वाली बात। क्रिप्टो की टीम क्वालिफाई हुई क्या? यस मेरे भाई, ट्विस्टेड माइंड से। हेलो ब्रो, व्यूज ऑन 7 एलिमेंट इट स्पोज दे आर डैम गुड ब्रो। मैं उनकी स्टार्टिंग पे तारीफ कर चुका हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि उनको इंट्रोडक्शन की अब जरूरत रहने वाली, जिसने खेला है अवाम भाई। भाई इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, PEL में सब समझ आता है। समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ आएगा हरियाणी भाई, समझने की कोशिश करनी पड़ती है गाइज। मीनवाइल हम अनकट, एक चीज है, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो सो हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे
आने वाले टाइम पे ई स्पोर्ट्स अनकट रहेंगे। लाइक हम ई स्पोर्ट्स की बात करेंगे, फॉर एन एग्जांपल पीएमएसएल हो रहा है, पीएमपीएल टर्की हो रहा है, पीएमपीएल कितने सारे हमारे पीएमपीएल हो रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम अदर गेम्स के बारे में बात करेंगे जो बाहर चलती है, किसमें आप ई स्पोर्ट्स में अगर आपको जाना है कौन सी गेम्स पे फोकस कर सकते हैं, क्या क्या चल रहा है। ओवरऑल ई स्पोर्ट्स हमारा इस टेलीग्राम के अंदर आएगा, सो ज्वाइन कर लो। 2020 में ये टेलीग्राम बनाया था, मैं आज देख के थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था कई चीजों को। मैं शेयर करूंगा उसको, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, मैंने डिलीट करा सारा। 2020 का है हमारा वो, एक बार देखो जाके चेक करो। आप इंडिया में कौन सी सिटी से हो ब्रो? एचपी से। मैं तो नर्सरी में है 12th पास कर लिया था समझ के। कोई बता दो क्रिप्टो की टीम ट्विस्टेड माइंड्स है रेफ्लेक्स भाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑल्सो गाइज मैच आपका थोड़ी ही देर के अंदर स्टार्ट होने वाला है, सो अगर आप चैनल के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आज सब्सक्राइब काउंट बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने आज बिल्कुल फुल चिल तरीके से हम पंच स्ट्रीम करने वाले। सब्सक्राइब काउंट बिल्कुल बंद है मेरा, जितना आप प्यार दोगे उतना बढ़िया, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपने बोला था पीएमएसएल स्ट्रीम करना है, सो आ चुके हैं स्ट्रीम। भाई पब्लिक चैट है क्या? पब्लिक चैट मतलब प्रो बेकन टाइम क्वालिफाई हुए क्या? बेकन टाइम नहीं क्वालिफाई, हेल क्वालिफाई हुई है, थाईलैंड से एक ही टीम है पीएमडब्ल्यूआई के लिए। टिल नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो इस पोस्ट ने हमको बताया था, टिल नाउ देयर इज 5 टीम्स फ्रॉम सी रीजन, जो हमारे 1 2 3 4 5 6 मैप्स है। ओके, टुडेज मैच इज 6 मैचेस, एक शैनॉक, बैक टू बैक एंगल्स एंड बैक टू बैक आपके 2 मीरामार। ओके, पहला ही शैनॉक से स्टार्टिंग है, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे। यस बाय साउथ एशिया, कहीं कुछ और करोगा मतलब। फुल सपोर्ट होगी भैया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। एसटी नहीं है सचिन भाई, एसटी आपका पीएमपीएल में आएगी। गुड मॉर्निंग कुछ अग्रवाल भाई, यही 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 चीज गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड नॉट गुड इवनिंग, इट्स गुड मॉर्निंग। टॉप शैनॉक परफॉर्मर्स गाइस आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, वेम्पायर, बूम, बेकन एंड पर्सिया सबसे ज्यादा लाइक जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है ओवरऑल शैनॉक के अंदर, सो ये वो टीम्स है। अरे टेलीग्राम पे पब्लिक चैट ऑप्शन ऑन है क्या? नहीं ब्रो, पब्लिक चैट ऑप्शन ऑन नहीं है, बट हम आपके साथ बातचीत करेंगे। एक बार आओ, एक बार ज्वाइन करो, आपको अपडेट्स वगैरह इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाएगी। अपनी फोटो इंस्टा पे डाल दो अपने फोन से, सो नो नीड टू इन्वेस्ट इन फेस कैम। अपनी फोटो इंस्टा पे डाल दो अपने फोन से, मैं समझा नहीं। गुड आफ्टरनून, लेफ्ट द चैट। अब चालू हो गया क्या मैचेस मेरे भाई? अब चालू होगा मैचेस। एसटी के नाम क्यों नहीं है? पीएमपीएल है क्या? एसटीई का नाम क्यों नहीं? एसटी 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 के नाम क्यों? ब्रो ब्रो ब्रो, ये पीएमएसएल हो रहा है, पीएमपीएल उसके बाद होगा। हाँ, लाइक समझ रहे हो, समझो थोड़ा सा ब्रो। ये पीएमएसएल क्या है, किस बेसिस पे टीम पीएम ले जाएगी? पीएमएसएल ब्रो सुपर लीग है। बाय द वे गाइस, मैं एक चीज बताऊं, आपको इंग्लिश में देखना है या इंडोनेशिया पे देखना है? वैसे मैं अगर आपको बोलूंगा अगर आप इंडोनेशिया पे देखोगे तो एक अलग ही वाइब आती है। इंडोनेशिया पे लगाए क्या लैंग्वेज पे? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन लाइक, अगर हम इंडोनेशियन लैंग्वेज पे कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा बट एक वाइब जो है वो रियल रहेगी। बाकी आप बताओ। to conquer all around of any map. So this is actually a good call for them to, you know, not having that sort of. इंडोनेशिया पे देखना है, इंग्लिश पे देखना है? जल्दी से चैट किस पे देखनी है वॉच पार्टी? इंडोनेशिया और इंग्लिश? कमेंट करके जल्दी से बताओ। इंडोनेशिया और इंग्लिश, जल्दी, फास्ट फास्ट, उसी पे देखेंगे। And there's this one question whether Mosgoku will भाई क्या बात है, भाई पैराबॉय 17 गर्ल्स ओके भाई, ये तो मिक्स्ड रिएक्शन हो गया। ऐसे तो भाई ट्विटर लिंक पिन करो, ठीक है भाई, 1 मिनट रुको। तो गाइज ये हमारा पहले डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। गाइज सब यहाँ पे इंडो के लिए बोल रहे हैं, इंडो कर दे फिर गाइज, कर दे इंडो। भोजपुरी, भोजपुरी होती लगा देते भाई। कोई है अपना भोजपुरी वाला बंदा? यार एक तो मैंने डिस्कॉर्ड भी लॉगिन नहीं करा है, बट वही सीन है ना, फिर पूरा उसको ही करना पड़ता, मेरे को तो वॉइस समझ नहीं आती। तो गाइज चलो पोल ही कर लेते हैं, 200 बंदे पोल ही डाल देते हैं, आ जाओ।
वैसे मैंने ये पोल डाला हुआ है, मन नहीं कर रहा है इसको एंड करने का। इंग्लिश 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 पे आ गए सब। छोड़ो गाइस, मैच भी स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट पे देखते जो मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा वेट करो। इसके बाद इंडो, चलो एक मैच इंग्लिश एक मैच इंडो, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, एक मैच इंग्लिश एक मैच इंडो, फिर आप बताना कि किस पे करना है। आप दोनों देखना, आप लाइक इंग्लिश भी सुनना इंडो भी सुनना अपने पर्सपेक्टिव में, फिर आपको जो सही लगेगी फिर आपने बताना। फिर मैं पोल रखूंगा थर्ड, उस पे थर्ड मैच के लिए पोल रखेंगे। मेरा भाई 17 किल्स अवे फ्रॉम 1900 किल्स। सैयद भाई मतलब इस वीक आप बोल रहे हो कि उसके 1900 फिनिशेस भी होने वाले हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हिंदी कास्टर्स, इज देयर एनीवन? नो ब्रो, दीपशिका खटका भाई, नहीं नहीं नहीं। एक इंडो लगाओ, लोगों को पता चल जाएगा इंडो इतना हाइप्ड है। लो भाई, बट ये कास्टर बहुत बढ़िया है, की कास्टिंग मैंने सुनी है, इज अ गुड कास्टर, तभी मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। गुड कास्टर भाई, कास्टिंग आपको ही करनी है, समझ गया भाई। पीएमपीएल से इज अ गुड कास्टर। spots. They just need to अरे म्यूजिक बच रहा है पीछे। Why is BRU United not playing PMSL? Bro, पार्टनर टीम है और क्वालिफिकेशन स्लॉट से आई है टीम, दैट्स इट। इज PMSL लाइक IPL? यस, यू कैन से लाइक, मतलब कंपेयर, मतलब अगर आप बोलते हो ऐसा कंप्लीटली मत ले जाना। इट्स काइंड ऑफ जैसे कि काफी टीम्स की फ्रेंचाइजीज है, वैसे इसका भी फ्रेंचाइज वाला सीन सब। ओ भाई आ जाओ भाई, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। भाई मुझे फुल वाइब आ रही है PMGC वाली। हम भोजपुरी गाइज, मैं ना कुछ टाइम पे ना कुछ सीन करने वाला हूँ, बस मैं एक बार माइक इन्वेस्ट कर लूँ ना, तो आपका भाई पता क्या करेगा, डिस्कॉर्ड पे हम बुलाएंगे कास्टर्स को जो भोजपुरी बोलते हैं, जो अपने लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस रहती है, तो उनको बुलाएंगे एंड मस्त चीजें करेंगे। तो उसी के लिए माइक की इन्वेस्टमेंट गाइस चालू है। खेल के लौंडे गाइस आपकी स्क्रीन सामने, डर गया लौंडा। ये 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 भाई, पीएमपीएल ऐसे इंडियन भाई अभी हो ही नहीं रहा है। पीएमपीएल ऐसे अभी हाई हो ही नहीं रहा। पीएमपीएल ऐसे का फर्स्ट मैच 5:30 बजे होता है। तब तक इसके 4 मैचेस, 3 या 4 मैचेस हो जाएंगे। PMSL ऐसे टिल PMSL, सॉरी PMPL ऐसे होगा। बाकी फर्स्ट मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, ऑल्टर इगो लाइमैक्स, अगर गलत नहीं हो तो। बूम, दोनों की जर्सी सेम सेम। भोजपुरी कास्टर ओपी करेंगे ब्रो, करेंगे आने वाले टाइम पे। वी आर गोइंग टू डू अ गुड थिंग्स। बाय द वे गाइस, स्पॉन्सर नहीं है तो आईफोन्स पे ही खेल रहे हैं भाई, पर PMGC वाली वाइब आ रही कि नहीं आ रही है? कैमरे के सेटअप वैसा ही, प्रोडक्शन मेरे को लग रहा है पूरा PMGC वाला ही संभाल, आई गेस VSPO ही है यहाँ पे, है ना? ओ अच्छा, ये लैंड वही तो नहीं हो रहा जहाँ पे वो हुआ था आपका गाइस? PMGC वही तो नहीं हो रहा है लैंड? फेज ए, ये मेला मेला, योर फेवरेट मेला। फेज की हुडी तो बढ़िया है भाई। मुझे लग रहा है सेम वेन्यू पे है एंड VSP ही संभाल रहा है, ऐसा कुछ सीन लग रहा है मुझे। BGMI का न्यूज ब्रो हमें क्या ही पता। बाय द वे 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 गाइस, साथ में काउंटडाउन करो, चैट वाले आ जाओ भाई। मेरे 50 फ्रेंड वेट कर रहे हैं, किस चीज के लिए? हाँ, व्हाई डोंट यू हायर, बिकॉज़ कास्टर्स वाइब डिफरेंट वाइब्स। हाँ, अरे 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 अरे, लेट्स गो बॉयज। 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. नूजी दिखा गाइस, नूजी. चलो boys. First match Shanak on your screen. We are back for victory day 1, starting off with Sun. देखना इसकी कास्टिंग बहुत बढ़िया है. जो ये आपकी गर्ल कास्टर है भाई, बहुत प्यारी कास्टिंग है. Buff more towards the side of the right side. It's gonna be coming up from Bantai up to Mongnai, cutting across another than Quarry. We're gonna have to wait and see whether the circle be on top of 15. Is it gonna be camera off our circle? If it is, it's gonna be a long journey for these guys. Oh yeah, it is. We कुछ drop clash होते हैं इसमें. Guys, voice ठीक है, मेरी voice tough, especially for those who don't. Guys, मेरी voice और casting voice सही है ना? Whoever who takes that कम तो नहीं करनी है. कुछ drop clash होते हैं क्या इसमें? Position. So yeah, it's gonna be the circle goes there. Circle has always been wonky inside the side house, so it's I don't think really a really comfortable circle. Okay, BTR drops Sami. Empire wins the big so because Team Secret and Hale Esports, they have the same group. So someone like go Lakawi, and looks like Team Secret letting it go. Give it to Hale Esports. They're gonna contest that, but we're gonna zoom in onto this potential fight here between PBE and Faze Clan. Not just that, on the side of Bantai, you might actually have RK and SLP, but on the side of Paradise Resort, it's going to be heated one. But the one the circle actually favored is going to be on the side of Quarry, PBE, GE. Definitely one of the places. It's going to be a hot drop here. PBE and Faze on there then do have another scuffle again. So PBE is pretty much everywhere, not just on the top of the circle of Quarry. It's going to be against GE. Feels like they're splitting all their members into one. Your sound is good, but game sound low. I think game sound enough hona chahiye yaar. As their own survival. Oh yeah, just like one boy right now, and he doesn't have any utilities at all. And oh no, this is bad news for him. The rest of Faze Clan, they know that someone's in the building. He doesn't have much with him though. He only has DBS, but that is gonna be it. The first knockdown and the first blood. Oh भाई. इसके बंदे बोले kill हमको चाहिए finishes और मैला नहीं निकाला ना. लो भाई, मैला को full MVP बनने का पूरा अग्रेसर कर रही टीम सपोर्ट. मैला ही MVP बनेगा गाइस, एलिमिनेशन लीडर बोर्ड में भी जाएगा. Actually keep it for themselves. Bacon time on the other hand having a very quiet start. We don't have too much of a forced fight early on. So far it has been super quiet. No, guys, sound मेरी sound और गेम की sound ठीक है? एक बार कमेंट करके बता दो प्लीज. मुझे नहीं पता क्योंकि ये तो मेरे को दूसरे फोन पे देखना पड़ेगा खोल के. फोन पे देखना पड़ेगा खोल के स्ट्रीम. एक बार अगर साउंड ठीक है तो यस लिख दो सारे. अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यस होगी तो समझ लो ठीक है साउंड. Yeah, because I guess at this moment it's like for them to hold their ground and try to get information. Yes, लिख देना अगर the circle is still within somewhere of their reach, and they're within the circle then anyway. Is quality so it's a matter of, okay, they're going to get that next prime position. No rush for them since they're in it. Saw SLD passing by, so they know that okay, if SLD can pass by clear, that means that mount is clear, and they didn't really stop there. So that's okay for them. They know that they can get to that. As for Hale, a big spread for Hale, as right now, see one of them just by the side of Quarry. I would assume that the others are still looting in the campo, and there's a Quarry. So Flash, because he's all alone and he's in the middle of the circle, he will be the one to give information to his team. Regarding information, will be on time. There's another question here. Due to how far apart they are amongst each other, on the side of VPE, you do have them splitting for a bit just for looting. Not too far though, they're still within their reach from each other in case they need a backup. Newsy so far have been very quiet. We do know for a fact Newsy has been playing a lot of support role these days, coming up from the flanks, coming up from the back lines. थोड़ा guys 2x कर दिया था अब normal. Like how it used to be back then with another team in entirely different one. ये मेरी one of the best caster है. Infinity. ये But for the भाई side जान of डाल Shrux, देती we है have भाई. seen a इंडो lot में of नहीं them. देखा I आपने do इसको want to कास्ट see these करते हुए. teams इंडो में भी कास्ट really करती है भाई. show us what they have to offer. टीम But मतलब some देखा है of them मैंने इंडो में will भी शायद not इसको show कास्ट as करते हुए भाई. much जान डाल due देती to है they भाई. want to save it during the grand finals. So I know for a fact as long as you qualify, everything has to be kept as secret for the strategies, and we gotta get to see it only when it was the grand finals. जिन लोगों को नहीं पता गाइस, ये PMSL आपका ऑन गोइंग है. PMSL चल रहा है. आई थिंक एक कास्टर का शायद उसका इशू है, जो हमारा एक मैन कास्टर है. आई थिंक उसका चल रहा है. वॉइस नहीं आ रही क्योंकि
ये स्ट्रीम इशू है क्या? कास्टर साउंड, गन साउंड तो आ रही है, कास्टिंग साउंड एकदम से रुक गई भाई, तो क्यों हो गया? Side of 79 Hartin is not where the circle will be. दूसरे वाले कास्टर का माइक इशू है. A bit on the southeast side. So they have to figure out how to get there in time. It's all about timing here, really. When it comes to this level, this caliber of play. Hello, Sheikh Imran bhai, ki hal chal? Pretty much one of the best in the world. And as well as the best of the best in South Asia. The only thing that's going to be separating them with the others. Thank you so much. Love you too, Meri Jaan. Leading out Persian, the timing is perfect and fire on. Just missed the last minute. Both of them a minute to counter fire. And not even exchange of one. No trade. He didn't get any value coming up from SLD Persian. It's going to be really desperating of how. Pradhan bhai, agar aap stream dekh rahe ho, thank you so much. Love you. And the others, it can easily just finish off. Goosey and Trongs is just too far. ये भी अच्छी टीम है. Shine your dream करके टीम है. Faze clan, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से. Faze, थोड़ा ध्यान से. Oh my, DBS versus DBS. Bit of a trading done by Faze and a side of Boom. 2 knocks on Mela and Ventores. And Mela got finished off straight away, down to only Pombi to call it. He almost clutched this. The last player come up from Faze, and you need to do it with just behind him. Make it 2 right now. The Somson's playing here today, not MR5. And here's the last member. He's got a 1v1 between Pombi. He managed to retrieve on Yumi May. Onzens on the other hand have to clutch this by himself solo. Okay. यूडू की भी बसड़ होने वाली है बॉक्स के साथ. गाइस हम थोड़ा सा ना सीन हो रहा है इससे, किसी कास्टर का माइक का इशू है, आई थिंक तो पे कनेक्ट कर. mereka atau dia cabut, dia justru ingin melawan. Boom, padahal Boom memiliki energi di depan sana. Dan ini dia keputusan yang cukup bijak memang dari Onzen. Dia mundur terlebih dahulu, lihat bagaimana sebenarnya tim-tim Thailand ini masih cukup mungkin untuk bisa kita kalahkan. Masih ada kesempatan untuk kita bisa lebih bagus dari tim Thailand. Walaupun memang bonus point mereka terlalu tinggi atau cukup tinggi saat ini. Tapi kekuatan Indonesia juga tidak boleh diragukan karena Boom membuktikan di awal tadi mereka mampu melumat Faze Clan sebagai raksasa dari Thailand dalam waktu tidak sampai 2 menit. Ya, benar-benar. Dan hanya meninggalkan the last man standing saja dari Faze Clan yang pastinya nanti akan tertatih-tatih langkah mereka. Tetapi kita akan melihat fight antara Yudu Alliance dan juga Box Gaming. Luke atau adik Luke dan juga Levi's, mereka face to face berhadapan secara terang-terangan. Dan di sisi yang lain ternyata Boom Esports kedatangan kontainer mereka selanjutnya yaitu Battlegrounds kali ini. Ya, kita saksikan bagaimana saat ini fight terus terjadi. Datang Thailand yang lain. Satu pemain yang diandalkan oleh Boom untuk bisa mendapatkan elimination sudah tumbang yaitu Yami. Bahkan Yami menjadi confirm elimination atas Ice. Datang kembali. Pemain baru yang ingin mendapatkan Serigala, tapi Hexas, Serigala dari Boom tidak mudah untuk ditumbangkan. Meledak di sana. Sayang sekali belum ada knockdown yang didapatkan oleh Hexas. Yap. Dan mereka masih berupaya dengan keras untuk bisa at least mendapatkan satu knockdown. Shertiz barusan mendapatkan damage yang cukup signifikan. Namun masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Namun dari arah minigame kita bisa melihat adanya tim lain, yaitu tim Genesis yang mencoba untuk mengusik fight antara Boom dan juga Back in Time. Genesis menginginkan kemenangan di fight ini. Mereka ingin keuntungan terbesar di fight yang sedang terjadi. Mereka ingin sapu bersih saat sudah ada knockdown yang diciptakan antara Back in Time dan juga Boom. Namun tidak semudah itu karena fightnya belum pecah. Sehingga justru Genesis harus tumbang satu pemainnya. Ada PBE di tempat yang lain. PBE melakukan sebuah tembakan kembali datang lagi menuju bukit yang sama. Setidaknya ada 4 tim saat ini di bukitnya Boom. Ya betul sekali. Tetapi kali ini kita akan melihat pemain terakhir dari Yudu Alliance yang nampaknya langsung saja dienyahkan. Disudahi langkah Yudu Alliance, mereka harus tereliminasi dengan membawa hanya 1 poin dari eliminasi. Adalah sebuah hal yang tidak baik sama sekali untuk Yudu Alliance. Mereka harusnya bisa mulai start dengan lebih baik lagi. Tapi Genfos, pemain yang diandalkan oleh Bigetron Red Villain,
membuka keran elimination. Tadi ada satu knockdown yang dihasilkan oleh Genfast, bisa dikonfirm mungkin atau justru di revive. Karena yang tadi didapatkan adalah RRQ. Yap, betul sekali. Dan nampaknya ini dia di stage 2 ini sudah mulai ramai. Bigetron Red Villains. ये BTR से कौन खेल रहा है ये? Deus ter-knockdown dan langsung aja nyusruk ke bawah sana. Dan berharap untuk bisa diselamatkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Sementara Genfast akan mencari cara bagaimana untuk menyelamatkan seorang Deus. Ya, ini adalah line up yang diturunkan oleh Coach Jeff, di mana tidak ada Swavel di dalamnya, lalu juga terpantau saat ini Satar yang nampaknya tidak diturunkan juga di line up dari Sunhawk milik Bigetron Red Villains. Bro, RRQ है but ये roster RRQ का आपका PMNC का mereka berada tadi di area cave. PMNC से qualify करके pemantauan terus dilakukan oleh Kuang menuju ke tempat only shotgun है. मैं भी यही देख रहा था भाई, only shotgun है क्या? हर एक बंदे के पास भाई DBS है, मतलब टीम पे 2 बंदे तो होंगे जिनके पास DBS होगी और DBS की आवाजें सुन रही है. एक होता है M4 की आवाज सुनने का एक बहुत दौर. अभी DBS का दौर saat ini sedang berseliweran. Ada sebuah quotes yang cukup menarik, Dona Fiska. Diajarin sabar sama orang yang belum pernah close combat lawan DBS. Harus cobain dulu ya. Iya. Close combat lawan Jangan DBS. ngajarin kita sabar kalau lu belum pernah close combat lawan DBS. Atau at least kalau lu belum ngelihat fight 4v4 DBS semua. Iya, karena diperlukan sebuah kesabaran untuk kita bisa menang lawan DBS. Diperlukan untuk DBS-nya nembak duluan. Ada kesempatan DBS-nya lagi reload, baru kita hajar. Itu adalah kesempatan untuk bisa menang, dan itu jaraknya sangat sedikit karena DBS bisa langsung cepat recovery, langsung nembak lagi. Iya, benar-benar. Mungkin itu adalah sebuah inisiasi yang dilakukan secara intensional oleh para pemain-pemain di sini. Karena mengingat ini adalah bulan Ramadan. Betul. Jadi mereka mau mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara bersabar. Ya, harus lebih bersabar saat kita menghadapi DBS. Dan kalau kita saksikan saat ini ternyata A5 berhasil dilakukan oleh RRQ. Mereka berhasil untuk melakukan recovery, dan saat ini rotasi juga sedang mereka upayakan. Best G kembali diturunkan, ternyata pemain yang cukup jarang dimainkan oleh Coach Nogat saat ini diberikan kesempatan kembali untuk bermain. Master Ichi bersama dengan satu player yang lain sedang bergerak, dan Alf ternyata bisa untuk mendapatkan elimination tadi. Ya, ternyata tidak. Genesis itu wildcard की टीम है. Belum ya? Iya, ternyata tidak masuk ke Alf, kayaknya ditembak sama pemain lain. Iya, PBE itu di ujung sana ada ya 3 pemainnya yang sudah kita lihat. Tapi SLD kali ini mereka tinggal menyisakan 2 pemain saja. Kwanji dan juga Gosu untuk saat ini, dan ini adalah posisi yang cukup gak nyaman sih menurut gue ya, untuk lu stuck di sini berdua. Dan lihat posisi mereka atau pergerakan mereka, hanya tinggal nungguin ada lawan yang lewat apa enggak, atau tinggal nungguin aja untuk circle selanjutnya menuju ke arah mana. Dengan demikian mereka akan berjalan, apalagi mereka udah denger nih ada beberapa langkah atau ada beberapa suara vehicle juga yang lewat ngeng di atas mereka. Ya, Gosu tadi yang terpantau. Gosu atau nama aslinya adalah Nguyen Kwong Kwok. Nama tersebut memang merupakan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Dia lahir 8 Februari 2003 sehingga masih 20 tahun. Sangat muda. Februari, baru ulang tahun kemarin. Baru ulang tahun, benar. Sama Indonesia juga banyak yang berulang tahun kemarin. Eksa berulang tahun, lalu juga Nerpeko berulang tahun, Kimain juga berulang tahun kemarin, dikasih surprise sama teman-temannya. Dan beberapa diantaranya juga ulang tahun di sana ya, langsung live di PMSL gitu dan dirayakan. Jadi terima kasih sekali untuk production di PMSL telah memberikan apresiasinya pasti ya untuk para player-player yang pasti agak-agak homesick juga gitu loh, karena kan bertarung di negeri orang, jauh dari keluarga, jauh dari ayang juga. Apalagi sedang bulan Ramadan, ini jadi salah satu tantangan tersendiri karena biasanya bulan Ramadan itu adalah satu momen kita habiskan dengan keluarga. Satu momen yang kita habiskan bersama dengan orang-orang tersayang kita di keluarga kita. Tapi kita harus buka puasa bareng dia lagi. Lu lagi semuanya di sini gitu. Terus 1 jam doang lagi kan di sana kan mereka buat break buka puasa, tapi pastinya mereka harus manfaatkan semuanya dan bekerja ekstra keras untuk bisa membawa hasil yang terbaik untuk timnya dan juga untuk Indonesia. Tapi di stage kita yang keempat kali ini sudah ada Genesis dan juga tim Back in Time yang muncul nama mereka di arah elimination fit, dan nampaknya Box Gaming pun juga akan dilumat habis oleh pemain-pemain dari PBE. Rangkit bersiap untuk melakukan sebuah utility. Granat ditembakkan tapi Rangkit ketahuan dari posisi Levis. Melakukan tembakan dengan kali 4 sangat on point, bahkan 2 knockdown didapatkan. Yang ketiga bisa dilakukan tapi reload terlebih dahulu dilakukan oleh Levis.
hampir aja, hampir dapetin knockdown yang selanjutnya. Tetapi nampaknya Sunoas akan berupaya untuk bisa mengeliminasi satu atau at least mendapatkan knockdown menuju ke arah pemain PBE. Tetapi masih bisa selamat, tetapi barusan aja berdiri sehat walafiat harus tersungkur lagi karena ada granat follow up menuju ke arah badan pemain dari PBE. Dan Sunoas berhasil untuk menghentikan langkah PBE di game pertama ini. Saat kita melihat tadi PBE sedang terlibat fight dengan satu tim asal Vietnam. Di sisi lain, SLD, tim Vietnam yang lainnya juga bertemu dengan tim Indonesia yaitu Bigetron. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu fight yang sedang terjadi antar dua tim Thailand. Derby Thailand terjadi back in time melawan Hale untuk saat ini. Granat sedang dikokang, akan dilemparkan sesaat lagi. Sudah dilontarkan menuju ke arah yang tepat, tapi apakah jaraknya tepat? Meledak di sana ternyata belum berhasil. Ini untuk menggertak terlebih dahulu sih supaya Isis masih bisa untuk nge-revive seorang 3-touch. Masih memiliki timing dan nampaknya berhasil timing ternyata. itu masih belum bisa untuk diamankan karena 3-touch harus tereliminasi duluan. Ya, sebuah utility yang kembali diupayakan terus-menerus. Berpindah lagi kita menuju ke arah Okta dan ternyata Faze kembali terpantau untuk saat ini. Tiger X datang, Ice melakukan proning, hanya berdiam diri. Defensif sedang dilakukan oleh back and time. Mereka harus lebih bersabar, tapi smoke di pop up terlebih dahulu. Dan nampaknya Hale memutuskan untuk mundur. Mereka mencari di tempat lain kayaknya. Oh my god, ini udah chaos banget. Di segala sisi sudah mulai pecah perangnya. Dan Alter Ego pun juga nggak bisa untuk berlari dari cengkraman dari tim Secret kali ini. Yang dimana hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Thank you so much, dibombardir, Perdana tetapi Wai. Okta Thank harus you so much hati-hati for the karena ada super Sam9 chat. di sisi yang lain yang sudah And thank melihat you so much dengan for the sangat 4K jelas support posisi. to Merabai. Alter Thank you Ego, so much. Okta pun Love you bye-bye. too, Dan Alter Ego Merijan. nampaknya mereka harus pivot terlebih dahulu. Tetapi Okay, Potato di Potato. depan sana dalam usahanya untuk menghentikan langkah dari tim Secret Tia harus tereliminasi. Dan nampaknya pemain dari tim Alter Ego yang lainnya akan dicari oleh tim Secret. Izane terpantau, Jimmy OP membackstep dari arah belakang. DBD mendapatkan pemain terakhir dari tim Secret, membuat tim Secret tidak bisa bertahan. Peringkat 13 adalah peringkat yang dimiliki oleh tim asal Malaysia di match yang pertama saat ini. Rezi mendengar ada satu pemain, Jimmy ditembak, Jimmy dipulangkan ke lobby. Rezi masih bisa terus berlari menuju ke arah yang lebih aman lagi. Yap, penantian yang sungguh worth it untuk Rezi sendiri. Khususnya untuk tim Boom Esports. Karena mereka sudah mengumpulkan total 6 eliminasi poin sejauh ini. Tapi the monster is here. Box Gaming yang sudah mengumpulkan 10 eliminasi poin. Mereka nampaknya mau lebih. Dan nampaknya usaha mereka dihentikan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villains. Karena satu pemain tumbang hanya menyisakan seorang Levi seorang diri. Ya, granat dilontarkan dan granat tersebut berhasil ternyata ngegores badan dari Genfos, membuat Bigetron Red Villains pulang di posisi ke-10 dengan 2 elimination. Oh my god, ini dari tadi ya, yang kita lihat fight-fightnya tiba-tiba, oh ini udah pincang, oh tim ini udah nggak berempat lagi gitu kan. Udah mulai mainnya sendiri-sendiri aja, sama seperti halnya Isis kali ini yang sendirian, yang menerima damage cukup mematikan, hanya sisa dikit aja HP bar milik dirinya. Dan nampaknya Levi's harus menghentikan langkah Box Gaming di posisi 9 kali ini di tangan Genesis. Ya, Zal ternyata yang mendapatkan pemain tersebut dan dia pun dipulangkan dengan cara yang sama, cara yang cukup tragis oleh tim lain karena begitu banyak tim yang bisa melihat satu sama lain sehingga informasi dimiliki oleh berbagai orang di sini. Bahkan kalau kita mendengar ada yang fight, bukannya kita nggak ngeliat itu malah dilihat fightnya. Iya benar, itu sering banget terjadi. Makanya saling menculik kan, terus tiba-tiba aja yang tadinya rame udah tinggal sedikit aja player, tinggal sisa 19. Tim juga tinggal sisa 7 aja yang masih bertahan untuk saat ini. Dan kayaknya kalau nggak salah tinggal Sam9 doang deh. Tim satu-satunya yang masih bertahan dengan 4 tunggal. Vampire juga ternyata karena tadi nampaknya sudah bisa diselamatkan atau di-revive dari rekan yang terkapkan. Ya, namun tembakan dilakukan wall swaps. Dengan hanya beberapa peluru saja dia berhasil mendapatkan satu knockdown menuju ke arah lawannya. Pemain Hill yang sedang melaju. Swaps menggunakan sebuah skuter di area Sunhawk. Dia mencoba untuk bisa lebih cepat dibandingkan pemain-pemain Vampire yang lain menuju ke area dalam dari circle. Tapi informasi yang tadi sempat kita lihat dari medium map adalah RRQ. Mereka dekat dengan circle dan mereka punya sebuah compound. Rosemary Alter Ego sebuah compound dan nampaknya masih aman aja. Yang nggak aman adalah seorang Swaps kali ini. Diberikan tappingan-tappingan dari tim RRQ. Voldemort mendapatkan satu knockdown menuju ke arah pemain dari tim Vampire dan nampaknya akan disisiri
di sekitar dari selatan pinggiran circle untuk bisa menghalau pergerakan dari pemain lainnya dari tim Still in the Vampire. lobby. Ya inilah yang tadi sempat kita bahas sedikit Gunafiska, di mana RRQ punya Pmpl, mereka bisa untuk melihat tim-tim lain di area dalam dari circle-nya, karena memang ternyata bukannya dekat dengan circle, mereka memang masih berada di area dalam dari circle, namun di ujungnya banget untuk sementara waktu. Nerpeko terkena sebuah tembakan, walaupun belum terkena tadi, hanya nyerempet sedikit saja, tapi pasti Nerpeko sadar ada tembakan dari arah belakang. Dia melaju tadi, Sam9 terus bergerak. Mereka perlu lebih dalam lagi di area circle atau stage yang ke-6 saat ini. Ya, gue tadi senang banget sih melihat adanya counter shot yang dilakukan oleh pemain dari tim RRQ ya. Tadi di mana mereka mendapatkan beberapa tembakan menuju ke arah compound-nya. Jadi membungkam sedikit lah lawan-lawannya supaya kayak, lu tuh nggak usah reseh dulu deh gitu. Kita mau fokus terlebih dahulu, apalagi kali ini mereka harus keluar karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Tetapi Tony K, hello, kamu terknockdown di tangan tim RRQ. Tetapi nampaknya Sam9 mengambil kesempatan ini untuk bisa nembakin pemain-pemain RRQ. Karena RRQ tidak punya pilihan untuk mereka bisa bertahan di area ini. Pilihannya adalah untuk bisa masuk menuju ke arah circle, mereka harus melempar smoke sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita lihat, Valdemar sudah tidak punya smoke dan kita menyaksikan satu yang lain lagi. BSG justru tumbang karena ada Loyu yang melakukan tembakan. Begitu sulit dari tim RRQ kali ini. Hanya bergantung dengan Voldemort yang udah balik lagi di lockdown posisinya. Tetapi di sisi yang lainnya Vampire pun juga mengalami hal demikian yang sesulit yang dialami oleh tim RRQ. Sam9 nampaknya menjadi preman Sanho kali ini. Ya, Sam9 ingin mendapatkan elim lebih banyak lagi. Mereka menjaga banyak tim untuk tidak bisa masuk menuju ke arah circle karena memang Sam9 lebih cepat sekian detik untuk menuju ke arah circle dibanding yang lainnya. Tapi ternyata Hexat melakukan tembakan, Hexat berhasil, gagal dia karena ternyata yang berhasil adalah flash dari Hale. Oh my god, dan flash itu HP-nya tinggal dikit lagi. Kalau misalnya Pwnbit mau maju, DBS shotgun versus M4. मजा आ गया भाई, 1v1 देख के फ्लैश निकल लिया है. yang mengambil eliminasi tersebut. Tetapi that's it, Pwnbit mengakhiri langkah dari Hale di posisi keempat. Dan dengan demikian kita bisa melihat adanya dua tim Indonesia yang masih bertahan di top 3 kali ini. Namun lihat bagaimana HP dari Alter Ego area sangat tipis. Bahkan Rosemary sudah tumbang. Saat ini menyisakan satu yang terakhir yang masih bisa nembak. Tapi satu yang terakhir tersebut tidak memiliki angle yang terlalu nyaman karena dia berada di tempat yang tidak bisa melakukan tembakan dengan leluasa. Fanatika dia sedang melakukan. Oh my god, ini dia boom lagi ngamuk coy. Sudah menumbangkan beberapa pemain dari tim Sam9 dan dengan demikian mereka akan berhadapan. Dua untuk tim Bom dan juga dua pemain untuk tim Sam9. Namun karena mereka masih mempunyai celah dan juga masih mempunyai barikade, nampaknya masih bisa untuk mengusahakan sebuah revive. Tetapi nampaknya dari seorang Prime Putra memilih untuk mengeksekusi pemain-pemain lawannya terlebih dahulu. 2 melawan 2 antara Sam9 dan juga Alter Ego. Di sisi lain Boom memiliki PR untuk bisa melakukan revive terlebih dahulu, tapi ternyata saat ini hanya misalkan satu yang terakhir dari masing-masing tim Indonesia. Oh my god, apalagi kali ini Sam9 berhasil untuk nge-revive temennya. Ini Rezi bisa nggak ya di-revive? Rezi, tapi nampaknya dari Pwnbit akan mengamankan eliminasi tersebut terlebih dahulu. Rosemary sebagai last man standing dari tim Alter Ego. Nice try, Alter Ego. Kita menyaksikan bagaimana Sam9 untuk saat ini sudah sangat dekat untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Buka minggu yang ketiga dengan start yang cukup mulus. Datang satu pemain yang diharapkan mampu menjegal permainan dari Sam9. Satu knockdown tapi tidak untuk yang kedua dan Sam9. Let's go Sam9. The first chicken dinner goes to team Sam9 and बहुत ही प्यारा boom and बहुत प्यारा Alter Ego Limax. ये थोड़ा सा मैसअप हो गया, थोड़ा चलो कोई नहीं. एंड गाइस 613 लोग देख रहे हो. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. भाई ने क्वेश्चन पूछा ब्रो बेस्ट प्लेयर कौन है अभी वर्ल्ड में. तो बेस्ट प्लेयर तो यार क्या ही बोले. आप एमवीपी ले लो. जो आपका एमवीपी है वही वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है. पीएम सच बता रहा हूँ. और आप किसको ही बोलोगे क्योंकि लाइक पूरे रीजन में बैटल करके आई गेस अपने रीजन में भी बेस्ट ही था वो. एंड उसके बाद अपना उस पे भी बेस्ट रहा है. सो यस ही इज द बेस्ट. पीएमजीसी का जो एमवीपी ओवरऑल द बेस्ट एमवीपी आप ले सकते हो. एंड गाइस अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड इधर एमवीपी गाइस बना एक एलिमिनेशन एंड 552 डैमेज के साथ Sam9 का डिप ओके.
Sam9 बूम बॉक्स हिल गाइस, कुछ स्टैट आपकी स्क्रीन सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ऑल्सो गाइस, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मजा आ गया। यस मेरे भाई, यही तो पीएमएसएल का फन है। सब रीजनल पीएमपीएल कवर कर लो, बस सब करेंगे भाई। एसटी टॉप को आप एमवीपी बेस्ट एमवीपी प्लेयर बोल सकते हो कि उसने प्रूफ करा यार हर जगह पे। मेरे को याद आ रहा है जितना, अगर मैं ऑफिशियल टूर्नामेंट्स भी देखता हूँ, एमवीपी हमेशा से कंसिस्टेंट वो रहा ही है। अगर आप उसको बोलोगे तो उसमें कोई वो नहीं है। प्रूफ भी करा है सब टीम्स के साथ सेम लॉबी के अंदर। सो आई थिंक यस, ग्लोबल के अंदर, ग्लोबल की अगर हम बात करें, आप बोल सकते हो। पीएमपीएल ऐसे करोगे? यस मेरे भाई, पीएमएसएल के बाद पीएमपीएल ऐसे ही करने वाले। सो गाइस, कुछ हाइलाइट्स आ रही है। फर्स्ट मेला भाई ने अपनी फिनिशिंग निकाली थी यहाँ से, एंड उसके बाद बूम और जो फेस का फाइट हुआ था भाई, शॉर्ट गन पे शॉर्ट गन भाई, डीबीएस अलग ही चल रही है भाई। पीएमएसएल का डीबीएस वाला सीन, और डीबीएस प्लस 6x एंड M4 भाई। इसका भाई कितने क्लच देख लो, सब डीबीएस के हुए अभी तक जितने भी क्लच हुए, कितने शॉटगन के। और ये बहुत प्यारा मारा था भाई लेवी ने, ये भी एक और नॉक दिया था। एंड इसकी एक और पीएमएसएल ऐसे पूरा करोगे क्या? पीएमपीएल ऐसे पूरा करोगे क्या? पूरा ही कर रहे हैं इंडियन आर्मी, कितने टाइम से तो पूरा ही कर रहे हैं। तो आज भी कोशिश रहेगी, ट्राई रहेगा, पूरा ही करेंगे। अनलिस्ट कुछ काम ना पड़ जाए हमें। एक बार काम आ जाते हैं ब्रो, तब थोड़ा सीन हो जाता है ऊपर नीचे, बट मोस्ट प्रोबेबली आज तो पूरा ही करेंगे भाई। भाई अयोगी भाई, एसए से कितने टीम पीएमडब्ल्यू आई जाएगी ये बता भाई। एसए से एक मोस्टली शेख इजाज भाई, एक मोस्ट को ये पीएमपीएल विनर आप लेके चलो, बाकी फॉर्मेट आने में पता लगेगा। मीनवाइल गाइस, रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने। बूम 16, बॉक्स 11, हेल 10, ई 9। पीएमएसएल टफ कंपटीशन वो तो है भाई। अयोगी भाई, सी को इतनी ज्यादा स्लॉट्स क्यों मिलते हैं ग्लोबल टूर्नामेंट में? ऑलमोस्ट हाफ टीम सी की होती है। ड्यू टू द, आप बोल सकते इकोसिस्टम जो बना रखा है सी का, मे बी उस वजह से, क्योंकि सी का इकोसिस्टम इज ऑन अनदर लेवल। अगर आप देख ग्लोबल, ग्लोबल आप ओवरऑल पकड़ते हो, सी इज लाइक जैसे पीएल है ना चाइना में, वैसे सी समझ लो ग्लोबल का पीएल हो गया अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, बाकी गाइज ये लैंड टूर्नामेंट ही हो रहा है जो आपकी कर देता हूँ लोगों को। ऑल्सो गाइज, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेक श्योर टू ज्वाइन और सॉरी टेलीग्राम गाइज। टेलीग्राम पे हम अनसीन भी चीजें डाला करेंगे अपने लाइफ की, एंड ओवरऑल ई स्पोर्ट्स अनकट आपको बताएंगे। बाय द वे, एक और प्लेयर है जो बैन हो चुका है ऑफिशियली, जिसने पीएमपीएल में अकाउंट खेला था पीएमपीएल ईयू से ही। पीएमपीएल ईयू का मेन अकाउंट बंदे का बैन हो चुका है, एक और प्लेयर का रिसेंटली। सो हो सकता है 18 टीम्स कंटिन्यू ना करे पीएमपीएल ईयू। मैं तो वेट कर रहा हूँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भाई, ये अलग ही सीन हो जाएगा। 19 से 18 टीम है भाई, हो सकता है अगर उस गिल्टी पाया गया तो। भाई इसमें बोल सकते हैं कि क्या बात है, पीएमजीसी एमवीपी है वो, इससे भी आगे कुछ है क्या? अपने रीजन पर हर बार एमवीपी बनता है, टॉप इस वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर राइट नाउ। यप, कैन से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टॉप अभी के टाइम पे है। लक्सी किस टीम में ब्रो? वो इवोस परसिया में है। लक्सी टॉप इरेंगल परफॉर्मेंसेस गाइज आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। हेल, यूडो अलायंस, फेज एंड भाई हेल की टीम हर एक मैप में टॉप भी है क्या? फेज एंड परसिया इवोस इसी टीम पे है। लक्सी एंड भाई इन्फिनिटी में अभी कौन कौन है? सेम प्लेयर है मेरे भाई, सेम प्लेयर है, सेम प्लेयर है इन्फिनिटी में सारे के सारे। पीयर 11 गया है जितना मैं गलत ना हूँ। ओके गाइज, ये हमारे कास्टर्स है जो भी कास्ट कर रहे हैं। दीज आर द कास्टर्स।
भाई यहाँ पे कुछ न, भाई ग्लोबल बहुत आगे जा चुका है भाई, ग्लोबल जीएफपी की तरह बनता जा रहा है धीरे। भाई कसम से बता रहा हूँ, चीजें गन्स स्किन्स ऐसी आ रही है, एनिमेशंस ऐसे आ रहे हैं, लाइक ग्लोबल इज गोइंग जीएफपी भाई धीरे धीरे। जिस तरीके की ग्राफिक्स चीजें सब आ रही है, वो दिन दूर नहीं है कि पबजी मोबाइल ग्लोबल पे जाने वाला है। हेल इज एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट योगी भाई। दिस इज द टाइप ऑफ गेम प्ले विच मेक्स यू विन ट्रॉफीज, PMWI कंटेंडर्स फॉर श्योर। यस भाई। SAC क्या लिखा भाई ने, SAC इस दफा मोस्ट प्रोबेबली लैन होगा नेपाल में, आइए टूजम ने बोला है स्ट्रीम पे। ओके, फेल एंड फेज कंसिस्टेंटली खेल रही है सेकंड वीक। यस ब्रो, इस वीक में देखो बड़े, देखो स्किन्स वगैरह देखो भाई, अलग अलग मैं इस बार में सच बता रहा हूँ, पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आने वाला टाइम देखना, पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ भाई, अलग सीन दिखेगा आपको भाई, अलग सीन। हेलो हेलो योगी सर, हेलो फेवरेम विशन, की हाल चाल? TX SA नेपाल, मंगोलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफ्रीका। भाई ब्राजील में भी 3 वीक है। ओके, STE और 4MV बोथ हेल एनएस खेल रही है भाई। पिंपली में 18 टीम्स खेलेगी, अभी न्यूज आया है, देखो फटाफट। ओके भाई, पिंपली में मेरे लिए राहुल सोनी भाई, ठीक है भाई, हो गया क्या कंफर्म? जो तेरे संग काटी रातें। लो भाई, एक और बैन हो गया, जो मैं बोलने ही वाला था कि PMPLU में। When I said after investigation the tournament तो गाइस लो जी, ऑफिशियली हो चुका है जी अनाउंस। अब क्या ही बोले आपको, जो मैंने आपको बोला था 18 टीम्स के बारे में, सो वो अनाउंस हो चुका है। सो गाइस, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी पता लग जाएगी। तो ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है गाइस, को जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा जल्दी पता लग जाएगी। जाओ जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर। जाके ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड सर्वर को, सॉरी डिस्कॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। मैं इसी ऑफ अनाउंसमेंट का वेट कर रहा था, तभी मैंने आज मॉर्निंग पे वीडियो नहीं बनाई। जाओ गाइज, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, मॉडरेटर्स अगर एक्टिव है हमारा डिस्कॉर्ड, मैं इसको इंस्टा उस टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ। अरे अरे मस्ती चलिए भाई।
वी हैव 12 सब्सक्राइबर्स एंड हमने अपनी एक स्टोरी डाल दी है जहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट अपने टेलीग्राम पे डाल दिया गाइस, कौन सी टीम डिस्क्वालीफाई हुई है, सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। तो जाओ एक बार टेलीग्राम देख लेना, लिंक मैंने दे दिया है, ज्वाइन कर लेना। व्हाई डू यू थिंक डिक्सी टॉप 10 ग्लोबल टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है टेलीग्राम लिंक पिंग ये ब्रो, ये है यही है गाइस, ये तो कैंडल है टेलीग्राम पे। लो गाइस यही है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा। तो PMWI कब होगा, डेट बताओगे प्लीज। PMWI ब्रो आपका जुलाई पे होगा, डेट्स अनाउंस नहीं है अभी के टाइम पे, तो हो जाएगा जल्दी, टेंशन ना। अरे यार इनकी तो मस्ती चली भाई। गाइस मैं अपडेट कर चुका हूँ कौन सी टीम एलिमिनेट हुई है, 18 टीम के साथ PMPL EU होने वाला है। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, आपको पता लग जाएंगी चीजें। बाय द वे वी हैव 12 मेंबर्स ऑन आवर टेलीग्राम सर्वर, थैंक यू सो मच। 13 मेंबर हो चुके हैं जिन्होंने भी ज्वाइन करा है हमारे टेलीग्राम को, तो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने ज्वाइन करा अभी के टाइम पे। वो है हमारे अभी पागर भाई, धीरज भाई, शुभ भाई, आई एम पायरेट, महादेव, विशाल, दीपक जोशी, आदित्य यादव, जेरोक्स, प्रणय एंड सुरेश कपूर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। डिस्कॉर्ड सर्वर बोल रहा हूँ, टेलीग्राम बोलना चाहिए, टेलीग्राम। भाई इमेजिन करो यार 18 टीम है, ऐसे पता लगे, मेरे को लग रहा है एक टीम और एलिमिनेट होनी है भाई, अनदर टीम इज अबाउट टू एलिमिनेट। बाय द वे गाइस हमारा सेकंड मैच थोड़ी देर में अंदर हो जाएगा स्टार्ट। PMPL EU भाई बहुत ज्यादा डाउन चल रहा। चलो भाई हो जाए मैच स्टार्ट। आपका सेकंड मैच गाइस हो चुका स्टार्ट इरेंगल का, आपकी स्क्रीन के सामने सेकंड मैच। हियर वी गो, PMSL 2023, लेट्स गो बॉयज, इसको लाइव करते हैं, स्टार्ट लो है। Ya, Irangel pesawat sudah mengudara darang dari Milta Power menuju ke arah Primors. टू टीम्स एलिमिनेट करके 16 टीम्स के साथ खेलने बोलो। तो राउंड रॉबिन फॉर्मेट का क्या होगा वहां पे? अरे भाई 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 भाई, लेट्स गो बॉयज, आपकी स्क्रीन के सामने। इसको लाइव करो। Siapa? Yang ini, Doctor Strange? Ya, bukan Sherlock Holmes ya. Itu kalau misalnya kata Doctor Strange itu only one. Only that one. works. Oh, betul sekali. Among all of the possibility, only one that works. Dan nampaknya teman-teman semuanya, ini gue sering banget terjadi ya, atau bisa dibilang sering banget ngeliat gitu loh. Kejadian-kejadian seperti ini di mana ada satu pemain dari satu tim itu इंडो में देखा था, अभी वाला मैच अपन उस पे। गाइस 2 मिनट रुको, PUBG मोबाइल आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। मोबाइल इंडोनेशिया के पेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है एज कम। इंडोनेशिया पे भी, इंडोनेशिया में आईडी ही स्ट्रीम होता है, तो इंग्लिश है नहीं, अगर इसमें स्ट्रीम होता मैं क्वालिटी आपको यहाँ पे दिखाता, तो कोई दिक्कत, क्वालिटी में दिखाता आपको, यहाँ बहुत तगड़ी क्वालिटी आती। Shuna's almost stopped it. Oh. Almost ran down. Ministry. This is going to be a long time here. This is hilarious.
Finally, Hexars arrived, and Razu will be taking a bit of attack with side of Hexars, and they decided to part ways since both teams not having any sort of weaponry on them. But at least they got quite a number of eliminations, and they know for a fact there's going to be entirety of boom for that side. Once they got looted up and built up their gears, if they want to fight or not, it's up to them and their IGL after this. Yeah, we'll see if they want to revenge with each other later on. So that's going to be an interesting sight to see. And I do notice one thing as well, because today Voin isn't playing and PB is, but hang that thought for a second. Faze Clan, wait, the road rage is not stopping yet. Now it's going to be Faze Clan getting it over GE, and I mean the team that really needs the points, GE again, losing one player very, very early. Faze looks like a boss now. There's double angle covered by side of Faze with one driving at the same time. Apparently gets on one. Don't have a care in the world. Trying to find those vehicles going on side of box levy, definitely giving away with those shots. But at the same time, to secure any sort of elimination didn't have value except for you giving so much information for the enemy team. And whenever you open fire, you have to put in the fact that you give away your position too. You want to have something in exchange of value. Yeah, you got some information. Can you shoot them down? Because when you shoot them down, that's where your value really gonna translate something else into the team. चलो भाई If you're shooting something, आ जाओ लॉन्जो आपकी चैट मैंने काफी सारे मिस हो गए. हाँ PMG बिकॉज़ लाइन इवेंट है भाई. यस Or maybe that's going to be a decoy. भाई अब 18 टीम्स खेलेगी, मैं 2 टीम्स ऐड नहीं कर सकते क्या? नहीं भाई अब नहीं होता वो पहले. Somewhere else and अब पता नहीं ऑफिशियल का डिसीजन रहेगा. चल से सर वैसे भी आधा टूर्नामेंट हो गया, अब क्या ऐड करेंगे भाई? 2 टीम में वैसे डिस्क्वालीफाई होगी भाई. अब 18 टीम्स की खेलेगी. यस मेरे भाई इन्फिनिटी का मेला फेज में अब. यस I was literally just talking about Pmpl. Naturally inside military base by default. तो गाइस चलो लेट्स गो. 400 लोग देख रहे हो. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आल्सो गाइस जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सॉरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप टेलीग्राम चलाते हो. तो यहाँ पे गाइस अनकट चीजें आपको सबसे पहले पता लगेगी. लाइक आपको नहीं पता है तो PMPL का जो भी सीन हुआ हमने आपको सबसे पहले बता दिया है. PMPL लाइक वेस्टर्न यूरोप में 18 टीम्स जो अभी रही है, जो टीम के एलिमिनेट हुई है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे वैसे अपने पिछले वीडियो पे भी. तो अभी भी आपको यहाँ पे बता दिया है. You high playing. Sorry, that was Procedure Evo. Sorry, we have to go back to Procedure Evo. Through round robin format. You high and Rise are both playing. I feel like starting last week here, at the second half. इसको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. So आपको वहाँ पे. These two are playing, or maybe this is their main roster when it comes to the grand finals. Gotta wait and see for now. Basti is playing for ROQ. You haven't seen him any sort of a glimpse on Basti when it comes to the first week. Starting off last few days. Or last few maps of last week, week number 2, Bass start to play alongside with the lineup of ROQ. Yeah, in the absence of Mort this time, so at least we'll have a lesser confusion of like, okay, it's Voldemort, it's Mort, and then now we have SG, so it's like, okay, at least for viewers' sake, right? I'm sure there's a tactical decision to that. But is it like really going to be impactful? Well, we need a few more games to really see that level of consistency, and how we've talked about consistency in the PMSL is so important. Despite them, yeah, we'll definitely see them in the next round. Yeah, sure. But I'm sure they want to be the team that, you know, comes up with a surprise and take down one of the Thai teams, especially later on in the grand finals. So maybe this is also could be like what you say, right? Teams starting to really try things out this week because they know that they've already qualified to the next round. So this is where they really see, okay, you've been sitting on the bench for quite a while. Why don't you play a longer term and let's see how it goes. And if they can prove themselves, they can perform well, then they might secure their own personal slot in the team later on. Depends on how they perform, really. So much that we can talk about. भाई 100 के पे फेस कैम करोगे तो सब जल्दी बढ़ेंगे. अरे अरे कर लेंगे ब्रो, कोई टक्कर सबकी दिक्कत नहीं ब्रो. अपन को प्यार मिल रहा है बस, यही चाहिए कांस्टेंट और कुछ नहीं. वीपी न्यू लाइनअप, वीपी का न्यू लाइनअप ब्रो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, देख लो. फेज हो गया, नूजी हो गया, संड हो गया, एक क्या नाम है उसका नाम ऐसे आता है, मैंने उसका नाम प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे नहीं आती.
The rotation coming from Faze, depending on what. फाइनल में कितनी टीम जाएगी? फाइनल में रोज 16 टीमें empty खेलती out है. the entire magazine, trying to keep Team Secret from passing through. BTR, Ryzen bhai. Gigsley doing We this, want but clutch. this time it's We gonna want be knock BTR Ryzen doing bhai. it on the Team Secret, and none of the members from Team Secret managed to get across yet, or maybe just one on that left. Probably Zoom passed by, and now he's a-okay, but he's not in a position to help his teammates. If he comes any close. थोड़ा बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई. To BTR, he'll definitely be shot down. I mean, we're talking about BTR here, but for the rest of Team Secret, Kit still has 4 first aids, so he should be able to tank out the blue for a bit. But how long is he going to hold this position? Now we're going to get an aerial view here. BTR Tomorrow मेरे भाई हट रहा leaving करनी. the compound, Tomorrow. leaving the bridge. But for Deuce, he decided to stay back, and this is going to be a big trouble for Team Secret. Oh, it's going to be trouble for BTR as well if they overextend themselves here. You do know for a fact that you don't want to stay too much in the blue zone, especially in this final week, because the team's going to get crazy for those eliminations. When it comes to BTR and TS, a boy actually make through that. He squeezed himself right across BTR. If this not being careful, not being treaded carefully with side of BTR, they might actually out-cornered by side of Team Secret, because our boy's right in the front. But depending on how the rotation of the rest of Team Secret, can they actually make it on time if a boy is calling for her, because it's just too far apart. The next circle will be the Medusa intersection. We do know for a fact this could be a tough one. Due to having open planes, there is with open street. In the meantime, never mind, our boys straight away being finished off by BTR, and that's going to be their eyes shut down. Team Secret have to go in blind now. Yeah, I was keeping my eye on our boys' position, and really BTR, because they want to get out of the bottom 4 too, so I do understand why they try to take out Team Secret as well. Unfortunately, our boy had to be the one to be eliminated early. It's going to be Kit and Izane, Team Secret. We still have Jumper though, so not too sure where he's at. Maybe he's taking a different route. Hopefully he'll be a-okay, as the circle is still somewhere up north, and they're still tanking the blue overall. Alright, Kit taking the high grounds. We've seen this circle many times, frequently. But at the end of the day, it's down to who got into the circle first. Box, they stopped their rampage mode just now. They got no points so far, playing a bit safer when it compared to the last Sunhawk map. Secured those 11 eliminations just by themselves without any rank point as well. There's a huge one coming up from the Vietnam team. We haven't seen a lot of the X, which not been playing yet today. Maybe we got to see them when it comes to the final week. But so far, the only 2 Vietnam team, and make it 3, sorry, including SLD. I want to see them doing all out here. All cylinders out when it comes to the final week. Baschi spotted our Faze, who is trying to cut across, trying to transition himself. But will they actually try to stop? And making sure their Faze cannot get where they want to be as Bass starts spraying moment. He managed to get there unscathed. Yeah, so लक्सी ब्रो परसिया में है, but परसिया breakdown stage है, तो ठीक खेल रहा है. They're not really desperate for this position. DJ my end date will reveal on 2K likes. अरे नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं पता, नॉलेज में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता. लीक लुक का मेरे से मत पूछा करो. नहीं हाई जान पहचान नहीं है भाई. क्राफ्टन के हेड ऑफ टीम लीड वगैरह के साथ समझ रहे हो, मेरे को इसके बारे में जीरो नॉलेज है भाई. VP, let's go guys, let's go VP, let's go. We want some comeback guys. चलो भाई आने दो. उसामा कैसर भाई, राउंड रॉबिन फॉर्मेट जैसे अपने साउथ एशिया में होता है, बट यहाँ थोड़ा सा अलग है कि टीम पूरा दिन नहीं खेलती, मतलब एक ही दिन पे सारी टीम को मौका देते हैं. Trying to find where exactly is going to be good for them, and that's where they will park themselves at. Vampires on the other hand, BTR, they just shut down the side of Team Secret players, which was a boy. Vampire in front. Okay. Now they spotted out the rest of the other team. BTR, Vampire, UD Alliance, PBE, Hill, and TS moving straight in the line of the southern part. Now, only 2 teams max will survive this sort of transition coming up from the southern part. Nobody coming up from north, surprisingly. Only 7-9 just dropped themselves a bit on the north-east side. Coming across the sniper here. Now, speaking of this, coming out from the south, here we go. PBE exchange fire with more than 1 team at the same time. Ooh, and PvE. Only third stage, but second again, to third. Another early knockdown for them, and it's not likely for them to save rank it. There you go. Euro Alliance will take it. Unless it's stolen away though. But Euro Alliance will secure that point. They're moving in, and it's by the rim of the circle, so that's going to be an okay position for them.
Gonna be a quick elimination there with the splat from तो गाइस Kenny. अगर आप esports related चीजें बहुत ही जल्दी पाना चाहते हो मेरा ही अपना टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेना यहाँ पे esports अनकट रहेगा आपको चीजें सबसे पहले यहाँ पे बता दी जाएगी तो ज्वाइन और esports लाइक टेलीग्राम सर्वर तो ज्वाइन कर लेना हमारे 100 मेंबर्स जल्दी से करवा दो कंप्लीट अगर आप टेलीग्राम पे चलाते हो तो और अभी PMPL यू में गाइस एक और टीम केव है जो बैन हो चुकी है जिसके ऊपर वीडियो हम बना देंगे ऑलरेडी मैं इसका वेट कर रहा था आज मैं वीडियो बनाने वाला था इसके ऊपर इसका क्योंकि अकाउंट बैन हुआ था सुबह मुझे कल पता लग गया था बट मैं आज सुबह मॉर्निंग बट मैंने इसलिए नहीं बनाया था यार फालतू का सीन बनता है कि मैं ऑफिशियल का वेट कर लेता हूँ ऑफिशियल ने अनाउंसमेंट दे दी और 18 टीम्स हो चुकी है Is this not South Asia मैच? South Asia मैच ब्रो होगा आपका इसके बाद 5:30 बजे 5:30 is the timing for the South Asia मैच अभी गाइस जो आपका मैच चल रहा है ये आपका है PMSL 2020 just being the third party. Kenny knocked down Team Secret on the other hand, barely touching the circle still. But Yidu Alliance will try to execute them from pushing in. They deny their entrance entirely with Flax taking on Ken. That's going to be really paralyzes the rest of Team Secret right now. They only have 2 to work with. Here comes the rush with Yidu Alliance. Oh, here we go. They still have the advantage because of the knockdown. So now आगे भाई दोनों ही वॉच पार्टी करेंगे सो तुम हाँ ब्रो दोनों ही वॉच पार्टी होगी ना PMSL अभी हो रहा है इसके बाद PMPL होगा दोनों नेट पुलिंग कर रहे हैं तो भाई फाड़ा Jumper knocked down as well. Beautiful nade there by Adi Luke. It's going to be Aizen all alone in this compound. Yidu Alliance, they want to recover from their Sandhawk round by taking out Team Secret and 3 points for them in the bag. But Aizen, he has a DBS, so he's going to be ready to use it. But PBE start to shoot on their side as well. These 2 teams have no clue in the museum how surrounded they are from the outside. PBE as well as another team. I think it's going to be Hill on the other side. PBE coming in very late, but only one player at the one actually stayed behind. But the rest of us start to push forward. Well, Hill stopped every single person coming up from south. We do have the circle shifted again on the southeast side. SLD at SM9 DBD coming up from the top side. The one that actually gonna got over the side of the southern has not been determined yet. Waiting for either Hail Flash or even PBE make it first. They can gatekeep this one. But TS and Yidu Lions, I hate to break it, but they both gonna lose this one out. Yeah, unless Shamil gets away or Kid or Aizen can connect the shots onto Shamil. They need to scope it out. Shamil still hoping he can reach Flax, but Aizen shot him by PBE on the other side. Oh man, shot by PBE. That kind of stopped him at his tracks there. And does he have enough time? No, he does not. But anyway, the point is denied by the zone. Team Secret once more. I'm not sure how they're feeling right now. Honestly speaking, they are the 20th place for across 2 weeks in a row now. And now they need to come back when it comes to final week. Having this start, they cannot afford to even make a mistake since day 1. That's just how punishing their position is right now. Side of Hill on the other end, they do have quite a reign there. Talking about getting the ties in the top 4 and top 5 and overall across the board of all 2 and make it even 3 weeks in a row. I'm not surprised anymore. Anza's taking on Yidu Alliance with a run with those vehicles. SLD taking against another fight. Box start to move. BTR being crammed into a corner. Oh, the next target for Faze is going to be PBE as Mela. Oh, Mela loses it. But Momon is there on the flanks, on and off angle to take down PBE. And now PBE, the rest of them still within the circle. Faze Clan will be interested to take them out. But look at the minimap. There's another team close by. And let's not forget about Shamil. Shamil can shoot from behind. It's going to be GE as well as Hill. Compressing 2 different angles with Faze in between. Same goes for the side of PBE there. Yidu Alliance stuck. So many teams in this dicey predicament right now. Nowhere to go out from here. Tiger Axe finish off Victorious. He's actually Smiles taking it away from taking it away from the side of Hill. This is where we shouldn't forget about Shamil. Oh no, but Shamil's forced out into the blue right now. The blue will put pressure on Shamil. Shamil tries to get away with the buggy. But he's going to go past by Faze Clan, hoping that he'll be able to get into the circle at least. And so far, so good for him, but he's not out of danger yet. Definitely still in the woods for the side of Shamil.
Hill, on the other hand, slowly creeping in, while Faze just take a bit of a detour, just going a bit of a U-turn and go on the side of PB instead. And प्रियांशु तो भाई मैच देखने दो यार प्लीज, इतना बढ़िया मैच हो रहा है, आप भी एंजॉय करो. मैच के बाद आपको बताते हैं क्या सीन है. Clip down those vehicles, almost on fire, and that's another explosion. On then straight on the ground, Lonzo with Mela. That's going to be the last of Faze. They place themselves at I think it's 14th spot for now, but at least प्रियांशु भाई सुनो मेरी बात अच्छे सुनना. अभी एक चीज बताओ कि साउथ एशिया अभी लाइव हो ही नहीं रहा, तो मैं कैसे लाइव दिखा दूं? Difficult round for them. PMSL and PMPL साउथ एशिया लाइव स्ट्रीम है, मतलब पहले PMSL होगा, देन इसके बाद जब साउथ एशिया के मैचेस स्टार्ट होंगे देन साउथ एशिया को स्ट्रीम करेंगे. तो इसका मतलब वो है ये टाइटल पे ST and 4MV भी मेंशन थी, बट लैंड को ऐड करना था तो वो वर्ड आ नहीं रहा, तो 4MV को वहां पे रिमूव करना पड़ा. दैट्स व्हाई ST इज एडिट है आपको जो टाइटल में देखने को मिलेगा. I don't know आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. होप सो स्कूल पे भी आप अपने थोड़ा अच्छे रहते होंगे स्कूल पे भी आप. चिड़चिड़े नहीं होंगे आप. He wants to make a bit of a U-turn, try to find structures in between. If you need to go down, yeah, there you go. You definitely spot out Shamil. Here comes the spray coming in across that bug, and that's it. लो भाई U2 Alliance भी वाइप हुई. Such 60 में खेल रहा है ब्रो. आदित्य भाई इवोस परसिया में खेल रहा है. Yeah, that's like what? But round robin format है. But like how they crash into Faze clan, how they take out Shamil, they're just showing a disqualified team that came by officials. Yes, bro, I know. But they have the information in hand, so they're confident. And now RRQ has information onto Hill as Flash gets closer and closer to RRQ, but being shot at by Nepeko. That should stop there at that track since Hill do not have a full squad. Maybe right now they'll play a little bit chiller, a little bit safer since they're already. Also guys, अगर आप चैनल के अंदर नए हो, if you're new to the channel guys, make sure to click the like and subscribe to the channel for this watch parties. Like जैसी ये watch party देखने को मिल रही है आपको PMSL, PMPL, different global competition. अगर आपको अच्छा लगता है देखना. आने वाले टाइम पे और भी चीजें हम watch party करेंगे. Finals अगर टाइम लगता है तो watch party किया जाएगा. So subscribe to the channel guys. Cover them temporarily. On the side of Hill, same goes for them. They are in the center. Also join our Telegram channel. The instant and the fast update is post related updates. You can join our Telegram channel. And भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ DBS का डैमेज कम हो गया, तो यहाँ पे प्लेयर्स क्या करेंगे भाई? किल फीड में 2 गन देखने को मिलेगा इधर आपको. M4 and DBS and कोई UMP चला रहा होगा एक का बंदा. भाई M4 चमक रही है, अभी देखना आप. किल फीड देखते रहो, आपको समझ आएगा. Oh no, Echo been tapped away by Guangji from afar, but he's somehow still surprised. And needs to reset quickly because Bacon Time is close by. Bacon Time could have gotten that signal and they would have known that Echo is there, but a nade from Octa behind. It's going to be Alter Ego. That knockdown could be a push for Alter Ego, but now Octa needs to take down 3 touch before he can go on, but Octa focusing on to reset. At the same time, Echo unfortunately out, so it's another round for DBD without a chicken. I swear to God, Alter Ego Potato especially, with one more bullet to knock him down. They are so thankful. There's so many eyes watching on that side. Bacon Time be eliminated by 2 teams back to back. Vampires on the other, Shrubs will be revived. They are splitting into 2 formation coming up. भाई गुरुराम को हिल ने एक्वायर करा है. डैम्बो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मिस अजम्पशंस है, मत लगाना. 2 प्लेयर थे BRU के, वो लेफ्ट करके हिल को ज्वाइन करे. टाइगर एंड स्काई another one eliminated. We're down to 8, but 24 players still remain. Okay, Circle. This will kind of determine whether the players inside of Yasnaya will need to come out. You can see that 7-9, they're kind of busy inside of Yasnaya, but Vampire busy with Hill at the same time. And yes, it's a confirmation. It will move away entirely from Yasnaya, Polyana. And we can see the elimination feed running as 7-9 defending the ground against Boom. These are so dependent on DBS. अरे वही चीज़ है, PL में भी होगा था S12 के पे dependent. Trying to finish off those eliminations and save his teammate at the same time. Razy coming up from behind. He managed to reset. Now play a bit. क्या चल रहा है? But nice one यार. Last match में भी guys ये MVP था. Running out his UMP. Meanwhile pushed by Box. Levi भाई क्या खेले थे last match? What a great need and यहाँ पे eliminate करे. Levi की need से knock हुई है. Okay. Box start to go rampant again. You talk about the third party. Do we have a good chance and to now the Box game, Gaming is just showing how it's done.
Beautiful play, beautiful timing there by Box Gaming. And now PMSL कौन-कौन से region खेल रहे हैं? कोई C region, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam and C wildcard. Speaking C about wildcard से into the आएगी circle, we Genesis got a यहाँ पे couple team of है. teams inside of there, and they're really close to each other, just hoping for the terrains to not expose themselves, especially for Flash. It just takes alter ego on the right. Oh, I have a feeling Circle will favor Vampires here. One of those three, is it going to be the west or is it going to be the east side? Is it going to be left or the right side? But the most teams just standing on the ground right now is going to be on the right side. Circle always favor the team that, the land where the least team is standing, and that's going to be Vampires. A box will be gatekeeper side of Vampires across that side. It's going to be Newsy and Stone on top of this rooftop. Now while waiting for the Circle to shrink again, they were not willing to leave. Vampire and the rest of the teammate getting themselves such strong compound. Maybe the strongest there is out here. As we talk about open field and flat playing, there's a set. If you're standing up, you'll definitely be discovered by the teams up there. Ooh, yeah. But how is he going to get out? All right. He's still stuck on the outside of the zone, though. So PMSL first time हो रहा है. Yes, मेरे भाई first time हो रहा है. Right in front. Where Vampire, because he shot onto him, so it's a signal that he's being watched. So for Vampire, they got a couple. They got other angles to take care of. But we've seen as well multiple times that this kind of circle will be somewhere like in the middle of the road, and it will kind of be like 50-50 there. So that could be the possibility too. But looking at the possibility for Box Gaming to survive this, if that moves towards the middle of the road, oh man, the possibility is low. Outside of Stone, I'm waiting for the SLR to work wonderfully well for him. In this case, where he got himself quite a few compared to the others. Box barely make it in, squeezing into the northern side, just a small side of land there, and then it's going to be open street. While SLD try to push on their side, RQ on there then be squeezed by the Blues. And now the next circle will determine who will be favoured. Across this street, which divided the map into two parts entirely. Octa and the rest of them coming up from the right side of the circle. PUBG Mobile Super League franchise system या PUBG Mobile की partner teams है C region की. अब ऐसा सीन है जैसे IPL में आप देखते हो ना कि मुंबई इंडियंस हो गई, RCB हो गई, चेन्नई सुपर किंग्स हो गई. जब IPL होगा इन टीम्स हमेशा ही खेलना है. वैसे ही अब जब PMSL Super League होगा ऑफिशियल टूर्नामेंट 15 टीम्स जिन्होंने सिलेक्ट करी है वो हमेशा से होगी. उनको वो क्वालिफाई करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता. उनको स्लॉट यहाँ पे मिलना ही मिलना है. Paralyzing one side for them. बाकी क्राइटेरियाज भी होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. जो टीम नहीं करेगी उसका स्लॉट हटा के किसी और को भी दिया जा सकता है. And so happened that the majority of the circle moves towards the right. So Vampire. PL second fall guys कल से मेरे भाई कल स्ट्रीम करेंगे 3 बजे. At some point they definitely need to move across. Now we can see that RQ is going in. Fnatic is the one that's still active. Fnatic 50% health. That off-angle shot came in from the Peko. And that domination means outer ego. Domination तो है. Comeback तो है guys. 3 elimination points. But now SLD is coming to the circle, spotted out by Vampire from afar, keeping eyes onto them. They're playing with that terrain. Capone still taken away by Stone, not denied by anything. Less than 300. Then we can see PL scrims, unofficial hack करके कर रहा है ब्रो जहाँ पे आप देख सकते हो. बाकी उस पे देख लो ना, OR duo पे देख सकते हो वहीं पे तो होती है. Meanwhile guys 800 लोग देख रहे हो. If you're new to the stream, make sure to like the video and subscribe to the channel. VP domination on your screen. VP RRQ, SLD, Shine. क्या नाम है इसका? Nine Dreams करके नाम है इस टीम का. Meanwhile Box, Hale का एक बंदा. Again a consistent performance by Hale. Note करना. #453 ऐसे ही एंड कर रही है Hale. SLD positioning wise trying to shut down on RRQ, but definitely throughout PL Grand Finals not at all अभी कोई भी टीम आउट नहीं हुई. सब टीम्स के पास मौका है. बुल्स हो, ST हो, सारी टीम जिन्होंने लाइक अभी वीक भी क्वालीफाई नहीं करा था उनके पास they know for a fact they don't want to have to cross the street in the last minute if that's the worst case scenario for them. But Flash will be the bane for Vampires. Oh, Vampire, they have to shine like diamond. Yes, shine like diamond. But shine like look diamond. at the current scenario. Also guys, join our side, Telegram channel. मैं फिर से बोलूँगा मैं लिंक दे रहा हूँ. हमारा join कर लेना. e-sports related चीज़ आपको सबसे पहले यहीं पे देखने को मिलेगी. तो join our Telegram channel link मैंने दे दिया है description. The unwanted neighbors. इसको join कर लीजिए. The name will be tossed onto SLD. Friend members करा दीजिए हमारे जो. Still by the rim of the circle is still going to be okay for them now, but in 5 seconds that can change. Look at how responsive RRQ is right now. They are opening up their positions there. They got themselves the circle even now. All they need to do is hold this ground. Those angles force out of RRQ. That's all they need to do. But Flash
of Hill. Spotted out by the rest of Vampires. Nice. Nowhere to run. RRQ got it. It's going to be more finishing of Hill instead of Vampires. Jump करके that boom was a खत्म beautiful Hill. nade from Boom. downtown. Right now we can see Vampires. They just need to wait for the fight to start, or maybe for the fight to end, and then they can move in. Third partying. We've seen it time and time again. Vampire, they're good at that. And now SLD, they're the first one to be forced to move because they're by the edge of the circle and they're the furthest away by the circle. Vampire still keeping eye on them, tapping it away. It's Tony K with a mini 14. Tries to hear the go through, but will not be able to do so. Now Vampire. Oh man, everyone needs to time this really, really well as the zone is closing, but RRQ, they are comfortable in the circle. They just need to hold their ground. For SLD, they choose their poison here. It's going to be Vampires for their next contender. They know exactly where they stand instead of RRQ. They know there's one team across them, but they haven't seen any of the players yet. So they're going for the things that they certainly know of. It's going to be absolute fake to jump and cross the street coming up from the side of SLD, but Vampires start to take initiative as well. They start to push forwards bit by bit with those bridge smoke, and now with their vehicle as well as LD. The moment they close in the gap, that's where Vampire is trying to keep the distance. And RRQ spot that now take this towards the advantage. Oh, Mort almost got Tony K there. Now the Molly will toss that. Nice! Mort, and Mort has nowhere to go. And Mort will need to show inside. Now Tony K can get a double down. Yes, he can. Beautiful spray by Tony K. What? Nicely done. And now RRQ, they're losing men. Only down to Voldemort. It's not great for RRQ. They had it going Approach. before. Voldemort to save more is just too far, and Tony K's finish off with Tony K OP in the chat, guys. elimination. He's secured himself 6 out of 9 for the entire team. And RRQ being eliminated entirely for now. It's going to SLD versus the Vampires. Now, can Tony K break the record? Not so, because the most we got is 10. The only he can have in his hands right now is going to be 9. But for Tony K, he definitely wants to go for the kill. He's going for the hunt. Oh yeah, they can get a maximum of 12 now if they can eliminate the entire SLD. Let's see if SLD can actually overcome this. Now the name from Tony K. That should open up if they can get a knockdown. So it looks like spray coming in from Parajin. He will get one for himself. Now Vampire Esports. When they had the man advantage, now they're down to 2. SLD on the other hand, trying to fight against the blue stone knockdown. That's a big one for SLD. Ghosted done it again. Impeccable spray come out from Ghosted, just knowing his hunch in the smoke, but it's not going to be enough. 1-to-1 trade. Here comes Persian. Spotted out Tony K and SLD. Anti. OP shine like diamond. And what a gameplay by team Vampire का जो अप्रोच था, ओ हो वो तो एक बंदा शाइन लाइक ड्रीम का आगे क्लोज इन कर गया था। शाइन लाइक ड्रीम का अगर आपने देखा होगा, जिसने नेट भी पुल इन करके रखा हुआ था, जो स्टोन को नॉक करा भाई, वहां से सीन अलग हो गया। अगर लाइक स्टोन को लग रहा था बंदे वही है, पीछे की तरफ होंगे, जो एक हल्का सा रिज हल्का सा एक जो डिप आ रहा था, उसको लग रहा था बंदे वही होंगे, वो वहीं पे अपना सीन आकर पुश बनाने का ट्राई कर रहा था, बट आगे एक बंदा ऑलरेडी क्लोज इन कर गया था, जिसने पूरा गेम बिगाड़ दिया। वरना वीपी का बहुत प्यारा गेम प्ले भाई, स्पेशली टोनी के। एक बार ओपी कर दो यार टीम्स के लिए गाइस। SLD एंड VPE Vampire shine like dreams OP in the chat, especially that टोनी के का जो उसने फाड़ा है भाई, मजा आ गया। हो गेम वहीं खत्म हो जाती जहां पे टोनी नॉक होता, पता है, गेम वहीं खत्म हो जाती जहां पे टोनी नॉक हो जाता। बट टोनी ने क्या संभाला है भाई, पराजिन भाई यहाँ पे हमारा बना MVP, बट दैट गेम इज लाइक अनदर लेवल भाई। इमेजिन करो, इसलिए बोलते हैं इस PMSL अलग है भाई, PMSL अलग है। अगला मैच देखने में और अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है भाई। तो गाइस 800 लोग देख रहे हो, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू ईदर लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के कर दो गाइस, एंड ज्वाइन और ड्रीम नहीं, शाइन लाइक डायमंड, सॉरी शाइन लाइक डायमंड। ज्वाइन और टेलीग्राम गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने लिंक आ रहा है, सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम को। टेलीग्राम मौजा आ गया, मौजा। गेम तो था भाई। अगला मैच
जल्दी से स्टार्ट हो, देन अगले मैच के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे गाइस हमारा साउथ एशिया के अंदर। व्हाई इज देयर 1 में 30 हर ब्रेक आफ्टर थर्ड? उन्हें तो गाइस 1.5 घंटे का ब्रेक हमारे लिए बढ़िया है ना भाई, हम साउथ एशिया करेंगे उसके। लक्ष्य की टीम कब खेलेगी? लक्ष्य की टीम ब्रो कल खेलेगी। एमडी दानिश खान भाई। और गाइज मैंने लिंक दिया है, ज्वाइन करो है टेलीग्राम को। मेरे को 100 मेंबर करने, मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक आज हमारे 100 मेंबर्स ना हो जाए हमारे टेलीग्राम के ऊपर। जल्दी कर लो गाइज, 22 हमारे ज्वाइन कर चुके। तो अगर हम नाम लेके बताएं जो आज हमारे हुए, मैं एक साथ नाम लेता हूँ। मुन्ना, मुंशी भाई, रोहित भाई, रोहित भाई क्या बात है, स्वप्निल मुखर्जी भाई, इश, मानशु कुमार भाई, बिश्नोई भाई, अंशुल तोमर, विवेक थापा, ओजस भाई, राहुल सोनी भाई, अभी पागर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर डिस्कॉर्ड सर्वर गाइस। टोटल 22 मेंबर्स हमारे हो चुके हैं एंड सारी चीजें आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो गाइस। लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है चैट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैच थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। हाउ मेनी मैचेस रिमेनिंग ब्रो? 4 मैचेस आर रिमेनिंग। इसके बाद 6 मैचेस होते। वाई इज देयर 130 ब्रो? आई डोंट नो, कुछ होता होगा सीन, मुझे इस बारे में नहीं पता। ड्यू टू इफ्तार देयर इज ब्रेक मिनट। ओके ब्रो, बहुत आंसर मिल चुका है लाइक जिसका लाइक आप सभी लोग यहाँ वेट कर रहे थे। ड्यू टू द इफ्तार गाइज, यहाँ पे जो ब्रेक होता है वो 60 मिनट्स का रहता है इफ्तार की वजह। नूजी वॉज ओनली गुड इन इन्फिनिटी ही बिकॉज। अरे 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 शुभम तिवारी इतना टॉक्सिक हो रहा है ब्रो, टॉक्सिक मत हो रहे भाई, इतना इतना मत प्लीज। टेलीग्राम ज्वाइन किया साइबर भाई, थैंक यू सो मच भाई। टेलीग्राम का लिंक किधर है? लो जूलिया शाह भाई, ये टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। जो भी चीज होगी ना टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। जाओ गाइस टेलीग्राम को ज्वाइन करो जल्दी से, हमारे 100 मेंबर्स करा दो कंप्लीट आज के दिन पे, मजा आ जाएगा, मौज आ जाएगी, करवा दो। जाओ 22 हमारे हो चुके, 100 करवा दो आज के दिन पे, जब बता आप लोग करवा दोगे आ जाओ। लाइफ अनकट रहेंगे गाइस, उसमें और चीजें भी मैं शेयर करूंगा बहुत सारी चीजें, ज्वाइन कर लेना। हेड टू हेड आ रहा गाइस, पैराजिन एंड टोनी के का तो भाई फिर जवाब नहीं ना, हेड टू हेड भाई। चुम्मा चुम्मा भाई चुम्मा, इसकी स्टोरी डाल दे। विच इज योर फेवरेट टीम फ्रॉम पीएमपीएल? पीएमपीएल ब्रो कौन से रीजन पे? रीजन बताओ, रीजन रीजन बताओ ब्रो। टोटल मैचेस कितने हैं ब्रो? 6 मैचेस है टोटल, टोटल 6 मैचेस। टोटल 6 मैचेस है गाइस। चेक नूजी के इन इन्फिनिटी प्लेयर है। ओके, नूजी वाज एमवीपी ऑफ द पर इस ब्रेक 1 आवर बिकॉज़ ब्रेकफास्ट। यस यस ब्रो, got the answer, we got the answer. Iftar time. Nuzi's IGL, what to expect from him? Yes bro, Nuji IGLing कर रहा है bro. Nuzi is doing the IGLing वाला thing. So guys, anyone watching from C region, please let us know. If you are from Indonesia, if you're watching this, please confirm us. Who is the IGL of Empire? Anyone from C? Anyone from Thailand? Anyone who follows Empire Esports? Comment who is the IGL of Stunned or Nuzi, who is doing the IGL for anyone is live from C. Please make sure to hit the comment. I will be glad. Be glad. Please. ST किधर है? ST bro 530. ST will play 530. अरे तुम मुझे नेट की बात करते हो? अगर आप लोगों का फोन 5G है तो आप 5G यूज करो ना, फ्री दे रहा है 5G। अगर आपका फोन 5G सपोर्ट करता है, व्हाई नॉट यू यूज 5G ब्रो? 5G तो फ्री है, उसमें क्या आपको नेट का टेंशन भी नहीं है। अगर आपका फोन 5G सपोर्ट करता है तो यूज जियो। अगर आप जियो यूज करते हो, जियो फ्री दे रहा है, एयरटेल फ्री दे रहा है 5G। व्हाई यू गाइस आर नॉट यूजिंग दैट फीचर ब्रो?
I think Nuzi. I also think that the ideal. Somebody said Nuzi the ideal of Thailand chat. Okay. So yes, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है. तो गाइस ये जो बेस्ट मोमेंट्स है आप अपने टेलीग्राम पे भी दे देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको. देखो गाइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ. S2G ने जिंदा पैन मार दिया. लोल किसको मार दिया भाई? स्टोन इज द असॉल्टर नॉट आइजल. गिफ्ट्स गिफ्ट्स इज द आइजल. भाई अब नया आइजल देखने को मिल रहा है भाई. सिविक आइजल स्टोन है. टोनी के कॉल स्टोरी यस ब्रो. तूफान भाई हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपने हमारा शायद टेलीग्राम चेक नहीं करा है. मैं आज सुबह मॉर्निंग पे स्टोरी डाल दिया था, आपने हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करा होगा. मैं पहले ही सारी चीजें डाल देता हूँ तूफान भाई. मेरे को कल ही पता लग गया था रात को. मैंने आज वीडियो नहीं बनाया, मैं ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, नहीं तो मैं वीडियो बनाने वाला था. बाकी गाइस ज्वाइन कर लो. बाकी अपने टू गाइस मैं स्टोरी डाल रहा हूँ इस पे. गाइस आ जाओ, इंटरव्यू देख लो. Started off the day with not only Asian teams. That is a statement. So is there anything you want to tell them? Last time, one of your players said that Malaysia lobby or Malaysia teams are not that good. Well, teams can improve and always getting better and better each day. So, hope this says something to you. Ooh, it's getting spicy up in here. But let's talk a little bit more about the other two teams. Many people say banter le rahe guys, banter. NX and Sem9 have a good chemistry. But what do you think about that? I mean, Luyu and Lonsker have always been the good players inside the Malaysian scene. So it's not very surprising for the good players combining with other good players to create a team that is pretty much very, how I would say... A super team. Like a super team, something like that. So, yeah, I think combining good players is always the way to go. I'm really liking that. I'm really liking the dynamics between your two teams as well coming into this. So do you guys think that you'll be maintaining the consistency of your games today into the upcoming matches? Well, of course, because PUBG is always about consistency, and that is always our goal. It's not just about getting the chicken dinners. It's about getting all the good games that we can get, and not to mess up all the good games that we can get.
and keep on focus on playing our best. All right, thank you very much. I'm really excited for that. But before we stop, so you know how every team has a ritual before they start a game, right? So we have some teams doing chants, some teams have maybe they have a bantal busu or a stinky pillow. But what about Sem9? What did you guys do today that was different, that gave you guys a chicken dinner today? Well, we have our Longsker, who is non-Muslim, actually, who is fasting, actually, throughout the PMSL. Wait, throughout the entire 13 days to 14? It has been, I think he has been fasting for 6 days, I think. 6 days, yeah. Okay. So, yeah, just don't make Superboy bring him to sahur and you guys are doomed. Okay, so like coming back to him fasting, how is he fasting? Is he doing okay? Did he complain? I think at first he was doing the easy mode. Okay. Where he woke up around maybe 2 o'clock and something like that. But recently I think he's been doing the proper way. Like he's been fasting since like 9 a.m., 10 a.m. All right. So yeah, to all my Muslim brothers out there, even Longsker can puasa. So you guys better puasa. Exactly, and that's exactly what we call the puasa buff or the fasting buff. And here it's going to be for Sem9. Thank you so much, Lady D, for spending time with us here during the interview. Thank you. And for you guys over there, on to Caster Desk, I'll see you guys later. Bye. So guys, यहाँ पे क्लियर करा, स्पैम मत करना, देख लिया। अभी देखा, पर मैं कुछ कर रहा था, मैं स्टोरी डाल रहा था। क्विक सपोर्ट, रेवन क्लो, असॉल्टर, स्क्वीज, असॉल्टर स्टोन, आइजल, ठीक है, आइजलिंग स्टोन्ड ही है। नूजी असॉल्टर स्काउट, ठीक है, स्काउटिंग कर रहा है नूजी। स्टॉब्स असिस्टेंट कोच, हेड कोच, ठीक है। तो टाइम आउट मारना, नहीं टाइम आउट क्यों मारना, ठीक है भैया, एकदम बढ़िया। सौगात भाई, क्या हाल चाल? और आ जाओ चैट के अंदर, अब आ जाओ, आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं ब्रो। 999 गॉड भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो भाई, अगला मैच भी गाइस हमारा थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने कंपटीशन तो देख ही लिया, इस तरीके का टॉप नॉच कंपटीशन है। डोंट मिस आउट द कंपटीशन गाइस। मैं फेज वाले फुल मस्ती में रहते क्या? अरे अरे भाई, फेज वाले फुल मस्ती में रहते भाई, चिल बंदे बिल्कुल। फेज वाले फुल चिल बाजी आएगी भाई। टीम एमएस को फिस्ट प्लस जिंदा पैन मार दिया एस2जी ने उनके साथ ड्रॉप क्लैश लेने के बाद। लोल, अरे ये कब हुआ? 999 गॉड भाई, ये कब हुआ मुझे बताओ। ओ 79 भाई, सब लौंडे यहाँ पे मतलब मस्त चिल मोड में भाई, लैन का आनंद लिया जा रहा है भाई टीम की तरफ से भाई, बहुत बढ़िया। Why evolution is not playing bro, I don't know। अभी देखो आगे क्या होता है। बाय द वे गाइस, हमारा सेकंड मैच बूम पे गाइस, यहाँ पे बोनाहाउ को लाया गया है सब्स्टिट्यूट पे एंड हेजाक्स को यहाँ पे आउट करा गया है। मीनवाइल गाइस, 1 मिनट के अंदर आपका नेक्स्ट मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर लाइक आफ्टर 1 मिनट द मैच विल स्टार्ट गाइस। 1 मिनट बाद आपका मैच होने वाला है स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो। Why EVOS is not playing? Why EVOS is not playing? तो EVOS का सीन क्या है? वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट तो आपको पता ही है ब्रो, जहाँ पे ग्रुप वगैरह बैठता है। तो कुछ सीन नहीं, बस वही सीन है जो मैंने आपको। चलो बॉयस, 27 26 लेट्स गो। $2.5 लाख इज द प्राइस पूल। यस मेरे भाई, आने दो जल्दी से, आने दो। द व्यू जिंदगी।
मैं आपको इंस्टा पे क्लिप भेज रहा, अभी चेक करो पैन और फिस्ट का। ओके मेरे भाई, मेरे को डिस्कॉर्ड पे अभी अपनी वाली क्लिप गाइस, नहीं सॉरी टेलीग्राम पे गाइस मैं एक क्लिप आपको दे रहा हूँ, देख लो। ये मूवमेंट बहुत तगड़ा था क्योंकि, और आपका देखना बनता भी है जो भी हुआ है। लेट्स गो बॉयज, मैच नंबर 3 इरेंगल आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत बहुत प्यारा। लेट्स गो बॉयज। फ्लाइट पाथ सेंट्रल फ्लाइट पाथ गाइस, बिल्कुल सेंट्रल वाला फ्लाइट पाथ जिसको बोलते हैं आप, वाला फ्लाइट पाथ आपको देखने को मिल रहा है। स्कूल के ऊपर से जाता हुआ फ्लाइट पाथ, मिलिट्री ब्रिज के ऊपर से टीम्स ने लैंड करना स्टार्ट कर चुका है। टीम्स अपने अपने ड्रॉप पे जाएगी, मजे से लूट मारेगी, कोई दिक्कत का बात होगा नहीं। गाइस हमने टेलीग्राम पे भी अपना डाल दिया, जो पोस्ट था हमने टेलीग्राम पे डाल दिया गाइस। बाकी लो जी उठा दिया। Very generous one, but I don't know. Doubt it is going to be the same sort of ending like how we saw in the Medusa intersection before, but high chance yes it's going to be the center as well. मैं आपको इंस्टा पे क्लिप भेजा हूं, ठीक है भाई। इंस्टा पे गाइस वाली क्लिप भी डाल देंगे। बीटीआर स्ट्रगलिंग, यस मेरे भाई स्ट्रगलिंग तो कर रही है। बाय द वे गाइस मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। 100 करवा दो मेंबर्स आज के दिन पे, मजा आ जाएगा। ग्रैंड ओपनिंग हो जाएगी हमारी। Yeah, maybe or maybe even like during the last few days of this week, where maybe the points are already like, okay, we're really okay with whatever that we have, then they just really want to like fight Pachinki just because they want it back in the grand finals. So that will be that could be the case though. Now the fact that these Xavier they're not playing today, of course we couldn't see it, but let's see if that happens like tomorrow onwards. Yeah, gonna have to wait and see. Sort of Faze on the other end, it's gonna be a usual spot for them coming up to its side of Joker Pool, and very calm. You had deserve better team. अरे side of island. भाई थोड़ा sound high करो. Sound I think बढ़िया है यार. It is quite alarming because we do have both bridge inside of this circle as ये well. बहुत high हो जाएगी, So मैंने it's कर very दिया. difficult for the teams to decide whether to go south or the main peninsula. Most of us, if we cast it way back then, we're going to say there's definitely going to be the main peninsula circle. It's going to be the mainland circle. The snow is going to be just shifted down on the south, right? But not so much these days. It's best to actually wait it out for a bit. Yeah, that's why we don't trust the circle anymore. Yeah, as long as there is still the first circle, the percentage there. I mean, yeah, it's Erangel, PMSL for you guys, ladies and gentlemen. You've seen how difficult circles inside of Erangel can be inside of PMSL. So it could really happen. So that also means that, like Team Secret, they can have some sort of hope that, okay, hopefully it really pulls down. But if you're Team Secret, like, do you really want to hope for that? Very unlikely. So I do expect to see Team Secret still trying to go through the left bridge, in which, if that happens, there is again a possibility that BTR could be gatekeeping. Well, that didn't fare them very well for BTR last time, we remember. Yeah, the gatekeeping is great, but not if you're not in the zone, not if you're actually being chucked down by the blue zone. That's what happened for the side of BTR. They overstayed themselves too long. As multiple teams that actually made the same sort of rotation, just like they were in day number 1. We talked like week 1, day number 1. That's going to include UDO Alliance, Team Secret, and BTR. They love to overstay themselves too long in the blue zone and gatekeep each other out until both teams went down without any sort of a value from that. Yeah, and plus they came in a little bit later, so there were a lot of teams like waiting for them later on. To be fair, they did secure. Side of SM9, Loyu building up his gears as always. SM9, we did have a coach interview just now. It was Sly DD, super tall by the way. Super serious coach. I mean, like, I've seen him coaching right in front of my eyes. It's very strict.
But sometimes that's what you needed as a team, right? He knows for every single player. As a coach, it's so important because you are the pillar of the team. You have to know exactly the attitude of a player, how they actually think, how do they actually feel in certain spot, when is their comfort zone, where they can feel a bit of discomfort, because that's where you get to know the strengths and weaknesses of the players. I mean, like Pasha is also a coach, which is going to be coming up, my brother of a Sly DD. When I talk to both of them at the same time, who would have thought that coach has been such a big pillar and so much responsibility? Not just revising the teams, not just revising about the rotation. They have to know deep down inside if there are any sort of personal issues from the player as well, so that it will affect his performance. He needs to know inside out of a player so well to put them exactly which role that they can perform best. Yeah, that's a lot of. Yes, bro, I would say the job scope for a coach has definitely expanded over time. It's not only about the tactics, like what you mentioned, but it's also the mental element of it. So उन्हीं के हमारे the skill Telegram set पे of guys. coach really अभी needs just to मैंने वीडियो डाली अपने be, Telegram पे है. yeah, upgraded. I guess that's the right word. Upgraded, or if you want to be a coach for a pro team inside of PMPL, then you really need to have all those skills. You got to have those that I just mentioned, and then you got to have the people management. You need to be able to manage it. It's not only about like knowing your players and then not knowing what to do about it, but you need to have solutions for all that, things outside of the game as well. And you pointed out right, based on the conversation that the interview when Sly DD he was talking about how his players are. He really knows his players, and that just shows the bond between him and his players, and that allows easier management. Okay, boys. Yep. And speaking of Like, pro players, क्या बात if बोल you दी guys भाई ने? happen to be in the chat, want to be a pro player, there's always a slot for you. दिल की बात. But the most two important thing across two most important points and things that you should really put as your priority is going to be two of them. पर सिया First, you ये know how to shoot. इस ब्रो फुटबॉल Second, का ही है, इन्होंने positive एक्सपेंड attitude. करा अपना PUBG मोबाइल पे. I'm talking इसके साथ about मिलके. not just Collaboration side समझ लो, we can do collaboration this type है. kind of encouragement. No, they have to have this attitude of willing to learn, very open-minded, and have humility. That's one of the rarest attribute that we have in a pro player these days. Humility. If you have those in hand, you know how to shoot. Just talk to any of the teams. They definitely want to pick you up. Because by the end of the day, I talk to all the teams down there. What do you want to find in a player, and how do you scout your players in any orgs? It's the same sort of answers always. They can sharpen their skills, but you cannot build humility from scratch. But here comes speaking of from scratch. A bit of a lost journey here for both teams. RRQ Voldemort a bit too much in the front, deep into Sen9's compound. Having a 1-to-1 trade, the rest of RRQ now have to go there just to save his mate. But is it going to be worth it for RRQ right now? Okay, looks like they're going to try it. Let's see if they can get to the compound safe at least. And Best G will arrive together with Napeko. Voldemort can still be picked up though. So right now, 7-9 still a full squad. But for RRQ, if they don't pick up Voldemort, they'll be losing this fight. And Voldemort finally eliminated by Putra. That's a ban down for them. And the circle shifted again. This is why we said don't leave your compound too early. But 7-9 RRQ is not done. That's taking those DBS to work. While Prime Putra, the UMP start to breach indoors. While RRQ tried to flush them out. None of their utilities been dropped right on the spot, but Bask by the side of that finish of one. Putra feels like RRQ. This is what I worry about. This is going to be worth it for them to take this fight head on. Ooh, Mort knocked down, and now Long is going in. But he has Mort there in front of him. He will finish up Mort. It's going to be one left. Pre-fire coming in from Long, not allowing his opponent to move at all, and is stuck inside the building, inside the room. Oh, nice one, Sam9. बहुत प्यारा, OP Sam9 यार. Oh, what a fight. Really Guys, 3 gun, DBS, M4 and 4th one is UMP, जो highly percentage पे आपको देखने को मिलेगी. These are the 3 games जो हमको पूरे सीरीज पे देखने को मिल रही है. पर DBS तो डर लगता है भाई. एक गोली का कनेक्शन आ गया तो खत्म है भाई. DBS पे पुश हो रहा है ना. किसके साथ अगर कोई बंदा 1v1 ले रहा है भाई. Of this fight, no मतलब बंदे value चाहिए कम से कम return. 2-3 भाई.
And it's going to be hurting them quite a bit when it comes to the final. That's why मैंने बोला था But at आपको the same शैनॉक time, में they are 1v1 लिया था किसी for बंदे the playoffs. भूल गया मैं I'm उसका not नाम sure क्या if they लिया था will उसने 1v1 be भाई able डीबीएस to के push साथ down. I मैमपुर don't think वर्सेस so. They've डीबीएस में gotten 1v1 something पे overall. और उसने अगले वाले को bonus नॉक points करा standing है at 26 points. I did डैमेज mention लिया earlier, as long as you got बट बच गया 25 मे बी उसका points आर्मर and above, बढ़िया रहा होगा feels like you're safe to get into the grand finals. Yeah, I think will definitely be बहुत okay. तगड़ी होगी Don't expect them to lose out on that grand final spot for sure. But for Sem9, they should be okay as well. But yeah, like your theory says that, okay, you just need a little bit more just to be really, really secure. And with Sem9 coming from Severny, crashing into the school compound, taking out one, and then defending their ground from 3, man, they are not stopping. So they really want to go for that. As close as possible to the middle circle, which is a different kind of strategy that we're seeing. And we did talk about like that during the first round, that teams might come up with different strategies. Maybe before this they like to play the side, but this time they like to play in the middle, for example, and Sem9 showing it. Speaking of middle circle, right now nobody has a clue where is the middle until the third circle shifted again. But here comes Vampire, spotted out. Boom not taking any sort of risk down there. They know for a fact this is a bit too early. Just part ways. It's not worth investing as much resources as they are just on the second stage yet. But 5 more seconds to go. I have a feeling you might ended up around Milta Farm area. Yep, there you go. It's going to be the triangle between Farm, Shelter and Milta right now. UDO Alliance will gatekeep this one because Team Secret have to cut across. They'll be swimming over. DBD Faze just barely squeezing in. They're all moving at the same time. Look at the farm area. I'm talking about this. So will be only one team survive. If only Team Secret took the left bridge, which obviously was hard for them to know. The left bridge was clear. BTR didn't gatekeep them. But now they have to face up against UDO Alliance. But now, looking at Hill, getting a couple of knockdowns for themselves onto Alter Ego with Flash onto Potato. Alter Ego, only one player left. And it's going to be this compound where Fnatic is still alive. This warehouse. Bit of trading done here between the Gatslow. 2 more players, but Alter Ego being finished again. Feels like mission impossible coming up from Rosemary. It's still impossible, but back-to-back for Hill. No problem. This is what I mentioned about you have to make sure your health is more than 50 HP. Because the moment another team happens to rush in here, they are prepared. That case for Hill, they are more ready to take up another fight as Flash has been clutching this by himself. And we did talk about the timing of third party, and Hale is showing this. Just the moment, भाई just ये when the गन moment दूसरी है भाई Boom was done. भाई Hale ये गन immediately दूसरी है भाई comes इसको in, बंद and करवाओ Boom has डीबीएस को no भाई chance of resetting. भाई ऐसे ऐसे And now मतलब with चार that चार third प्लेयर party, मार दे 5 this प्लेयर मार compound दे is डीबीएस में theirs. बंदा और And ऐसा no लगेगा other क्या team's gonna इजी मार challenge दिया Hale. भाई Farm. There's another few teams right across them. Less than 100 meters there, around 100 meters apart. Flash can see through. I think that's going to be Sem9 just across them. Who's still fighting against, I think it's going to be DBD. High possibility. Team Secret, on the other hand, they're going to just hold on to this land. Just Description में ऐसा क्या है? Let me check some description. Not camping at the end of the bridge. Okay. But Kenny definitely saw the movement coming up from Team Secret. They heard the rotation. He wants to stay outdoor to see on the rooftop if there's any sort of players moving out here. Okay, let's see if Team Secret can survive this. But they can follow like the bottom side into Milta and they'll still be okay. But they seem to be sticking here, maybe because they set up the circle, so they want to see where the fourth phase of the circle goes. UDO Alliance, on the other hand, they'll be happy to take those points, and as long as they keep eyes on the Team Secret, there's still an opportunity. Now Jumper will expose himself. It's a little bit far. Kenny not taking the shot. He wants to take up a shot, but there's something in between him. Sem9 and DBD having a bit of exchange here. Sem9 being clustered himself in this mushroom tower. I mean, like, this mushroom tower is great, but you don't want to overextend yourself because you know for a fact there's going to be more than one team rushing into here any time now. So they need to leave the moment they have the opportunity, and that's what Sem9 is trying to do. Right on top of Farm, Hill is taking reign over that compound. BTR and Sem9 moving at the same time, but different directions entirely. With DBD still at the rim of the circle. Vampires are spreading out
trying to bull those people from behind, but Sam9, they have to hop out. They got shot from afar. It's going to be Faze, and alongside, there's going to be 4 teams right on the spot. Wow, it was Hale shooting him down, but now focusing on the DBD versus BTR. Let's go here. Can DBD finally secure that chicken dinner, but the nade onto Gen Force. That will be a good start there for DBD. Ziggs will take out Gen Force, but they're not clear yet. They need to take out the rest of BTR in this compound as they're rushing through. Yen goes in. Yen almost getting it, but Yen loses. Liquid is going to use, or Liquid right now, have only 13 ammunition left. Not much bullet to spray on anymore. That's going to be the shotgun. Shredded almost his fast, tossing another nade. He didn't even heal himself. He doesn't have any sort of medical utilities. Too big of a risk. A dangerous gameplay by the side of Deuce. He just needs to build this one. I have a bad feeling for Liquid or Deuce if he overstays himself. UI tried to stall so Deuce can actually come back to his side. But the problem is he doesn't have enough utilities on that side. Here comes Ryzen to give extra help. But DBD and the sort of BTR having a bit of a standoff. UI too far apart. There's Sam9 on the other hand. Yeah, much needed backup there. Because his vehicle is on the right side where DBD can shoot. Right now, Deuce needed down. Okay. This could be an opening here for DBD. But right now, they don't seem to be confident enough to push. Maybe they're aware of the other team shooting in from the outside. Ryzen tosses a nade. Tries to buy time, hopefully, to get to his teammate. The smoke will be popped out as well. So he's going in for the save. Tossing another one, Jimmy. Why description में South Asia teams का नाम है? South Asian की team करेंगे ना bro. Ryzen taking the front line as he is bleeding out. DBD stop to push. AKM in Echo's hand trying to go for the rush. Or Jimmy OP with the bison going on the flank side. Putra taken down by you, taken down you are. There's going to be the support at the back being ambushed. They have to build this BTR. They cannot overstay themselves because their eyes being shut down from behind. Echo on the other end will force this. They clouded themselves in the smoke. Just stall. Just stalling right now. Ryzen trying to find a way to get in, trying to at least secure another. Playing around the walls. Jimmy OP knocked down. Nice, Ryzen, nice. He saw the silhouette, follow his hunch, and Ryzen is still alive. Even the molly's been dropped off, and Ryzen just healed himself back up at 6. Will reset on Jimmy OP, but Echo will be the main for Ryzen. If he's trying to decide to push alongside with the team here. Lucky enough for Ryzen, there's no window, only a small circle window there is for them to see from the outside. But Ryzen, the moment he jumped down, it's going to be the end because DBD is just surrounding him very hard, cornered him every way possible. Yeah, if he happens to end up on the other side, the other team's waiting as well. So Ryzen, he is caught right now. Unless he can pull off a big clutch. Or the circle will buy time for him. Well, the circle still bought time for him though. But we can see the movement here. Bacon time is coming in. Udo Alliance on the vehicle too. So they might be interested to be a third party in this compound. Pick up those points. But right now, Ryzen, oh man, he's really stuck. Whereas Udo Alliance, they'll be happy to pick up the point up against Yuhai. Oh, it's going to be Putra pick up the point against Yuhai. Where's Ryzen going to go now? DBD trying to finish off everything because they know for a fact so many teams inside here, including Bacon time. They need to end this and have a wrap on it, but Ryzen slowly be clipped off by those nades. It's really difficult for Ryzen to hang it on. DBD decided to push forward 2 at the same time. It's going to be really tough for him to actually spray down PB. I'm not sure what happened, but they got finished off by Bacon time, who just squeezed in there on the right side. Here comes Ryzen, barely make it out alive, but looking back at the circle as a whole. Vampires coming in very late. They have a different approach this time, playing alongside of the blue zone. They want to push in and bulldoze people from behind instead of going in the center, how they've been playing for the past 2 weeks. Yes, and at the same time, they've been blocked by Team Secret. So right now, zone is already closing anyway. So Vampire, how are they going to get out of this? And they don't have a full squad. They don't have Tony K, one of the star players. Team Secret still has a full squad. They have the numbers. Bacon time in this compound. Just look at these 3 compounds. You have 3 different teams in this. It's going to be interesting if anyone tries to go in. But GE, the team that's desperate for points, coming on to Team Secret. Secret just too far, but they're spreading out with some of them not having any sort of barricade. But GE will be stopped by Izane. Izane, can he work
like how he's supposed to do, but GE obliterate half of Team Secret down to only one player, but Vampire's the one stopping the movement coming from GE. They have to stop the transition here. Shrap's trying to find a back line, and now they're going to go for the rush. One team out is going to be again Team Secret with 0 point once more. I'm not sure about going to the grand finals, but Vampires Team Secret struggling, taking the shot from Yudu Alliance, even though they are focusing onto a sort of GE. Well, to a certain extent, Vampire would like to say thank you to GE because they became a distraction to Team Secret. But right now, Yudu Alliance, they'll be happy they can take down Vampire. The compound is a good spot now. You can see that Flex is getting closer and closer. The rest of Yudu Alliance as well. They're going to rush in. Flex is going to be the decoy. And now Vampire, only 2 players going up against 4 from Yudu Alliance. Kenny is a bit far. But Shrap's and Vampires down to 2 players there. Outnumbered for now, but if they know how to play the corners around this compound, they can clutch 2v4. It's going to be a tough one. Challenging, yes. But they are the Vampires. They are witty enough to call this through. But look, and Flax slowly making very cautious move towards the approach. Shami coming up from flank side. Kenny on the other end, keep an eye out in case they're being ambushed. Straps and Tony, Straps and Snoozy holding each of them one corner. Snoozy straight, get out from there. Going for a different compound entirely, a small building. But Snoozy, last tick of health remains. Slither, less than 5. Flex, Nate, bounce exactly where it needs to be. Oh, that's a beautiful angle, leaving Straps alone. And now Ade look, okay, Straps is ready with the DBS, close quarters combat. ये DBS versus DBS ही करवा लो. DBS करवा लो भाई. DBS चल रही है भाई completely. Still win this fight. But now the next phase of circle did move away from them. There will be a next challenge to get on this. Get into the circle next. SLD versus Box. It's a bit of civil war between SLD and Box right now. But the moment they're done with the fight, it's going to be Sam9 waiting at the other hand. Goes to always be the entry fragger for the team. Spotted other players coming up across them. It's going to be Box now taking their vehicles, knowing for a fact that he'll be close by the Blues in less than 2 minutes, 30 seconds. Make it less than 2 minutes now. Stage number 6 is no joke when it comes to those blue zones. Kenny taking on Winnie. Box 1 knock. Yudu Alliance, their next contender here. They just bailed it out against SLD, but Levy, the moment he pushes himself up, Sam9 making sure they cannot even get in here. Denied entirely for the entrance in the safe zone. Ooh, yeah, it's going to be tough for them. And it's going to be A-okay for the 3 teams with their respective compounds in the circle. But now it's all about defending the area, and the move in has started. And it's going to be SLD, but Quan Chi goes down, gets low. Be shot down as well. This could be an opening for SLD, but SLD been traded back by Tiger. Tiger will secure that elimination point. It's already 7 elimination points for Hale Esports. Started Sam9 also not going to bow out quite early. Yudu Alliance secure himself 16 games for Sam9. Yudu Alliance taking on Sam9. But is the previous organization? तो Hale के जो बंदे थे वो completely lineup change हुआ है. अभी like मेरे को दो बंदों को पता है BRU से Tiger and Sky only. और भी है बंदे. While Hale trying to clear out those in the field, right in the line of sight of Sky only. With a mini 40 and 416, here comes the spray with 200 over bullets. He can spray all day. Ooh, wow, yes. With that amount of bullets, it's going to be hard, but who needs a bullet when you have a napalm flash to take down Paragen? And it's going to be Gosu all alone, and his position not easy at all. Nate's raided down onto Paragen, and Paragen will be taken out by Tiger. It's going to be another point for Hale Esports. But we got 5 eliminations dominated for Bacon time on the other side. भाई यहाँ पे सिंपल बात है. एक चीज़ बताऊँ, अभी रुको मैच खत्म होने दो, फिर बताऊँगा, थोड़ा जल्दी ना हो जाए. भाई देखो, नहीं तो वैम्पायर ने डोमिनेट करना है, नहीं तो हेल ने डोमिनेट करना है. Low U, the only one that didn't secure any sort of elimination on this side, but he's giving so much support. हेलो कुनाली, कैसा है? कुनाली, लाइक तू कर दे, लाइक सब तब करेंगे. But for the side of DBD, शॉटगन मैटर पसंद नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है. बट यार जब शॉटगन ही शॉटगन देखने को चल जाए तब फिर वो अलग सीन होता है ना यार. एक शॉटगन चलाए बढ़िया है भाई, बट अब हर एक मतलब शॉटगन ही शॉटगन दिखने के right now it still has the 3 teams with their respective compounds in it. वो तो ऐसा लगता है कि शॉटगन backstabbing can really happen here.
They choose to move into another compound. But now Gosu, who really needs to move. Fighting against Sky only. Sky only, 60% of health. Been naded back, but that shot came in from Sem9. On the Sky only, that saved Gosu. Oh, Gosu. If nobody's shutting him down here, it's going to go monster. This guy is a beast if he turn his mood up. Gosu spotted out Lung. His jump. Oh, here comes a spray. There goes knock. Gosu, the moment you save this guy, he will not show you any sort of mercy at all. 2 smoke, 4 grenade that's left by his side. Trying to find Yudu Alliance player. He definitely saw the smoke. He knows there's somebody in the smoke. He tried to finish off Sem9 at the same time, but he's alone out there. Exactly सही है आयुष केसी शॉटगन का SLD, मेटा होता the है last वैसा भी player नहीं that कि is मतलब सारे Gosu प्लेयर can ही have a शॉटगन यूज bit कर रहे हैं more मैं उसकी time बात to कर live, but how वो much मजा नहीं longer? The आता moment Sem9 push in, हर remember मतलब he'll spot him out. That's समझ the लो end, but शॉटगन ही at चल least रही है शॉटगन you वर्सेस get one शॉटगन more. Gosu! Wow. गोसु भाई Okay, that's advantage taken. Well, if you can get more out of elimination points, that will be great because he does have a vehicle, so it's going to be tough for him to move in. But now, speaking about moving, he's going to be utilized against Bacon Time. Bacon Time now. Can he get them? Yes, he can get one. Can he get a second one? But no, he loses the fight. Utilized. They still maintain their players. And they took over the compound from Bacon शॉटगन का Time. डैमेज इतना है कि समझ रहे हो कि अगर एक अच्छी गोली कनेक्ट होगी समझ लो खत्म है सीन एक अच्छा शॉट Almost not entirety of Shamil. They only have 2 players left. The only one that actually have a full squad each going to be Hill for now. But for how much longer, I'm not sure. If they can revive, yeah, they definitely revive his teammate. So he'll have the manpower. But can they fight the entirety of this map here with DBD having a तो डैमेज अब जैसे former triangle शॉटगन की बात करते हो शाओ है शाओ भी शॉटगन चलाता है वो पहले भी चला रहा था अभी भी चला रहा है डैमेज रिड्यूस The होने game changer, अभी but भी he's चला been रहा है और अभी भी burnt नॉक्स off by निकालता the blue zone bit by bit. समझ रहे हो He चीजें can't push forward, running dry of his health utilities. Now he's just buying and stalling time while waiting for another team to go down. Yeah, it's probably going to deny himself to the zone. There's no way he's going to get out of this. And true enough, Gosu will be taken out by the zone. That's going to be the end for SLD at number 5, 3 elimination points. And look who has the circle. It's Judo Alliance right smack in the middle of it. If only they can hold their ground, but unfortunately they don't have enough players. It's going to be a big one here for Judo Alliance if they can pull off a chicken dinner. Unless Skill starts to fight against DBD first, while on the side of DBD, they are eyeing out to the side of Semnan at the back line, the furthest one away. Gasler spotted them out too. They steals it away from the side of DBD. Gasler getting on one. Only one last player, Putra, coming up from Sem9. How to get out? It's an open field the moment he just step and stand up. It's gonna be the end of him being sprayed down by both players at the same time. DBD and Hill. Keeping an eye close to the side of Sem9. They're having these 4 walls going for Hill. This warehouse is a very good compound to stand in, but they're not in the center entirely. Utilized. Even got himself an upgrade. Ooh, yeah, okay. They got an upgrade because there were a couple of boxes there. I took advantage of that. But like what you mentioned, for Sem9, they're in the toughest position possible. Get slow. Know that someone's there. And Putra, 50% of health. It's going to be a shot here for get slow and get slow. We'll finish off Sem9. Now it's going to be बढ़िया है ड्रॉप पे है तो बढ़िया है utilize on DBD for the chicken dinner, and DBD not going to jinx it just yet, but they're in the top 3. 12 elimination in the hands of Hill, not showing any sign of yes bro slowing DB down should be at an all. airdrop. While DBD do have 3 eliminations, but it's not going to be enough. They need to secure a bit more to make sure that they can secure the slots in the grand finals later. But Hill just taking control over the circle right now. There's no more circle left, but they definitely have the firepower. They have enough utilities to last longer than either of the team. You do line stuck with 2. I'm not sure how much utility they have. They do have themselves. They did actually upgrade with those airdrop. But on the side of DBD, they have to climb out of this wall. Lucky enough, they have smokes. But Hill is super scary right now. Oh yeah, super scary, especially when they're in a full squad. But look at the nades from Judo Alliance focusing onto Hill. DBD, they have created a smoke bridge, but no opening for them to cross over just yet. Only they have the information of the position of Judo Alliance. So right now, you can see that who's going to win this? It's a 3-way war. Basically, who moves first, they might lose. Right now, Hale, they definitely want a compound of Judo Alliance. DBD is eyeing that as well. But DBD is taking a slower approach as Hale now has Get Slow.
They got their numbers. They're going in for the rush with those vehicles. Double down. There you go. Shamal is the first one. DBS is just super broken. DBS lead. Here we go. It's down to DBD versus Hill. Will you have to fight DBS with the DBD? Why not? It's always the case here because the DBS always win DBD. Oh, here we go. Tiger with the DBS. There you go. And it's going to be Hill Esports. Oh, एक बार हेल ओपन द चैट. अरे 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 टीबीडी बहुत बढ़िया एंटी. वो बीटीआर के साथ जो उनका पुश हुआ था काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करा भाई. बहुत ज्यादा मजा आ गया. क्या फाइट हुआ, मजा आ गया. बस देखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है. पीएमएसएल देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे. डीबीएस लॉर्ड लक्ष्य से क्यों नहीं बीटीआर में? क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया भाई. Guys, PMSL meta equal to DBS plus M416 with 6x and 4x. That's it. DRU, hello PSY. Here we go. The Flash is the MVP. 7 eliminations, 1180, 67 का damage है भाई का. If I should be in airdrop as damage should be. Not now switch to SA. Bro अभी start नहीं हुआ, ऐसे start नहीं हुआ. काउंटडाउन ही चल रहा है. हाँ भाई पता है मुझे, ऐसे चुना. बाय द वे गाइस, अगर आप 800 लोग 10 लोग देख रहे हो, इफ यू आर न्यू टू द स्ट्रीम, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आल्सो गाइस ज्वाइन आवर लाइक, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको सारी स्पोर्ट्स की चीजें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी. व्हाट अ चिकन, यस हिल, व्हाट अ चिकन, व्हाट अ कॉन्फिडेंस. आई सेड व्हाट अ कॉन्फिडेंस. हिल के लॉन्डो का कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पीक पे भाई. अभी के टाइम पे कॉन्फिडेंस ही लाइक की है हेल की. अगर आप बात करते हो बहुत नेक्स्ट लेवल. ये क्या हुआ बीटीआर को? बीटीआर कब का लाइनअप ब्रेक हो गया मेरे भाई? लक्सी परसिया में है मेरे भाई. हाउ मेनी टीम्स इन डब्ल्यूआई एंड पीएमएस? पीएमडब्ल्यूआई पता नहीं ब्रो. चीफ भाई अभी इसके लिए कोई सचिन के अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. डीबीएस ही डीबीएस बस ब्रो. डीबीएस ही डीबीएस है. तो गाइज ज्वाइन और टेलीग्राम. आज के दिन पे 100 मेंबर्स है, जल्दी से करवा दो, मजा आ जाएगा. करंटली वी हैव वेट अ मिनट. Currently we have I guess 31 subscribers, like 31 members, 31 लोग जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है हमारे को टेलीग्राम के ऊपर. सो बहुत सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम पे आती रहती है. लाइक अभी पीएमपीएल ईयू में प्लेयर अभी जो बैन हुआ है, 18 टीम्स हो चुकी है वहाँ पे 20 से. सो केव की टीम भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है. वहाँ हमने पहले बता दिया था, हमने पहले ही लाइक इंस्टाग्राम वगैरह में सारी चीज़ें बता देते. सो ज्वाइन करो एंड लेट्स गो बॉयज. कुनाली हेलो. अब पता चल रहा है डीबीएस ड्रॉप में क्यों आती थी. हाँ डीआरएस कहाँ है? डीआरएस ब्रो अभी आएगी. ये तो अभी पीएमएसएल चल रहा है, अभी हम शिफ्ट करेंगे. वेयर इज परसिया? प्रो परसिया आज के दिन पे बेंच है. सो परसिया मोस्ट प्रोबेबली कल ही खेलेगी. अभी पीएमपीएल ऐसे देखो देख रहे भाई बीटीआर वहाँ पे अभी काउंटडाउन चल रहा है मेरे भाई. क्या देखेंगे अभी? थोड़ा ना मैच स्टार्ट हुआ है. मैच होता है 5:30 पे स्टार्ट. अभी वहाँ काउंटडाउन चल रहा है. काउंटडाउन देखोगे क्या? काउंटडाउन देखना है तो बताओ, काउंटडाउन दिखा देंगे आपको. कैसा है भाई? एकदम बढ़िया सात्विक रेड्डी भाई. आप सुनाओ, आप कैसे हो? डीआरएस का चिकन हो गया? ओके भाई, डीआरएस का चिकन हो गया. अच्छा जी, अभी 3 मिनट है स्टार्ट होने को. अभी स्टार्ट होगा देन मैच स्टार्ट होने को और ज़्यादा टाइम होगा भाई, बहुत ज़्यादा भाई. मेरे को तो पीएमजीसी की वाइब आई थोड़ी यहाँ पे पीएमएसएल पे. आई थिंक ऑर्गेनाइजर सेम है पीएमएसएल वाला ही, और सेकेंडली लैंड भी सेम इवेंट पे हो रहा है. सो सेम इवेंट बनाया अभी, एक पीएमजीसी वाली वाइब दे रहा है. तो गाइज अब स्विच भी करने वाले हम थोड़ी देर पे. एंड गाइज अगर आप चैनल के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक. जल्दी से इसको गाइज 1000 लाइक करवा दो. 683 लाइक्स हो चुके, तो जल्दी से 1000 लाइक करवाओ. एंड पोल भी आज गाइज आ चुके थे. फेज वेम्पायर पे काफी सारे लोगों ने वोट दिया है. अभी इस पोल को एंड करेंगे आपकी आंखों के सामने. वी आर नाउ गाइज एक पोल कर रहा हूँ. विच इवेंट यू वांट टू सी? विच इवेंट लाइक यू वांट टू विच इवेंट? पीएमएसएल कंटिन्यू करना है या फिर पीएमपीएल देखना है? बताओ. आप लोगों के सामने रिजल्ट्स है, आप लोगों के सामने पोल है. पीएल का वो कल होगा टेलीग्राम पे. अरे 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 अरे
हेल का होल्ड क्लेन क्या है? दिस इज अ न्यू टीम। यस ब्रो, दिस इज अ न्यू टीम। द सेवियर पर्सिया गीक वॉइन आज नहीं खेलेंगे। गाइस बताओ जल्दी से, मैंने डाल दिया है वोटिंग आपका। अब आपकी वोटिंग आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। पीएमएसएल के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे 33 वोट, 200 वोट रखते हैं। 150 200 वोट, 100 150 200 के बीच में वोटिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली। बाकी लाइक करते रहो, देखो क्या होता है। 30 70 30 भाई ने तो फ्यूचर से आया डीआरएस का जिक्र। डीआरएस का जिक्र, अच्छा। हेल का ओल्ड क्लैन क्या था? ब्रो ब्रो नई टीम है, नई टीम है, नई नई टीम है। हेल की नई टीम है, पुराना बिल्कुल खत्म करके अभी नई टीम आई है। तो गाइज वोट करो जल्दी से, आपके स्क्रीन के सामने वोट सारे, जल्दी से वोट डालो। अब आपकी ओल्ड स्ट्रीम पीएल वाले पे स्ट्राइक नहीं आ रही? आ रही है ब्रो, आ रही है। कूल बॉय, धीरे धीरे करके आती है। लाइक ऐसा नहीं होता है कि वो आ जाए, बट आ रही है। मैं दिखाऊं, मेल दिखाऊं क्या अभी? रहने दो यार, मैं किसी को नहीं करना चाह रहा, बट आ रही है, आई है, एक हटी है। धीरे धीरे करके भाई दे रहे हैं ना। पूरे राम तो गाइज 84 वोट्स हो चुके हैं, 69%। जल्दी से इसको 100 to 150 रखेंगे वोटिंग का सीन। इतने ही वोट्स आएंगे, जल्दी से वोट करो। बाय द वे बहुत हाई परसेंटेज पे पीएमपीएल ही जीत रहा है, सो मोस्टली हम पीएमपीएल ही करने वाले। हाईली परसेंटेज है, तो एंड ही कर लेते हैं। सो गाइज हियर वी गो। आपकी स्क्रीन के सामने लेजिटली पीएमपीएल जीत चुका है। सो डोमिनेशन। गाइस क्या लग रहा है आज कौन डोमिनेट करने वाला है? नेपाल करेगा, कोलिया करेगा, या फिर आज बांग्लादेश रीजन की टीम्स करेगी करेगी या फिर और पीएमपीएल का वोट करो। अब मैंने ये कर दिया ब्रो, मैंने बहुत मेहनत लगती लिखने में, थोड़ा सा वो कर लो भाई प्लीज, थोड़ा सा वो कर लो, ठीक है? ठीक है गाइज, बाकी 702 बस, थैंक यू सो मच गाइज। अब मोस्ट प्रोबेबली पीएमएसएल पे तो 1 घंटे का वेट होना। ओ भाई पीएमएसएल का वेट देख रहे हो, 1 घंटे का, 60 मिनट का ब्रेक यहाँ पे तो आ चुका है। काउंटडाउन को ओपन कर रहे हैं बंद, एंड वी आर शिफ्टिंग टू न्यू पेज, दैट इज साउथ एशिया, बांग्ला, टू इंग्लिश। आज इंग्लिश कौन है देखते हैं। ओह न्यू कास्टर्स। Going up to the names of DRS, T2K, all of these teams. I've seen them in the past, but today I think would be a little bit different. Well, definitely it's going to be a different because DRS, they were having a very consistent run, but yesterday was not in their favor. Yes, they came second in one of the match, but other than that. लो भाई आपकी स्क्रीन के सामने, दिस इज द लास्ट वीक गाइस, जो वीक 3 ऑन गोइंग है। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, कल हनुमान जयंती भी है गाइस, कल हनुमान जयंती भी है। सो हैप्पी हनुमान जयंती, जय श्री राम, लव यू गाइस। एसटी डोमिनेशन करने वाली, देखो भाई, भाई पीएमपीएल से पीएमएसएल अलग लेवल पे है। दोनों टूर्नामेंट का लेवल देखो, कहाँ पीएमएसएल कहाँ पीएमपीएल। ठीक है भाई, भाई बीआरयू के रोस्टर है क्या भाई? हेल बीआरयू का ब्रो पूरा रोस्टर नहीं है, 2 प्लेयर आए हैं। है कि भाई बीआरयू को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, बीआरयू है भाई, बीआरयू का रोस्टर चेंज है भाई। बीटीआर का कोच बेकार है, हर बार प्लेयर्स चेंज कर रहे हैं। बीटीआर का कोच बेकार है, अच्छा भाई काशिम अली, ऐसा सीन है क्या? पीएमपीएल ऑलवेज नो एसटीडीआरएस 4MV ISS। ओके, मंगोलिया वाली स्ट्रीम चलाओ। ओके, बीटीआर का एंगर इशू मतलब 4MV। गाइस बताओ आज के दिन पे कौन सी टीम डोमिनेट करने वाली है? बाय द वे पहला मैच हमारा थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस पीएमएसएल से हम स्विच कर चुके हैं पीएमपीएल साउथ एशिया के अंदर। 60 मिनट का ब्रेक है पीएमएसएल के अंदर अभी। तो तल ऑल सी रीजन एंड ऑल सेकंड वेज इन आईट की डोमिनेशन देखिए भाई, आईट तो भाई टीम ही अपने रीजन की टॉप क्लास टीम है ब्रो।
भाई अपने रीजन की टॉप क्लास टीम है। केटीएम में क्या लिखे? अरे 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 भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुणाल कल आ जाना सब 3 बजे वीएस का डोमिनेशन देखने वाले। चेक पॉइंट्स टेबल ऑफ पीपल ब्रो देख रखा है कॉस्ट गेमिंग, हमने इससे पहले लाइव पे अच्छे से चेक कर लिया था। रिएक्शन भी आया उसमें, जाके देखना जरूर। हमारा रिएक्शन भी आया उसमें क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था उस टाइम पे एंड आई वाज शॉक्ड। इतना ज्यादा गैप कैसे? गैप होता है भाई, एक होता है गैप, एक होता है गैप का गैप, वो गैप का गैप का गैप का गैप है आई का। भाई मत पढ़ना कर इनकी चैट, हम लोग रिप्लाई दे देंगे इनको अपने अंदाज में। सर कुणाल तो इंतजार से है अपने का। अरे कुणाल एक चीज बता, तू तो फैन होगा ना UK07 राइडर का, तेरे तो यार उत्तराखंड का राइडर है यार, उत्तराखंड का नाम कर रहा है भाई। हाय हाय STE एंड वाइब्स, अगर या सीजन अच्छा खेल गई तो बाकी टीम्स का PMGC का कोई चांस नहीं? क्यों नहीं है? है ऑब्वियसली है। साउथ एशिया चैंपियनशिप को क्या हवा में ले रहे हो क्या? हल्के में ले रहे हो क्या साउथ एशिया चैंपियनशिप को? बिल्कुल नहीं लेना। टीम का एलिमेंट्रिक्स 11 एलिमिनेशंस, 33 एलिमिनेशंस अपने है फ्रैग भाई के, एस्ट्रा भाई के 20-32 भाई। इनकस इनकस कल अच्छा खेला था। चलो गाइस जल्दी से बताओ आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? गाइस आज मैच भी तो आईपीएल का, आज आईपीएल का मैच भी है। हेलो मेरे भाई, क्या हाल है? आप वाली भाई एकदम बढ़िया यार, आप सुनाओ आप कैसे हो? क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया हाल चाल है भाई, एकदम बढ़िया हाल चाल है। आप सुनाइए क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, सब मस्त मजे में? नोवा में न्यू रोस्टर आ रहा है, मतलब ऐसे में हमारी बड़ी टीम थोड़ा अच्छा खेलने या फिर आते हैं, फिर डोमिनेट स्टार्ट करते हैं, बड़ी टीम भाई 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 समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। पहले कि हमने पहले जियूस को टक्कर दी, पहले जियूस ने डोमिनेशन बचाया, फिर जियूस को टक्कर दी DRS ने, जो वो SG का लाइनअप है। फिर ST आ गई, अब ST को DRS फिर से जो नई फॉर्म है वो टक्कर दे रही थी, अब वाइब्स आ गई। सही है भाई, आपके कमेंट को मैं समझ सकता हूँ। बड़े हो भाई, आज कुछ ज्यादा जल्दी आ गया आज ब्रो। फुल स्ट्रीम ब्रो, 2 बजे से स्ट्रीम स्टार्ट करी आज हमने, पूरा 8 बजे तक स्ट्रीम गाइस। HVV टिक्सी का गेम आपको कैसा लगता है? बढ़िया भैया, HVV के सारे लॉन्डो का बढ़िया लगता है ब्रो। आपका फेवरेट IGL कौन है? फेवरेट IGL कौन से रीजन से पूछ रहे हो? बताओ पहले। बाय द वे गाइस, पहला मैच आपका आज के दिन पे मिरामार ही मिरामार है भाई, 3 मिरामार है आज के दिन पे, एक रैंगल सिर्फ और एक शहनाव। दिन तड़ाक दिन तड़ाक अनारा।
केव बैन हो गई भाई, पता है ब्रो, हमने अपने डाल दिया है अपने टेलीग्राम सर्वर पे, हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ऐसे अगर आपने भी हमारा टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन नहीं करा है तो जाके टेलीग्राम सर्वर हमारा ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें अभी आपको इतनी लेट पता लग रही है, हम ऑलरेडी ऑलरेडी बता चुके हैं। आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हो ई स्पोर्ट्स सिनारियो से, ई स्पोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी गेम बढ़िया है, ई स्पोर्ट्स का सिनारियोज एंड ऑल सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। गाइज जाओ जल्दी से जाके हमें, मैंने डिस्कॉर्ड लिंक दे दिया, कुणाल सेव कर लेना इसको एंड इसको बीच बीच में स्पैम कर देना ना। हमारे 100 मेंबर्स आज के दिन पे करवा दो, मजा आ जाएगा। अब 18 टीम्स, पूरा टीम कंटिन्यू करेगी। यस ब्रो 18 करेगी। बीटीआर में कौन कौन है ब्रो? बीटीआर में स्वफिल है, 70 है, लिक्विड है, राइजन है एंड यू है। ब्रो योर फेवरेट टीम, ग्लोबल टॉप 5 टीम नेम प्लीज। गोकुल भाई थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मेरे को टाइम चाहिए, ये क्वेश्चन एकदम से नहीं बता सकता आपको, थोड़ा समझना पड़ेगा। एएसएल प्लेड पीएमजीसी फाइनल सीजन, आई नो मेरे भाई। एएसएल इवन ई स्पोर्ट्स। यार बांग्लादेश रीजन पे जेंडर भाई अभी तक अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, चीजें बैन के बाद अप्स डाउन ही है ऑनेस्टली सेइंग। बट मैं आईजल तो नहीं बोलूंगा, मेरे को उस टाइम के लाइनअप्स बड़े बढ़िया लगते थे। बदरेब काफी लाइनअप बढ़िया लगता था, मतलब खेलता था। एसएस राफत हो गया आपका, मैग्नेट हो गया, ये बंदे बढ़िया थे, अपने टाइम के बेस्ट बंदे। आज एसटी पैसिव खेलेगा एंड चोकर करेगा, नो जोन सपोर्ट देख लेना। अरे अरे सुमन भाई, अच्छा तुम भी पैटर्न समझ गए, अच्छा तुम भी वो पैटर्न समझ गए हो? अच्छा बहुत बढ़िया। अरे कि भाई फेवरेट टीम एलजीडी है। अरे अरे भाई परसों मेरा बर्थडे है, थोड़ा हाथ कर विश कर दो फ्रॉम पाकिस्तान। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सूरज भाई, आप जियो हजारों साल, बहुत सारी खुशी आपको, जन्मदिन की कामनाएं। एक बार पीएमएसएल एंड पीएमपीएल ऐसे की प्रोडक्शन को कंपेयर को जमीन। ब्रो यार तुम्हें कंपैरिजन करना बंद करो। आज एसटी पैसे खेलेगा ब्रो, ठीक है। पीएमपीएल पाक फाइनल्स की वॉच पार्टी, एमके अल्ट्रा भाई विल ट्राई माय बेस्ट, देखते हैं क्या सीन बनता है। ब्रदर यू आर पहाड़ी, यस मेरे भाई। इंडियन नो वन प्ले, आपको माई टॉप 5 HVVV अल्फा 7 S2G ST, मेरी भी सेम है। पीएमपीएल पाक फाइनल्स की वॉच पार्टी विल ट्राई माय बेस्ट, बाकी देखते हैं ब्रो। ओके आई एम ऑल्सो पहाड़ी, बहुत बढ़िया भाई। आपका क्या ख्याल है आई8 के बारे में? आई8 इज अ गुड टीम ब्रो, दिखा रही है डोमिनेशन, सिंगल डोमिनेशन हमेशा से रहा है, स्टिल दैट लेगेसी इज गोइंग ऑन। एंड INSFS वेनम लेजेंड्स, यस भाई। मैच में कितने मिनट्स बाकी है? मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए ब्रो, यही टाइमिंग है मैच स्टार्ट होने की। आई डोंट नो क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, मे बी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। आपका स्ट्रीम देखकर प्रिडिक्ट करना सीख गया। अरे अरे सुमन भाई बहुत बढ़िया। Erin, it's PMSL, not PM. It's Indonesian people, Thailand people. Don't compare PMPL with. Wait for ऐसे championship. PMPL championship लैन हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं इस बारे में, ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, बाकी पता बता देंगे आपको। सो गाइस इसको अगर आपको जाना है जाके हमारा टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लो, कुछ भी ऐसा कुछ सीन होगा तो आपको बता देंगे। जाओ टेलीग्राम पे। और अभी हमारे अगर हम बात करें टेलीग्राम पे हो चुके हैं हमारे कितने, 35 मेंबर्स हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम पे। एंड अगर मैं एक बार नाम ले लेता हूँ हमारे जो जो अभी न्यूली ज्वाइंड हुए, दैट इज डॉट, विशाल राय, सात्विक भाई, TTPP, रॉबिन, देबाशीष, अनोनमस, शांतु भाई, संजय भाई, जय नाम, सुल्तान, कैलाश, सचिन, मुन्ना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग और टेलीग्राम चैनल।
इंडिया में भी बीजीएमआई क्या चला रहे मतलब? भाई आज डिनर में क्या बना है? अरे कुछ नहीं ब्रो। अगे भाई पीएमएसएल में भी बीएमजी इनवाइट टू स्लॉट है ब्रो, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। अगे भाई आपका बर्थडे कब है? बस आ जाएगा ब्रो, आपको बता देंगे। इस दफा एसटी को अच्छा मुकाबला करना पड़ेगा आई8 के साथ। यस भाई। टीम केव गॉट बैंड अंदर टीम। यस ब्रो पता है। टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं आता। टेलीग्राम जिसका अकाउंट है ज्वाइन कर सकता है ब्रो, मोस्टली आजकल सब लोग टेलीग्राम पे है ही। भाई मेरा नेम भी लिया, मैं भी ज्वाइन किया। राहुल सोनी भाई, माय गॉड, एक 2 मिनट रुको। एक मिनट रुको। बढ़िया भाई। कोई नहीं बहुत बढ़िया। भाई मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी ज्वाइन करा। राहुल सोनी भाई आपका लिया मैंने, स्टार्टिंग में ले लिया होगा। मीनवाइल का ओवरऑल रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने आई है। आज अगर वाइब्स थोड़ा सा डाउन खेल ले तो टैकल कर सकती है एसटी आज के दिन पे। आपको इतने टाइम से देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स देखकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच CR3 सूरज भाई। भाई पीएमजीसी पॉइंट से फोर्श और STN 4MB ही इस बार देखो ब्रो आगे क्या होता है। पीएमजीसी पॉइंट्स पे लीड तो है, बट सेकंड सीजन भी आपका होना है ब्रो, उसमें कितना क्या टीम कैसे खेलती है तो उसके परफॉर्मेंस भी मैटर करती है ब्रो। कोई रॉन्ग टेलीग्राम में ज्वाइन तो नहीं हुआ। देखो भाई अयोगी गेमर है, एक ही बंदा है टेलीग्राम पे अयोगी गेमर के नाम से, वो हम ही है। सर्च कर लो, सर्च में भी आ ही जाएगा अयोगी गेमर करके। ओल्ड ही लोगो आया हुआ है उसमें, न्यू लोगो हमने करा है। भाई पीएमजीसी पॉइंट से तो फोर्श और STA 4MB जाएगा ब्रो। रुक जाओ, सबर करो, थोड़ा सा सबर करो, सबर करो। ओवरऑल रैंकिंग आ रही है यही पीएमजीसी पॉइंट से, मीनवाइल आपकी स्क्रीन के सामने जो है वो बोलेंगे वैसे पीएमजीसी पॉइंट्स। बाकी सबर करो एक बार। बाकी इन टीम्स को जो बॉटम पे चल रही है उनको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी बहुत। लेट मी चेंज दी लोगो फॉर यू गेमर। गेमर योगी का लोगो। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। पहला नशा पहला गुमान प्यार है इन कर लूं क्या अपना दिल बेकरार बेकरार। तू ही बता। 36 हमारे मेंबर्स हो गए गाइस आज। कितने गाइस कर दो यार 100 यार, करवा दो। ए दिल बेकरार। चलो भाई फर्स्ट मैच फाइनली आपकी स्क्रीन के सामने। The perfect balance and equilibrium between placement points and elimination points, that is how you are going to be the consistent one and maybe come in top 5. All right, but yeah, talking about the game, here we go. The game number 1, the map of Miramal. I love to say this, the land of DMRs and snipers.
Which I 4 really teams don't see a lot of according to you are the snipers now. contenders for DMRs is winning the only SEA action Championship? remaining here. But the plane path has started from El Pozo 4 and टीमें तो is बहुत मुश्किल ending होगा all the बताना way यार. up to El Azhar. Alright game, you don't give me Maybe these flight paths where SA I can go to Championship हो Campo रहे हो Militar. Vibes, But when I see this STE, competitive game, I8 and you have an DRS. option. You have an option to drop in Currently that अगर मैं spot. choose करूँ. But for teams that usually go By towards the way, tough Chumasera, call. maybe even Minas Del Val, it'll be a little difficult to reach these spots. सोनी निगम डर गया. Agreed. And like you pointed out, Campo Milta, Maptex Hi, Esports is Indian one of the champion. team Yes, that bhai. like Bro, PM बता dropping दो. in towards that particular According area. to Skywest ST. Gaming, they also tend to go somewhere towards the northern side of La Cobre area. But for MV, they always go towards the side of भाई अभी Chumasera. पेज Bad आपका yes intention. अभी भी They follow कर have to सकते हो perform इतना really योगी good. गेम है. Raw officials this time जाएगा. sticking on the western front. No big changes coming in terms of the drop location that are coming. Everyone going to the original drop spots. TRZ might head towards the southern side. T2K Sandesh along with his teammates also going towards the southern side. Leo Esports then we have. But where is going to be the first circle? And the first circle this time is Chumasera is the epicenter. And this will attract Chumasera, a lot of Picado, teams Picado and inside Chumasera. to the zone. Already, I do see a lot of teams trying to drop Picado and in these Chumasera की respective तरफ को places. guys zone Again, centric Los shift Leones was a लेता very हुआ. difficult city to reach because of Flight the path plane के path. But according since the teams zone is मूविंग already करना स्टार्ट करने in this वाली है. particular city, I think the भसड़ teams ना which हो usually जाए. drop towards Los तीन Leones टीमें would बहुत try to इतना भी grab some क्लोज में नहीं है vehicles बट and then go क्लोज में towards है. this लॉस particular लियोनेस area जाएगी to नहीं loot जाएगी because you'll have a टीम. lot of time to loot, sit back and relax and then rotate. For the other teams, Jedi's guys, team MAB, they'll have to be quick to loot and then maybe move inside the zone. But wait a minute, DRS, Bro, what is the they status for find Nova themselves in mean? the They early have fight and chances CL in Sanchir is PMW. already down. Obviously they have यार. Already अभी कोई भी टीम आउट ही नहीं हुई Certainly, है. सब DRS टीम्स के going पास up चांस against है the plus मौका of है. Team Seal. Yesterday also Rules by same thing happened early with the elimination plus of संचिर Seal भाई को कल भी याद Esports. आ रहा है. Well, क्योंकि Seal सील का always, कुछ ना कुछ always फसाड़ tend हुआ to था. go for a split drop Hello, location yes, and Memphis that भाई. never tends to go in their favor. This time they have lost their main standout player that is going to be Sanchir. Sanchir is the one that always finds an opening in a 4v4 battle and this time losing Sanchir, things are not looking so very good for the players of Seal Esports. But talking about Seal generally, Fritz, Seal Esports have showcased time and time again good performance, especially in the map of Miramar. I still remember there was one Miramar where they got chicken dinner for themselves in week number 1, I think. But other than that, the inconsistency that is coming from the side of Seal Esports is not helping their case. But anyhow, I think they won't face any problem in the qualification for the grand finals, but they have to focus on the prize money because every single point they get or every single death they get brings them at a disadvantage. At the same time, the bank balance might not increase. Hey, that's correct. That's correct. Especially for the mid tier table teams, this will hamper them a lot if they falter out in these close games and these close fights. The decision making has to be very good from the IGLs of all of these teams. So let's see. We don't see any more drop fights. I think all of the teams are very comfortably in their usual cities. San Martin is where the side of Nasha. they loot for themselves very easily. 19 Montenegro April, being okay, bhai. capitalized by team BIT, and I love this area. It again is a very easy to loot area. Not a lot of buildings which have a lot of rooms which you need to just completely search for loot. So you can be very quick with the loot you have, and plus the vehicle availability is also great. You have a highway just going through the city, so it's a good loot for bad intentions. In terms of loot, they're looking set for the very first fight, but my question is, do they go for that early fight or do they just want to survive here? I think they should survive right now because 16 teams, 63 players are still in the lobby. This is not the point where you want to engage in a fight and try and risk your numbers because numbers do come handy, especially in the final circle where you have all the 4 players standing. You have an extra advantage onto the opponent, so you have to be very cautious in terms of the fights which you are picking. Always engage in good fights, never engage in bad fights. But talking about the plus of 4MV, I don't have too many complaints because 4MV tend to start the week on a very slow note, but by the mid of the week they start picking themselves up. And well, like Blotter always says, whenever any team try and come closer to the plus of 4MV in the overall ranking, they come back swinging, showcase a very high dominating performance. So maybe 4MV day number 2, this can be their day. Oh, let's hope so. Let's hope so. 4MV do show a good performance here. Team SITM, I think Los Leones is the city that they've chosen, and it's a good place to be. The zone supporting you. You'll have another 3 minutes to yourself before the next zone closes in, and probably it's going to be a sudden shift based on the plane path that we had. So Los Leones won't be a very far away place from the next zone too.
So SITM, they should find themselves good loot. Is Desert's main weapon a UMP with a 4x? Because I doubt it. UMP, yes, they are very powerful and potent in close range, but yes, a 4x scope on UMP in a mid range or a long range is not such a good thing. I won't hope for using it on a UMP 45, but maybe if it works for you, if you have mastered the skill, maybe it can work for you. Anything that works for you, I have no issue. As long as you are getting the knocks, you are getting the finish points, everything is okay for me. But talking about the circle, Fritz, which is your favorite circle to cast in Miramar? Hey, give me the circle completely down south towards the other island where prison is. I'd love it. I'd love it for bridge fights to happen in Miramar, because I have never seen it. I just heard it once happening in a different region where the final circle ended in water. Guys, एक चीज बताओ, अपने इंडोनेशिया पे I'd love to have some boy prison Ryzen circles को छोड़ के इंडोनेशिया रीजन पे कौन सबसे ज्यादा Welcome to fan PMPL, favorite player Fritz. है इन You are सबको going to छोड़ के? witness so many की southern fan following circles तगड़ी because है। me and Blotter, we are fed up of the southern circles. We want something in the northern sides Yuhai मत towards the बोलना, side Yuhai of Malaysia Oasis से। or ruins, because okay, let's be honest, last season PMPL Pakistan there were too many southern circles. Yes, we did witness that bridge circle towards the side of Wale Dilmar as well. So now we want something on the northern front. But maybe PUBG gods will listen to you because they never listen to me. Hey, it's the same. It's the same. I've been asking for the same thing in PMPL Pakistan. It never happened. Plus, my predictions were trash to say the least in that region too. So, not a lot of expectations from PUBG gods in a different region either. But yeah, let's see the DRS. They've got that early frag. They should set themselves up for success here. I8, another team which we talked about offline, Shadow. This is a team that has shown a little bit of improvement. But where do you see this team after this particular day? I8 is one of the team, actually the only team that had a hat trick back-to-back 3 chicken dinners in their favor in week number 2. So I8 is definitely one of the team that personally I have very high expectations. I was the one that was criticizing I8 the most in week number 1 where they were not performing at all. But yes, this team has the capability and they're not going to stop for anyone. In the grand Thank you so much, मेरे भाई, for the phone पे support. अगर आप stream को देख रहे हो, thank you so much. Microwave नहीं bro, इन बंदों को छोड़. They have that kind of a capability. Zone. All right, but here we go with the zone. It is shrinking. Thank you so much, Nile Gupta bhai. expect Thank you so another much zone for towards, the Shagun maybe के 11. Chubasara अरे Garage Shagun and के 11. Thank you so stretch much मेरे towards भाई the Nile southern Gupta भाई. side. अगर आप stream देख रहे हो, thank But you yes, so much some Shagun teams के not 11 playing, for the some phone पे teams support which भाई. could have impacted this game. Skylights Gaming, IHC, HV, But no, VNMD. They're not in this Danfoss group. is the famous one. So now, although the zone is going all the Rosemary, way I north, don't think again, Rosemary. as I said, my predictions are not on point for any region now. I think it has gone all the way north towards Power Grid, and hardship. this will now initiate a lot of battles because I don't see a lot of cover inside this zone. Pasudu zone. Miramar is all about the terrains. You have to be so very aware of the geography of this particular map because you Guys, have to हमको phone play पे around those Shagun ही little आते रहते हैं. bridges, the rocks. There is not so much 0.5, camouflage, foliage to 1.21, provide you the camouflage. But now 1.69. I8 looks like they are not ऐसे Shaguns in the आते best हैं. of the PMGC के situation time as तो इतने Nova X Shaguns has आए been हैं, सही taken बता रहा down. हूँ. मैंने तो And passbook भी thankfully his teammate print Viper नहीं is there करवाई है. to एक बार provide the print rescue करवा के mission. भी But at the देखूंगा. same time, they have Shaguns to be cautious from the pillars of 1.29, TRZ 1.2, because TRZ they are also 1.2, making the 1.3, ऐसे rotations with those 1.23, vehicles. And this is 1.21. not a मतलब place experiment नहीं होता, लोग experiment करते हैं. and Mamba इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ऐसे 5.1 मतलब 1.23 ऐसे चीजें. And Incus from the side of Elementrix, he is lobbing some grenades towards the side of raw officials, but where is the cavalry? Where are the reinforcements? Incus has to just survive here, and he is doing a great job at it because if you look at the minimap, he has some support from behind. So he has to just survive here, maybe fall back. Because Raw, they have a very, very good spot right now against Elementrix. Yes, Elementrix do have those ridges, but the compound is being occupied by Raw, and they will have an easier time resetting if one of the player gets taken down. But we do see some fights that are favoring the players of Team I8, and they are on the verge of eliminating 4M. Alter Ego Rosemary.
TRZ and IA going up against each other. Nile IA Gupta bhai, already thank you so having much. 3 आ गया elimination आपका points शगुन and 11 TRZ रुपए is का. down to a single player. Things not looking so very good for the players of TRZ and inconsistency, as I was saying, Fritz. हमारे एक और TRZ, भाई they है only यहाँ have पे one 21 problem, रुपए का that is the शगुन. नीले गुप्ता भाई, inconsistency. But थैंक यू right सो now, मच. Inkasi शगुन just ले लो, survived एक that और शगुन grenade and 21 get रुपए a का. थैंक यू Uta सो मच along with मेरे his भाई. teammates मीनवाइल rushing इनकस के towards him. एलिमेंट्रिक्स को 1v2, way यहाँ पर too much नॉक for एंड Inkasi to फिनिश deal with. शगुन He के साथ. invited the wrath of the players of Raw officials, now getting punished. Well, Elementrix lost 1 player, 3 players still surviving, and looks like Claw has a vague idea where the players could be. Elementrix looked so lost in that fight. I don't know why. One of the players was down there who could have been supported. The zone's closing. You're already inside the zone. You should have fought to safeguard your player in that area. But Raw, they just get a free frag, I'd say. A nade was tossed. The player was brought down to a very little HP. And then the push came in. I mean, you could have at least provided some cover fire from uphill. That's not the case when Elementrix. They lose a player early on, and now it will be difficult for them to survive in the final zones. On the other hand, Team Leo, they're on top of this Picardo hill, and man, it's so difficult to get players off of this position. T2K, they're making a wise decision, not fighting this this particular area out, and they're trying to rotate off. Although they're being subjected to some shots, Liquid has a great angle onto the players of T2K. They've been tagged, but for now they survive. For now, they are surviving, but they don't have the best of the position. And this grenade from the hands of Mr. Smokey can be deadly for the players of T2K on the low ground. T2K, they have to back off from the situation, but backing off is not going to be so easy. And looking at the circle, well, the players of NB Esports, they are in the best of the position as they have the northern control. The only team that can be an ugly thorn for them could be the players of Maplex Esports coming from northern front. We have Seal Esports as well, but Hello, look at the Kuldeep amount bhai, of kya hal teams chal? migrating from the southern eastern front. There is a possibility of a third party happening, not just third party, multiple fights happening on southern eastern side. The south side of the map is very, very populated with players. And let's see if the fight breaks out here. T2K, not the best driving skills, although they'll survive because there is some cover fire from Suyog. Oh, but man, T2K, they're in so much pressure. They can get third partied any time for all they know. For now, they survive. DRS also, they've got 2 more knocks. And SITM seem to be in a little bit of trouble. Sitim is always in trouble, and Dobu has been eliminated. Now Sitim is left with only 2 teams. And yesterday, I still remember, it was the players of Stalwart Esports that rained death and destruction onto the players of Sitim in the map of Erangel. And again, Sitim not having a very good start. But talking about the players of DRS, the team that you pick, this time they are already having a very good start. By the way, जो भी नए लोगों अभी जस्ट आपका पहला ही मैच स्टार्ट हुआ है, तो इट्स जस्ट अ फर्स्ट मैच. इससे पहले हमने थैंक यू सो मच वंस अगेन नीले भाई फॉर वंस अगेन फॉर द 11 रुपए का शगुन फोन पे. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो, love you 2, love you 3, love you 4. Also guys, this is the first match. ये अभी तक फर्स्ट मैच ही चल रहा है जो ऑनगोइंग आपकी स्क्रीन के सामने. घंटा भाई थोड़ा सा बचे, हार्ट to the double-edged sword. और सेकंडली गाइस ये फर्स्ट मैच ही हो रहा है. इससे पहले हमने PMSL स्ट्रीम करा था, तो PMSL के कुछ मैचेस होंगे, मिक्स हम स्ट्रीम कर रहे हैं. एंड ये स्मोकी भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. He'll be knocked out. He knew that he had some teammates down there to help him get back up, and they'll also have the access to buggy. So the vehicles is not a problem, but I think the play zone damage is enough for him to not get revived. That's unfortunate. You could have taken the risk while sitting in the buggy on the passenger seat and could have survived. But hey, this is what happens when you take unnecessary risk. He just jumped the vehicle off, and now Leo will maybe play with 2-man shot because T2K, Rick came in with a very good spray, but unfortunately was not able to get the knock. Although the job might get completed by his teammates. Suyog is moving forward. Liquid does not have a lot of HP. भाई आपका नाम आज से डूबू. ये क्या मतलब हुआ? Suyog, he's a bit paranoid. He does not want to take this fight. ये क्या मतलब हुआ दीवी जी? Now he gets shot in the back. Leo, they find themselves in a little bit of a difficult situation, but T2K is टॉप even बाई की worse. मिनी इज कांस्टेंट. डेजर्ट को नॉक दिया है. T2K down to 20 HP. He has to patch himself up. Not looking so very good. On the other side, we have the स्क्रीन के players मतलब of झुक के Esports पास going आना up पड़ेगा. against the कौन players सी of टीम कहाँ पर है, क्या Stalwart सीन है Esports, where भाई? Stalwart, they are looking good because the numbers Screen of को Sitim close are करने not दो. favoring their case. And Liquid, well, he's all by himself trying to find some relief in the situation. Yes, the smokes are down.
The soft cover is there, but is it enough? First glimpse, first bullet, and Jane takes hefty HP out of Liquid. And Liquid, what can he do? He's pretty much all by himself. Soon the blue will start catching up to him. But Jane is also in a very tricky spot. He has to go for the rescue mission, and here comes a reinforcement. The players of Leo Esports and Jane up to a 1v2 situation. He takes on one. Can he take down the second one? nice try, yaar, Jin bhai. And Leo Nice Esports try. managed to annihilate the players of T2K. It was T2K very eliminated, late. guys. The Meanwhile, support came in DRS, very late. Yes. He I8 got 4MV, to ST Liquid, is still but he alive. gets taken down, and I don't But think so कितनी they'll ही have देर the तक? Meanwhile, time to 4MV, get Liquid bad back in the game. intention. It'll be very close. Delta by A touch and knocked go situation. DE. Team Bit though, trying to fight it out against Action the players of DRS, Team क्या 4MV, बात but है I भाई? love the split 4MV has right now. Doc is making sure that even if there is a knock onto the players of Team 4MV, he has that off angle to make sure Bit cannot close in. And that's just great strategy there from Doc, and he's now trying to flank the players of Team Bit. And even Bit, they're just down to 2 players, Shoykot and Alpha. Let's see if they're even able to make it out alive from this situation. Did I tell you one more healthy rivalry is there between the players of Bad Intention and 4MV from the start of week number 2? That is when Bad Intention went against the players of 4MV, and it was not an easy fight for the players of 4MV because Bad Intention, despite being at the bottom, they showcased a very good fight, brilliant efforts. Yes, 4MV, they came on the top, Anyone and Shoykot notice gives a 4MV little bit always of the kill glimpse Bit? to the players of 4MV and loses some bye, HP. ठीक है. This grenade could have been deadly for Shoykot, but there won't be the perfect projectile. So for now, Shoykot is safe. 4MV East. Well, East is the main assaulter from the side of 4MV, Frizz. I have to tell you, he's having his own race with his own teammate Doc in terms of the MVP. They have close to 100 elimination. By the end of this week, he is going to have 100 elimination of his own. Hey, again, you have the prize for MVP, right? So Yeah. why not fight it out between yourselves and not give it to a third team? Hey, that's great. That's great. I love 4MV for this rivalry that they have in between them. But still, they're working as team. I don't see any unnecessary commitment from the players of 4MV. Yes, they're investing a little bit of utility, but they know that they'll be able to reset once they're able to take down the players of Bad Intentions, and that's just great. They're not taking any unnecessary steps. They know they're inside the zone. They don't have to force this fight, and they're just waiting for that mistake from Team Bad Intentions. As soon as they get one knock, I see the players of 4MV just collapsing onto this location. No second thought, no second thought. 4MV is the most aggressive team in the Thank lobby. you so much. And once they Thank you find so a knock much, onto mere you, bhai. they Thank you are so going much. to rush towards you. But Once somewhere, again, I once see one again, of the player of once 4MV again. has Thank you been so knocked much down. for the shagun, Easy mere bhai. revival should come in. 4MV, Crab they stream can't dekh rahe afford ho, to Neela bhai. lose a Thank you so player much at for this the point. constant 14 support. teams, 44 players still remaining in the lobby. And soon the blue will start catching up to the players of 4MV. Refuse is already ready with his vehicle to go for the rescue mission onto the 4MV fallen पहले खेल comrade. चुकी है भाई. And Alpha is Top keeping a East close पहले Dada eye Warrior में on थे. the पिछला Refuse over इन्होंने there, वो but खेला still हुआ है. smokes being deployed, providing the perfect cover required in the situation. The time is the problem now. 4MV, by now they should have realized that it's not a complete Dada team in Warriors front of पता है them. उस नाम They've सुना है? got that revival देख and लेते have 20 seconds on the clock Okay, to get Killer in the Whitey zone. knocked IC. The question is, do they rotate around the players of Team Bad Intentions, or do they want to fight it? Now I do think that the time is to just avoid this fight. You don't want any player losses in stage number 6. And let's see, 4MV, they might just get close to the compound, but probably a won't fight. No, that's not the case. 4MV, they just barge in. Team BIT will be in a little bit of trouble. Refuse is already spotted one of the players, but yeah, he gets that knock. The cover is being provided, and it's all down to the last remaining player of Bad Intentions. What can he do? The Wrath of 4MV is walking towards him. East has been taken down, but that's still not going to help the case of Alpha over there. It's still a 1v3 situation. Make it 1v4 because Apex will go for the rescue mission onto his teammates so very easily. And Dog, Bad the main intentions, aggressive player, Wipe goes in, by Team takes the final 4MV. player, and 4MV with अपना that gear bad पकड़ गया intention, ये भाई again, a आज. very bad start. आज Something ST को नहीं जाने we देने वाले always मूड hear से आई in है the game 4MV. of PUBG Mobile आपको this पता है time. ओवरऑल में #1 पे At आने least वाली for है. this event, they have been eliminated. Leo Esports on 13th spot with 3 elimination. But yet, now they have their eyes onto the players of 4MV. But from the back lines, Maplex Esports comes in and takes down one player of I8. Bonnie is still looking for some knock, but he also goes down. I thought he got run over, but it's the UMP from East which gets the job done. Third party shots being taken. What is this split from I8? I don't understand. They leave 2 of their players in compound and the 2 of the players just went all out in the open. Yes, they'll be able to get a few knocks,
but they've lost 2 as well. So 4MV, while they're on the verge of getting eliminated, I8 is also not in a very good spot. So Viper and Nova, they themselves have to move 70 meters inside the zone. They have the vehicles, but the passenger of this buggy is never safe. Never safe while you're trying to rotate on such a very, I'd say, very easy drivable terrain. You don't have a lot of ridges. This frag will be confirmed from I8, but that's about it. Let's see I8. How do they want to play on the edge of the zone? Nades are going to come in from MAB. I think this should be easy 2 frags collected for this team. But I8 did enough damage on the side of 4MV. Even the numbers of 4MV are not supporting them. They are down to only a single player. And Seal Esports, well, they have been eliminated with 0 elimination at 12th spot. Now we have 11 teams, 29 players remaining. And it is stage 6 circle that is going to approach. NB Esports, they are on the periphery of the circle. Yes, they do have good riches to play around with. But here comes the vehicle run over. Maptex Esports takes down 1 player. The last man from the side of I8. And with that, I8 with 4 elimination bets by. But DE, NB Esports, Mondo, how can he miss that shot? He has been taken down by the players of DE. NB, that should have been a double knock in my books. Hello, NB order, bro. Kya chal rahi? Kaise chal rahi Precious scrims? just turns around, delivers a double headshot onto Turu Love, and it's all down to Precious now. He has to be the savior for this team. He has 40 seconds. Very weird decision making. Just stall out in the open, leaderboard mein upar aane ke liye fast forward lag, and he just gets eliminated. Stalwarts now in a fight with DRS, and IC has already been taken down. The smokes are being thrown to facilitate the revival. Hello, Takir bhai, kaise ho? They do have a good opportunity. You are here. good. Juice You are IC doing is good. down. What's up? Nirzed is also on very little HP. And fast DRS, forward lag क्या बोल रहा है? अच्छा. Tops. बस laggy देखने को मिल रहा है, उसकी बात कर रहे हो क्या? The trade is there. ST down to 2 players. It's a 3v2 fight, and DRS, they're getting third partied as well, I think, from behind. That's why they have to fall back. They have to respect the zone too. And ST, they'll get a little bit of a breathing space, but action. He does not want any of it. He goes in, gets the second knock, makes sure that his team has enough time to get those revivals. Stalwart Esports, not an easy team to deal with or to stop. DRS coming under heavy fire from the side of Stalwart Esports, especially Action. The main guy, the assaulter from the side of Stalwart Esports, is not going to stop at any cost. Yes, they have managed to find 2 knocks onto the plus of DRS. Only a single player remaining, but right now, Action has something else to do. That is to revive his own teammates. Tops and IC, they are on a sliver of HP. He's going for the rescue mission onto Nirzed, but at the same time, they have to be very cautious. As enemy Esports, from far off angle, they heard the commotion, and now they are also chiming in and doing a perfect third party. Oh, Faze Boy has a good angle, but IC instantly. Look at this. I love the way ST just neutralizes the threats by just facing them head on. It was IC alone who went towards that ridge, made sure that the ground they gave और DRS और ST का सीन से देखा आपने क्या हुआ? Back to back knocks. Yes, Action gets taken down again. फिर से Action knock. Oh, 1v1. The second knock comes in. Maybe the third one as well. Although I think DRS, no, they just get eliminated. And Stalwart, they do lose a player, but they eliminate the thorn in their side. But still, Stalwart Esports, they have to deal with the plus of NV Esports. At the same time, there is a team, I believe it is going to be Raw Officials towards the southern side. They have the numbers, and I don't think we can take Raw Officials lightly. The way they have showcased improvement, and with that, Maptex Esports, well, they are also peppering few bullets in the direction of Zodi. Out there in the open, not a position to hold on to. He has to patch himself. Yes, Uta is there for the backup, but NB Esports, well, they have strike onto the plus of Stalwart Esports, and looks like the numbers of Stalwart Esports are not supporting the case, as one man is already down to his knees. Oh, MAB, they find themselves in a very comfortable spot. 9 defeats to their name, and just 4 teams remaining. All of these teams are looking a good contender for that chicken. Fist Boy, some shots being taken, but volley comes in from a different direction, from a different angle, gets the knock. NB suddenly down to just 1. Sek is the last one standing. Baron challenges him head on, but he goes down. Sek is able to get that knock, but look at his HP bar, not supporting at all. MAB also, although I've lost 2 players, Maptex, they might get that revival,
वेलकम They पार्टी। should go for the revival first अरे and then टॉमी take that भाई fight and easily आप eliminate भाई the team in नहीं front of them. और क्लैश ले आए भाई They DRS और ST का certainly can. NB Esports, they are susceptible to the दोनों साथ grenades that में are coming in. मैप Perfect बढ़िया grenade right on the face. Takes down both the players of NB Esports. And तीन with टीम्स that, गाइस NB अभी भी Esports, they अलाइव have है been eliminated. Now we are और down इस to only मैच के 3 बाद teams and 9 players देखो क्या remaining. होता है Raw बट officials, they ST do बहुत have the ज्यादा numbers. क्लोज आ And जाएगी look at the ओवरऑल में position of हैशटैग 1 IC. आने के He's in such a tight spot. Any player of Raw officials can easily spot him down. The buggy won't be enough to provide the necessary cover he need in the टॉकिर भाई की situation. तरफ से पार्टी Oh, he's अगर holding on आज to के his दिन पे dear हैशटैग 1 पे life. ओवरऑल पे ST आती है I can feel his heartbeats right now. Hey, Raw, they do have a good angle, but I don't think so. You'll expect a player behind such perfectly parked buggy. He is not giving any information. He's not moving an inch. And the fights are going to come around him because he is around the center of the zone. NB though, look at the position they have. They have to fight it out against MAB, and Stalwart can just play the spoil sport in this fight. IC needs to find the perfect moment to strike and maybe eye for the chicken as well. We've seen this. We've seen this a lot in South Asia. Solo Guys- players getting those chickens. guys And now let's see if IC is the one to do it. Claw though, he's trying to get an angle. Volley, the flank from him is great. But I think Claw has an idea about it now. He saw the buggy. He's expecting a player nearby. One of the players from Team Raw is in a very सुशांत aggressive कशेरी भाई position and, I डेट think इज he's feeding आईसी information. Yes. सुशांत कशेरी भाई Yeta उसकी Yuta- चैट्स को Yeta डिलीट करने Uta. का ट्राई हो रहा है अगर Interesting स्टिल name, but कंटिन्यू he is टाइटन in a भाई very स्टे इन aggressive लिमिट position. प्लीज He's feeding information to his teammates. मैंने Let's नोटिस see कर लिया what है जो आपने decision बोला making है do the players of Team Raw officials आगे ऐसा make. नहीं होगा Raw officials, their climb in the leaderboard is so very By the impressive. way, but right now, 668 Yeta Uta is in a लोग tricky अभी spot स्ट्रीम as को two देख रहे हो. If players you're new are to the already stream, make sure to like the approaching video, him. subscribe to the channel. Baron, Also, along with guys, his join teammate, our Telegram one channel. grenade आपकी and स्क्रीन के Yeta सामने आ रहा Uta है is जहाँ done पे and e-sports dusted, but related Baron, चीजें आपको does he बहुत has अर्ली any स्टेज पे idea? पता No, लग he जाएगी. doesn't have Meanwhile, any I see idea the about the single guy. position of Yeta Uta. This can be the game changer for the players of Raw official and Claw. Well, first glimpse, 4v4 first bullet takes on HP from the side of Baron. Now Baron has a little bit of the ridge. Ah, but I look see, at I IC. see, I see, I IC see, has been I see, spotted I'm on and he big, goes yeah, down. I see. Claw. Well, that was bound to happen. That was bound to happen. And Stalwart Esports, they have been eliminated at 3rd rank with 7 eliminations. I wonder, Maptex has such good zone control here. How is the AI giving the players of Team Raw the better odds in this favor? I think because of the position. They have high ridges as compared to Team MAB who are on the lower terrain. That could be a factor. But yes, the players of Team Raw, they are also slowly moving inside the zone. Let's see. MAB, I don't see nades being exchanged. So I think both of these teams are out of important utility. Volley just has 2 nades, yes. Oh, but 7 nades? What? MAB, they should be tossing. Baron should be tossing some nades left and right. But they're not. And I wonder why. I really wonder why. Raw, as soon as the zone shrinks in, they'll have that perfect ground advantage. And let's see how do they utilize it. That's the main question. Yeta Uta still has an opportunity. I don't think so. Leo is aware about this player's position. But yeah, here we go with some nades. Leo tosses one out. That's the second one's a smoke just to create a little bit of ruse. He achieves a little bit of damage, but not significant enough to Raw get का the knock. चिकन देखो भाई देखो. The knock is not there. And talking about the resources, Yeta Uta has nothing. No first aid, no bandages, nothing in his hand. Even Zodi is having only a मैप ने बड़ी first प्यारी aid to एंट्री work डाली. मैप तो around उनका with. फेवर हुआ. मैप Claw एजिस having से just a single पूरा एक Molotov. साइड से Yes, the resources कस्टडी are मिला not है. in the favor of पूरा Raw clear officials. करते On हैं. the other side, हैशटैग like तो you आगे. pointed, Maptex आगे Esports. कैसे Well, एग्जीक्यूशन their रहता है. bags are 12 pretty much एलिमिनेशंस loaded. मैम The निकाल barrage चुकी. of एक फाइट grenades जो is निकाला already था उनका coming in बहुत from the side of इंपॉर्टेंट. Maptex Esports. एनबी के साथ The था. minute they find an opening, they will rush towards the player to get the confirmation. This is so crucial for the players of Maptex Esports because yesterday they were sitting on the 2nd spot. ओ अगला जोन Now तो खुद today क्लोज they इन होगा want ना. to यस अगला जोन तो reclaim क्लोज इन the होगा. throne and come on the top spot. And this chicken dinner can एजिस से टीम्स को definitely आगे मूव इन करना give पड़ेगा. them the points which they need right now. Even the weaponry, in terms of the weaponry, Maptex Esports are having the big guns in their hands, Kese and Valley. स्टार्ट कर दिया. Oh, and the weapons are perfect Law, for these close range fights. Ditch. Even the UMP now will have a lot of impact because of the Okay, firing Baron rate. knocked. But here we go. Finished. Baron gets the first knock. Kangsa makes a wrong move, gets punished for it. And Baron, he's on a domination now. Leo even stands up. Now wants to take that fight. Yeta Uta. Oh, this is an important battle. This is an important duel and he wins it out without being traded. And now Nice. Leo is Hoy, forced hoy, out. hoy, hoy, Leo hoy, hoy. goes down too. Yeta Uta has done his job. Now it's for Team Raw to salvage the situation, to salvage the 2v2 from this position. That of Zordi is Valley. trying to provide some cover fire. Claw will confirm that frag onto Baron.
Yetauta also goes down, so no chances of a revival. But now MAB is fighting. KSA is fighting for that revival against Claw. And the revive might just come in because the cover fire is being provided from the left angle. And this is the final zone. The zone will shrink in. This molly really can change things quite a bit if it lands perfectly. But I think it landed a little bit short. MAB, they get their man up and now have that advantage. The revival should have been denied at any cost. Yes, Claude tried his level best with that Molotov, but yes, like you mentioned, the perfect projectile was missing. So the numbers are in the favor of Map. Esports and Valley with the flick weapon takes on Zordi. No, Zordi is still there. Nice, On a sliver Map. of HP takes on the other player, Claw, and takes Zordi as well down. Nice. Chicken dinner by Team Map. OP in the chat कर दो. NT to Raw, NT to ST, NT to DRS, NT to NB, NT to every team guys. बहुत बढ़िया था अभी का मैच. मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारे सामने ओवरऑल स्टैंडिंग्स आई तो हमको पता लगे कि कितने कितने डिफरेंसेस अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं गाइस. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो तो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मैप के लिए ओपन द चैट कर देना. 16 एलिमिनेशन का चिकन डिनर, टोटल 26 पॉइंट, ओवरऑल रैंकिंग में 8 रैंक पे आ चुके हैं. मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो गाइस ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगी. जाओ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो. जाओ आज 100 मेंबर्स करा दो, मजा आ जाएगा. मतलब मेंबर्स बोले तो आज 100 वो करवा दो हमारे चैनल पे, हमारी 100 की फैमिली करवा दो. अगर अभी हम देखें करंटली इट्स नियर अबाउट 40 टच होने वाला है, तो 40 टच करवा दो. अभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करा है रिसेंटली पे बात करें, नॉट रिक्वायर्ड. अनिश भाई ने करा है, डॉट विशाल भाई नाम ले चुका हूँ, सात्विक भाई, टीटी, रॉबिन, दीप भाई, अनोनमस, सांतु, संजया, जयनाम, सुल्तान, कैलाश, सचिन, मुन्ना, रोहित, स्वापनील, बिश्नोई, घेराई, अंशुल, विवेक थापा, ओजस, राहुल सोनी, अभी, धीरज, शुभ, आई एम पायरेट, माधव, विशाल, दीपक सोनी, जोशी, आदित्य, जेरोक्स, प्रणय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और डिस्कॉर्ड, सॉरी डिस्कॉर्ड बोल रहा हूँ बार बार, टेलीग्राम, तो ये भी ज्वाइन कर लो एक बार. अगे भाई मैंने जियो 5G यूज किया हूँ 1 मंथ और सी क्या है फुल एंजॉय. अरे फ्री का यूज कर रहे हो. मैं आप लोगों को ये बोल रहा था, व्हाट इज द पॉइंट्स टेबल लाइक, पॉइंट्स टेबल ओवरऑल पॉइंट्स कितना कितना गैप कम हुआ है ओवरऑल लाइक वाइब्स एंड एसटी का चल रहा है ना ओवरऑल पे. #1 एंड #2 से why don't they left frozen play, why don't they let play. जोन बनता नहीं, बनाना पड़ता है समटाइम्स. सही बात है एमके भाई, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया बड़ी बात बोल दी आपने. कुछ टेलीग्राम लिंक निर्मल भाई, टेलीग्राम लिंक ये है, जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम लिंक. लो भाई निर्मल भाई कर लो, ज्वाइन कर लो जल्दी. आज 100 करवाने हमको, 100 करवा दो, मजा आ जाएगा. ऑर्डर पहले ही कंपाउंड पे घुस गया और दाकुआ नॉक फिनिश कर गया. कहाँ से बात कर रहे हो, से भी पे कर सकते? आई डोंट थिंक ब्रो, वहां से नहीं हो सकता. 100 बैट हारा, अब जीपे करो. अरे अरे क्या चल रहा है भाई, तुम्हारा अपना ही चला हुआ है चैट के अंदर भाई. मैं वही तो देख गाइस. ऑडियंस मैथ लगाओ, गणित कितना डिफरेंस बचा है ओवरऑल बताओ. वाइब्स इस मैच से 4 पॉइंट लेके गई है एंड स्टॉलवर्ड 12 पॉइंट. अब कितना डिफरेंस बचा है? नेक्स्ट मैच गलत नहीं हो तो शैनॉक का है कि मेरा मारा है? तो मेरा मारे शैनॉक, मेरा मार इरेंगल. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है.
एसटी मिरेकल वाइव्स से कितने डिफरेंस रहा वही। ओके गाइस, वाइव्स के 477 है। मीनवाइल गाइस इस वीक की रैंकिंग की बात करें 73 पॉइंट है स्टॉलवर्ड के। मैप के गाइस बैक टू बैक कल के मोमेंटम जो पकड़ा है उसको कैरी आउट करा है। 72 पॉइंट मैब एंड T2 के esports 43, डाडा इज 40, NB 39, ASL 26, Skylights 24, DRS 23, Raw 22, IA 22। तो दीज आर द टीम्स एंड मिरेकल वाइब्स की बात करें सिर्फ 22 पॉइंट्स यहाँ पर अर्न करे उन्होंने लास्ट अपने बात करें 5 मैचेस के अंदर। सील 20, IHC 19, लियो 19, एलिमेंट्रिक 16, देन कुन्यू TRZ 15, SITM 15, हाई वोल्टेज 14, वैनम DE आपकी है 12 एंड बैड इंटेंशन 7 पॉइंट्स। बाय द वे गाइस सेकंड मैच आपका शैनॉक रहने वाला है जो कि काफी अनप्रिडिक्टेबल मैच है। इसकी स्टार्टिंग मत मिस करना, थोड़ी देर के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा मैच आपका। मैं भी पागल हूं पर दीवाना नहीं। ओके भाई, ST अनबीटेबल गाइस। वाइब्स के 477 एंड ST के 469 पॉइंट है। 7-8 पॉइंट का गैप है इस मैच के बाद। अगर ST ये मैच अच्छा खेल गई, 9 पॉइंट ज्यादा ले लिए इस मैच पे, तो स्टॉलवर्ड इस मैच के बाद #1 पोजीशन ओवरऑल पे आने वाली है। वाइव्स एंड ST का कंपटीशन चल रहा है बहुत तगड़े वाला। Actually, Raw have only one good player, Hadami. That's why they are not able to fight. Okay, मिलके भाई हिस्ट रोने वाला है भाई, टॉप आ रहा है पीछे से MVP बनने। अरे अरे अरे, कोई कोई कैसे नहीं रोने वाला ब्रो, चिल। वांग दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ओहो हो। भाई केव का क्या सीन है, हो चुकी है गाइस डिस्क्वालीफाई। अली भाई और कैसा लग रहा है डाउनफॉल? अरे 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 अबे उस बात को आई गेस 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, बट एमचिन भाई वो बात नहीं भूले हैं। सो गाइस हियर वी गो, मैच नंबर 2 ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। 9 पॉइंट का डिफरेंस ओवरऑल रैंकिंग पे। वीक 3 आज ST आ सकती है 9 पॉइंट का ओवरऑल डिफरेंस। Especially the central zones, they are just disgusting to play. So boot camp is my favorite position. We'll have to see if this is the most liked position for other players as well or not. But talking about the first circle, where do you think the first circle should go, or which circle you want to see, Fritz? Because I want a camp at first circle which has not been granted even for once. Okay. What about you? I'd like to see a circle centering around that region of Painan. It's so difficult for the IGLs to make a call on which island to go because there are 3 different islands on this map and they are connected through bridges. But you know, it's just a death sentence if you try to use a bridge, even with vehicles. So I'd love to see. तो गाइस ये बफर हो रहा है 2x किया था। And 4MV will have that upper hand if it does. But But other than that, look at the other teams, they're looting on such extremities. This is for the very first time I see यार this ISC के view पास drops, कंट्रोल बहुत अच्छा है यार, इनकी Shadow. बातचीत हो रखी है। Actually, Senok offers so much loot, and these little houses offer only so much for a single individual. That is the reason we tend to see so much split coming in from all the teams. That has been the recent meta. All the teams go for the small little compounds, loot for themselves, and then regroup. And in doing so, sometimes they tend to lose few of the players, especially the players of IHC. They have to be a bit cautious. And Crazy zone. Potential close Crazy fight. zone है, I don't crazy think zone. we can see any fight right now, but this can be a camp alpha circle. You are lucky for me, I think. all right, let's see. एलिमेंट्रिक्स के बंदे अगर जल्दी मूव ना करें उनकी फाइट हो सकती है on the mini map अर्ली स्टेज पे। completely
just जहाँ पे engulfing फ्रैग the है whole map. वहाँ पे maybe I've never seen such split drops from a region before. IHC का But hey, देखते हो this होल्ड क्या रहता will है, एंट्रीज क्या this रहती will है, help us get some किस fights तरीके early से on as कंट्रोल well, करती है, because you'll उनके have पास मेजर players, एंट्री individual duels happening all around the map, पीछे से टीम and I'm T2K है, excited for it. I'm just excited for it. NB Esports, one of the few teams who decided to जालिम stick सर का together. बहुत ज्यादा They जालिम dropped भाई, in Paradise Resort. They'll have free loot, free real estate to cover. Although the small thing that did not go in their favor is the first zone. It'll not matter a lot because again, 60 meters is not something you should be worried about. But look at this NB. I love this. They're so quick on their loot that with 40 seconds remaining, I see them with decent loot and they've already started to rotate. You know which is the happiest team in the lobby right now? It is NB Esports. Guess why? Because I8 is not in the picture. They are sitting out, so that means there is no early fight in the city of Paradise Resort. And NB Esports, they know how to go for the resources, very quick loot coming in because they have the experience. Every single time drop collision happening, you have to go for the loot so very fast because if you don't have a gun, your enemy is definitely going to have one. And NB Sports already moving ahead in the circle. But like you said, boot camp. Okay, boot camp, your favorite drop location, I hate the most. That means you're a very good player. You're a very good aggressive PUBG player, Fritz. This I didn't know. I love high tier loot spots. I don't care about the number of players dropping there. I just want to have the best possible loot. Condition being I survive. If I survive, I like to have the best loot. I cannot play with level 1 West throughout the whole game. So that's why I prefer boot camp. अपने इंडिया में बूट कैंप किसका ड्रॉप है? जाओ इंस्टाग्राम पे जाके योगी गेमर नाम का एक बंदा होगा, उसकी प्रोफाइल को जरूर चेक करना। प्रोफाइल में आपको सारे ड्रॉप्स मिल जाएंगे, कौन कौन सी टीम कहाँ पर कैसे उतरती है, तो जाके देखना, बहुत जॉड बंदा है योगी गेमर इंस्टाग्राम। Teams that drop in this location to climb up that hill. If someone is watching you, someone is keeping an eye on you. But for now, I think they're safe. There's no one on that particular hill. For now they are safe, but if they head little towards the northern side, they might face the players of Elementrix Esports because the Elementrix, they are around the city of Ruins, so they have to be a bit cautious. Again, we have the players of 4MV. They dropped in the city of Painan, going for a very early rotation, and we can see the players of D Venom in the close proximity. Elementrix, if they get to know 4MV is rotating, I'm 100% sure they're भाई going to गाइस एक बार engage in कमेंट this करके fight. They're जरूर not बताना going to back कि off. But बूट somewhere कैंप पे else we कौन have उतरता है first इंडिया blood में, बताओ। situation देखता हूँ आप amongst में the से players of कितने IHC सारे लोग सही Godless with the आंसर देते हैं। DPS मैं takes on आंसर Mondo मेरे को and पता takes है the राइट, first blood. NB कि Esports, हमने not a देख good रखा है सारे start. सिनेरियो। Not at all. Not at all. Losing players early on in this little map of Sanok where you can just rule with better number of players. That's not the best possible start at NB Esports. They've been crippled down a little bit. मेरी तरफ से नहीं। God. They have been crippled down a bit. Not at all. Not at all. Losing players early on in this little map of Sanok where you can just rule with better number of. भाई स्ट्रीम अटक गई। लॉल। यहाँ पे सब जगह अटक गई, यहाँ तो वॉइस भी नहीं है। क्या हो रहा है गाइस, ये क्यों सब जगह अटक गई यार? फाइल में देखो, विल भी राइट बैक हो गया। आई थिंक रीमैच हो गया, आई गेस गाइस, आई थिंक रीमैच हो चुका है। Towards the state of dogs. रीमैच हो गया गाइस। Okay, what do you think Bad Intention should do in this particular game, Fritz? Because nothing is working for them. Oh, Bad Intention. They've tried not to take fights, I think, and that hasn't worked out for them. So maybe now विल भी राइट बैक नहीं लगाया स्क्रीन के सामने। So maybe now the players of team Bit can try to do something else. Maybe try to take some early fights, try to target a team which is a little bit lower than the board अलादीन भाई बोल रहे position. ओजी So they can try उतरती है and maybe इंडिया take a fight पे against another बूट team. कैंप के And let's ऊपर, see ठीक if है that helps them win गाइस। some और money कोई and आंसर maybe देना lose their चाहेगा? confidence. Yes, but Bad Intention. Okay, let's be very ओजी honest. जय पटेल भाई ओजी बोल रहे, पीडी भाई ओजी The very और first day टीएफ of week number 2, I believe it was, when Bad Intention, टीम they went एनिग्मा against the फॉरएवर plus एंड of ओजी 4MV, ओके not just 4MV, they टीम went ओजी against the plus of Starlet Esports in one ओजी of the ओजी games. ओजी So they एरिन were भाई looking टीम so एक्स very पाक ड्रॉप confident, and कैंप I was ओके the one that एनिग्मा appreciated the टीम एनिग्मा फॉरएवर efforts going मार्केटिंग up ओपी against the strongest team in the lobby and टीएफ ओजी। bringing their numbers down. और It's not गाइस so easy, और especially when और you're बताओ। when you're one बाय of द the वे गाइस teams मैच sitting on the रीस्टार्ट bottom. हो गया है। But Bad थैंक्स फॉर Intention, I वॉच, believe लाइक they वो should नहीं आ रहा बस। go back to the drawing board, drop somewhere on the extreme of the map. Yes, Docks is a good drop location. Go for the late rotation.
have the resources, go for the heal battle. Okay, heal battle meta is out of the picture, but go for the late rotation. You don't have to engage in a fight. Yesterday they were trying to do the same. They were trying to survive. I believe it was top 6. They've made it in the top 6 in every game, not in every game, few games. So if they keep doing so, I think they'll get the confidence, and maybe they'll get the elimination points as well, but maybe not the slot for the grand finals. all right. So slot for the grand finals is चैमिन का तो going to ड्रॉप be a चेंज हो गया था ना, challenge for कैंप पे जा रही है ना all these चैमिन teams, तो. especially for the bottom two. Man, it's going to be so difficult for them to get in top 16. Plus, it's just not about them. The other teams also have to perform a little bit bad so that they're able to climb up. It's not just now them performing good. So that's another situation that is out of their control and will make an impact on the leaderboard. So let's see if some other team drops in terms of the game that they're playing. But yeah, IHC, a good start to the game. They've already gotten an elimination. 4MV, still with 4 players standing, they went for the early rotation. Hope so that they do find a good spot in the next zone. Let's hope so. We can only hope and pray all these teams perform really best, put their प्राइस best foot स्क्रीन रुक forward. गई है. नहीं मेरे भाई, But रीस्टार्ट हो talking गया about मैच since we are रीस्टार्ट having हुआ a है. dull अभी moment मैच in the रीस्टार्ट game, होगा शैनॉक का फिर what do से. you have to say about QBZ in Sanok? Do you like the weapon? सारी I स्ट्रीम hate जो है it. वो I रीस्टार्ट hate हो गई. it. मैं दिखाऊंगा आपको. Not at all. The M4 is such a stable. ये यहाँ पे इन्होंने वो स्क्रीन लगाई है, विल बी राइट बैक वाली. एनपी में यहाँ पे लगी होगी वी विल बी राइट बैक. उन्होंने ये मंगोलिया में भी гарч байгаа гэсэн эндээс амжилтгүй болоо. यहाँ स्टार्ट हो गया मैच. हेलो, Refuse тун багцтай каунтер тавьсан. Дөө Критатер यहाँ तो मैच ऑनगोइंग है. Refuse-ийг ферхад унгаагаад өгч байгаа юм байна. ये मंगोलियन पे है भाई. Venom versus for Miracle Vibes Sport-ийн дайныг хүлээж авч байна. За Vibes-аас गाइस क्या हो रहा है? ये कहीं स्ट्रीम चल रही है, कहीं पे चल ही नहीं रही. Нэг нь revive-ийг дарсан ферхад түгэлтгээ дөөгтөө тарах нь. За тулж орж ирж байгаа гэдэг мэдээлэл дээр шууд хоошин руу нэгээ дээлийг батсан байгаа. За энэ эвгүй фраг явчлаа да. समझ ही नहीं आ रहा. मैच रीस्टार्ट हुआ है. मंगोलिया में चल रहा है भाई. За хамаагүй ойртож болохгүй гэсэн Дүүки. अभी आपके सामने मैंने एनपी की स्ट्रीम को मैंने इंग्लिश खोला, नहीं चल रहा था. Refuse дээр киллийг тооцоолж байгаа юм байна. Өөрийнхөө үнэ нийлжлээ. Тэр баруун пик дээр भाई बीटी पे है. वाइब्स बीटी पे है. Хоёр тамирчинтай байгаа Дүүк. Амар фраг болон шидсэндээ 2 долларч дээр Dog the top fragger, currently the top fragger versus Venom for most dangerous weapon. Faraad क्या आते हैं? Most dangerous weapon guys, and here we go. 4MV early eliminations once again with a 0 point. ST को 9 point लेने हैं अब. За Blue Zone-ын шахалтын 70% бараг ороод ирсэн. Skylight байд Intense гэсэн багуудын Blue Zone-ын damage travel-ыг хийж байгаа юм байна. За ингэснээр одоогийн байдлаар Venom Dice-ийн хувьд бол бүгд босоод ирлээ. Full squad-аараа 4 киллийг тооцолцсон явж байгаа. Stalmart-ийн хувьд бас 2 киллтэй. NB 2 киллтэй. Гэхдээ ганцаархнаа үлдсэн юм байна. भाई यहाँ तो स्ट्रीम चल रहा है और जगह रीस्टार्ट हो रहा है. मेरे को वो चीज समझ नहीं आई कि हो तो हो क्या रहा है भाई. अरे लास्ट बंदा है. UAP дээрээс дундын зай спрей гайхалтай үсэн. Krita аваа явуулсан. Venom-ди 3 тоглож үлдсэн байгаа. За ийм сул киллүүдийг л өгмөрг байгаа юм да. Top, Sanchir, knock, Soulless knock, Nuzed, Seal के 2 प्लेयर नॉक हुए, मतलब एक ही बंदा बचा है. Valley, ESL Cherry. Maptex-ын байлаад гисэн Zordi дээр нокдаун өгсөн. Бас Abrob Slayer дээр өгөөд амжиж байна. За Yeta утаа сейф зоолгоос Ханза ногцсон байгаа. Домыг Ферхат хоёрын хувьд фронт дээр хонор Relay хамгаалтанд байгаа. Faraad फिनिश निकाला. रॉ का टॉप, संचिर का फिनिश निकाला. Seal 2 man. За топ нокдаун авсан. Байд Intention
Ruthless aggressive war is Klavi on. और कितने मैच बाकी? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ब्रो, ये तो दूसरा मैच ongoing है, इसके बाद 3 मैचेस और बचेंगे. Blue zone-оос дөнгөж гарч ирж байна. За тэд болгоомжтой байхгүй бол багт нокдаун бол эрсдэлтэй маш харанхуй орж ирж байгаа шүү дээ. Alpha Rules by Astra. Rules Astra Delta Astra kill point. Knockdown finish. Entry ने यहाँ पे फ्रैग निकाला है रूल्स भाई का ट्रेड के अंदर. बैट ने यहाँ पे रॉ फिनिश जो है यहाँ पे फिनिश कंफर्म करा है रॉ के प्लेयर का. एसटी 4 एलिमिनेशंस एंड वेनम यहाँ पे 5 एलिमिनेशन 4 उन्होंने निकाले थे वाइब्स के. एक्शन एक और डुमी को नॉक करा है यहाँ पे, अगर हम गलत नहीं है तो यहाँ पे. За ингэхдээ Ruthless Aggressive Warriors дээр дахиад нэг оног тооцоолсон байгаа. Гэтэ solo тамирчин байгааг бид хэрэгтэй. Jante Juicy Orange дээр нокыг тооцоолж байна. Rules удсан байгаа. Killer White-ийн хүнээ дарж байгаа хугацаа нь गाइस हमने एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं सारी लैंग्वेज में स्ट्रीम देखने का. хоёр долчиг аваа явлаа. ओ भाई, ओ NB SG वाइप कर दी क्या? मल्टीपल नॉक्स एंड फिनिशेस. Fist boy. Үлдсэн ч гэсэн Fist boy. Ямар өндөр импактаа тоглож болдог вэ гэдгийг бол бидэнд үзүүлж чадчихна. Volley, explode damage дээр knockdown болсон. За Firhad Volley гэлмэт болгож байгаа юм байна. Mikedi Baron дээр Leo унчлаа. Alpha Mikedi хоёр тоглож байгаа. Хоёр knockdown-ыг Baptex дээр хийгээд амжсан. Yeta Otta бад эдэж Mikedi дээр унгаагаад амжсан бол Alpha Kise дээр килийг тооцоолсоор Maptex Esport нэг гэлтэй 14 дээр тоглолтыг бол орхисон. Одоогийн байдлаар 13 тимийн 38 тамирчин үлдсэн байгаа. Blue Zone-ы гадна Seal, Skylight, NB, Abrob Slayer гэсэн багууд бол орж ирж байгаа юм байна. За зооны центрийн бүсийг авсан сквадаар HP буюу High Voltage, Propin харагдаад байна. फरहाद एक और फिनिश निकाला. 6 एलिमिनेशन की टीम निकाल चुकी है. कैंप अल्फा वर्ड जोन हाई वोल्टेज का. हाय हाय स्प्लिट देख के याद आ गया कुछ यार. गाइस क्या याद आ रहा है? स्प्लिट देखो हाई वोल्टेज का. ठीक है भाई, गलती होगी भाइयों, गलती होगी. भाई ये मजाक हो रहा है क्या? ये मजाक हो रहा है क्या भाई? हेलो, यहाँ पे विल बी राइट बैक है अभी भी. Shocker to me. That was like a shocker because this team hasn't been performing and they Guys, eliminated क्या the चल team रहा that है was ये? in good form, that was in good momentum. Maptex was eliminated by them and they had another frag to their name. So they did they did get themselves in a good spot. Guys, क्या Now, चल रहा है were they ये? able to close it or क्या not, चल रहा है we'll ये? get to know that very shortly. DRS also not inside the zone, but let's see if DRS is able to make it in and maybe get that chicken. DRS can do so because Senok, like I said, is their strongest map. But since the players of bad intention, they are out भाई of the मुझे समझ dungeons. नहीं आ रहा They मैं took क्या down the बोलूं भाई. strongest team and stopped the players Guys, of Maplex one Esports word. from getting that भाई hat-trick in their favor. स्ट्रीम ही स्विच So कर ही yes, जा bad रहा हूँ मैं. intention. I've never हर said एक they स्ट्रीम are देख a रहा हूँ bad कहीं कहीं team. पे तो They have आशा है कि कहीं कुछ showcased चल रहा signs हो. of aggression, the way they pick up the individual fights, be it 4MB or the players of Stalwart Esports, and be the players of Maplex Esports. Is मैं गाइस रुको एक जगह और राउंड मार लूं. एक बार फिर से राउंड मार लेते शायद हमसे गलती हो गई कुछ. एक बार फिर से 2 मिनट. यहाँ तो विल बी राइट बैक है. रुक जाओ. मंगोलिया में भाई एक ही कास्टर है. गाइस यहाँ भी स्क्रीन आ गई है. बताओ भाई साहब क्या सीन है. भाई साहब 2 मिनट रुको. हम इंग्लिश देख रहे थे ना, अब इंग्लिश भी नहीं दिख रहा मेरे को. For the frag oriented, going for the elimination oriented game, they will find themselves at a positive note after the game ends, because I have seen this a lot in the map of Sanhok. Teams end up second, they get those 6 points, but in terms of eliminations, what, they have 2 or 3 eliminations to their name. That gives them 8 or 9 points, whereas
a team getting 6-7 elimination points and just getting 1 or 2 position points have the same and they're positioned higher. So they will find themselves, they will be rewarded for the eliminations that they are having, and especially coming from a team that is not on the top of the leaderboard, that will boost their confidence. I agree, totally 100% agreed. And like I said, this season the MVP is not any player, is the point structure, because so many teams now they are struggling because of the elimination points. The priority in the elimination guys, ये मत points. बोलना कि मैच Yes, खत्म हो you चुका need है, the please placement points, please but please elimination please points ये are मत बोलना कि on हमने the मैच देखा ही नहीं और मैच on खत्म the हो गया. priority list. You have to get the elimination points, even if you are coming at the 3rd or 4th place in the game with 2 or 3 elimination or 0 elimination. It is not going to favor your case. On the other side, a team sitting on the 6th or 7th spot getting 10 elimination, maybe they'll be ahead of you, just like you pointed out. Correct. And for the other teams that did not play that map of Sandhawk, I'd like to see how they just analyze the game that these teams are playing right now. It has already been, I think, week number 3 is where we are, and they've already, I think so, have Guys, an I idea got the about info. their Match opponents. खत्म हो So चुका for है. now, the teams Match is that are over, guys. positioned Match is over. from Match is over. maybe Overall 12 to standings 28 भी आ चुकी है. Match is over. can Chicken dinner start हुआ dropping है. on different teams, and they can get some frags early on. Chicken guys try high to voltage capitalize, का ही because हुआ what है. I saw on the map T2 of के Sandhawk आपकी is high है. there were a lot of Second teams that went for split drops. second You position can try पे. to drop on one single player, just on Tyler's Gaming hashtag just 3 पे. in single compound and try to take that fight 4v1. So that is something I'd like to see from the bottom Try position Mongolian teams, feed. so एक that बार they're able to Mongolian get feed try करता हूँ guys. Mongolian feed है. भाई Mongolian feed चल रही है भाई. Hello. мэдээллийг ингээд хүргэсэн шүү. За тоглолт руугаа орцгоё. 6 тимээ 16 тамирчин үлдсэн байгаа. Одоогийн байдлаар D-Dice guys өгсч гарч high voltage-тэй байлдах юм байна. За цаана бол T2K үлдэхгүй дөрүүлээ амьд байгаа бол удаас нь хайраатай тоглож байна уу та. За тооны гадна HP Assassin нокдаун болчихж байгаа байна. D-Dice guys on top, Assassin дээр хилийг тооцолсон. За энэ удаагийн тоглолтыг бүр айгүй хэцүү үзлээ. गाइस समझ नहीं आ रहा मंगोलिया की फीड में चल रहा है. वहाँ नहीं चल रहा है. भाई मैं थोड़ा स्ट्रीम में कंफ्यूज हुआ मेरे भाई. Killer White-ийн frag. स्ट्रीम में नहीं चल रही है. Knockdown-ыг тооцолсон entry frag цаана байгаа. Гэтэ Killer White-ийн одоогийн эзэлсэн байгаа position дээр entry frag-ыг бол яг хаашаа траацдаг бол харж чадаагүй юм байна. За Skylight-аас нэм. By the way guys, chicken. Daar is all just Монгол squad үлдээг юм шүү. За 6 дахь stage явж байгаа төсөн 40 секундын тоглох зонтой нийлэх юм байна. नहीं डेल्टा और किलर वाइट ही है. За энэ яг Stalwart одоогийн зарлагдсан safe zone-ы зүүн бүсээс тавилж орж ирж байгаа. Train to kill-т отон тоглолт хийлгэсэн юм байна л да. Бэж болох юм. За Darius Soldiers. Юу? За Whitey. За тун харамсалтай болчихлоо. Killer Whitey. Blue Zone-д нокдаун болчлоо. Жижигхэн хадан дээгүүр STL live है. नहीं मेरे भाई STL live है. За аврах боломжгүй Blue Zone-ы гадна бол нокдаун болсон тоглогч. Одоогийн байдлаар 7 дахь stage. Second भी bro ऐसे तो स्ट्रीम में स्विच करते रहेंगे मैच का मजा ही नहीं आएगा. वैसे मैच का मजा वैसे खराब हो चुका. पता ही नहीं लग रहा है कि गेम पे हो रहा क्या. टाइम पे बीच में फ्लो बन गया था, उसके बाद फिर से टूट गया. कौन सी टीम्स लाइव वो भी नहीं पता क्योंकि rankings भी नहीं आ रही. ये टीम тэдний яг landing location дээр зон татсан байна. За үүн дээр Сэтэн битийн үндсэл гэж би бодсон. Сэтэн спорт байсан бол HP гэднэт болгоод одоогийн байдлаар зооны центрийн бүс дээр хамгаалаад тоглох юм байна шүү дээ. अरे मलिक भाई के कैंप में तो घंटे है. Зугаатар тикэлт хэлмэт болсон. Malik भाई के कैंप में घंटे भाई है. 4 eliminationтэй 5 सही बात है, मैंने भी ध्यान दिया. थैंक यू सो मच सुशांत भाई. Jane True Love дээр nade хийлийг тооцолсон. 20 баруун operation дээр on top орж rig дээр нокдаун гэсэн Санчи on top дээр trade айхалтай байсан. Stairs
Spray дээрээс hit mark-ыг авсан бол chain дээр зөрүүлээд slayer knockdown хөгжиж байгаа юм байна. За саанд PMGC भी यहाँ zone end हुआ है. D-Dice guys 2 гэлтэй болсон залуутаа high ground-аас нь HP-гээ тарилтыг гэсэн сүйг ганцаар үлдсэн. За Angster 3 тимээ 5 долж үлдсэн байгаа. High voltage 3 गैंटे भाई ने पूरा हैक कर लिया भाई सीन. गैंटे भाई खेल रहे मलिक भाई की आईडी से क्यों? गैंटे भाई प्लेइंग फ्रॉम मलिक नहीं प्रवीण भाई. अरे एचपी में सारे में गैंटे भाई का पीओवी आ रहा है. Heal байхгүй байна. Чесолтан цустай. गैंटे भाई खेल रहे भाई एचपी की आईडी से. गैंटे भाई गाइस इन द लीग गैंटे भाई इज प्लेइंग फ्रॉम एचपी प्लेयर्स आईडी. Ямар эйгүү харагдсан юм бэ? 3 дээр тийг хэлтэй онгоч. За T2K сүйог 1-3 хийчих юм болов. High voltage sport одоогийн байдлаар 9 киллийг тооцолцсон явж байгаа. Train to kill. За хамман гаргаж ирээд үзээд байна. FTP-тэй Pravin дээр knockdown өгсөн. Pick and fire. За эндээс нээлээд авчдаг да. Малик давуулаад молотофик гэсэн сүйогийн байрал дээр яг буучуу. За шатаад гүсээ хоноос нь Мартин front shot явах гэж болсон. लो भाई chicken dinner by high voltage. And thanks to Gante भाई चिकन डिनर बाय हाई वोल्टेज गाइस. चिकन डिनर बाय हाई वोल्टेज. समझ इस मैच में समझ ही नहीं आया ऑनेस्टली हुआ क्या क्या नहीं हुआ. टीम्स ने कैसे मूव इन करा कैसे मूव इन नहीं करा. बहुत ही अलग कहानी थी. चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो गाइस चिकन डिनर बाय टीम हाई वोल्टेज देखते हैं ओवरऑल रैंकिंग उनकी क्या आ चुकी है इस मैच के बाद. और गाइज 8 पॉइंट लिए है एसटी ने इस मैच में. मतलब वो 1 पॉइंट से रह चुकी है. मतलब नेक्स्ट मैच में मोस्टली वो ओवरऑल पे #1 पे आ जाएंगे. नेक्स्ट मैच आपका होने वाला है मीरामार का. #9 पे हाई वोल्टेज आ चुकी है. इस मीनवाइल अगर हम देखें पीएमएसएल उस पे क्या चल रहा है हमारा इंडो पे थाईलैंड इंग्लिश की स्ट्रीम का आईडी की आ जाओ. चलो भाई यहाँ पे मैच देखते हैं. So looks like it's okay, but if you remember week number 1, PMSL तब तक PMSL देख ले थोड़ा सा आ जाओ. तो गाइस PMSL मैच नंबर आपका ये है 4 स्क्रीन के सामने आ रहा है. जैसे ही ऐसे का मैच स्टार्ट होगा अपन वहाँ शिफ्ट कर लेंगे. गैंटे भाई सोलो 9 किल्स. गैंटे भाई ने सोलो खोल दिया भाई. सोलो गैंटे भाई ओपी इन द चैट. मीनवाइल गाइस 4th मैच आपके स्क्रीन के सामने PMSL का जो कि स्टार्ट हो चुका है. और इंग्लिश ही है मेरे भाई. ये स्ट्रीम इंग्लिश ही है. A deja vu, totally a deja vu here. One that actually going to make a factor of change is down to the players' rotation. As we do have DBD taking Quarry, Vampires, TS and Udo Lions. We saw how they've been gatekeep before on the right side of the bridge, right? By the side of, if I'm not mistaken, it was BTR. There's some other teams there down there as well. But there's actually on SMB. इस वीडियो में गाइस जल्दी से 1000 लाइक करवाओ. क्या कर रहे हो गाइस? 910 लोग हैं. जल्दी से गाइस को 1000 लाइक करवाओ. फास्ट similarities, maybe make it 95%. You saw the second circle, the third circle pops where it actually quite late to move away from SMB. So I think you Lions and Team Secret do have the time to look up first and maybe start to move by end of second circle. कितने मंथ का PMSL खत्म है? Last week चल रहा है. That's the change coming from Team Secret especially. Yeah, this time around, after looking at what happened in the second angle, they might consider to go back to the left side bridge and back into the circle from there, which is okay as well. And you're right, luckily that once the second stage of the circle is over, then we will see clearly that the circle will be on the main peninsula. So that is where they really need to rush over, and they can play a little bit later because normally like if ये Team Secret के मैच अच्छे नहीं जा रहे. इनकी कास्टिंग सुन लो और फिर ऐसे अरे bridge-keeping, it would normally be like Sector 1, Sector 2 until that bridge camping might realize that, hey, okay, no one's really passing by here. Maybe they go by the other side. So it's like, oh, it's not worthwhile to really wait. And then they'll start to move away. And that's जो कास्टर्स को तो बंडल ऑफ एक्सपीरियंस है. कौन बोल रहा था अभी सी पे जो ये लेडीज है ना वुमेन कास्टर्स को तो बहुत एक्सपीरियंस है. बहुत अच्छी कास्टिंग है. एक्सपीरियंस भी बहुत है. अभी अपने में I normally kind of notice that a lot of teams चल रहा है सीन. मतलब समझ रहे हो अभी धीरे-धीरे करके we are growing वाला. आने वाले टाइम पे फॉर श्योर हो जाएगा सीन. Quite well when it comes to overall across the board. Now,
is that a factor that's saying when it comes to this season, it's actually way better to play in the center of a map instead of playing on the outer ones and playing the blue zone? Because it didn't work like how it was supposed to be the last few seasons. Maybe because of the timing factor of the blue zone and the Swafel is the ideal or the for the new damage being BTR. increased, Mere or is it just the bhai. format itself as a point system, as a factor, is actually more prominent to have those eliminations than, you know, playing for ranks. I think it really depends on what other teams do, and that's dependent on the research that these teams do for themselves, like observing other teams' trend and all that, and then they will see that, oh, आज भैंस की आँख किस्मत खराब है भाई. okay, the possibility of teams playing on the outside may be lesser versus playing in the middle, and so on. I think it really depends on what other teams do, and that's dependent on the research that these teams do for themselves, like observing other teams' trend and all that, and then they will see that, oh, okay, the possibility of teams playing on the outside may be lesser versus playing in the middle. All the time though, I would say, but a lot of time it does. And playing in the middle also has its pros and cons. Like, yeah, you get the circle, like you don't need to worry about the next stage and all that. However, there are teams who will be eyeing that spot too. So that's where we see that third party coming in, and that's where the Thai teams are really good रोजन with भाई that. आप कंपैरिजन So, किसका कर रहे हो पता है? the thing PMPL about लीग का PUBG Mobile is कंपैरिजन कर रहे हो आप oh man, PMSL your से. trend is PMSL जो है so, आपका वो एक there's so तरीके का much variable चैंपियनशिप to the इवेंट. trend, just because of how 80,000 many US teams there डॉलर are. प्राइस पूल 16 इनका भी teams था will PMPL का. switch सीरीज एंड पेंट almost every इंडोनेशिया, round मलेशिया, of what they're वियतनाम. gonna do. ये चैंपियनशिप काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट हो रहा है. सुन भाई, That's how you कांट mentioned कंपेयर about बोथ ऑफ द. adaptability बहुत for the डिफरेंस है players. जो आप कंपेयर कर रहे हो. Can they और बहुत actually गलत make तरीके it से in कंपेयर time? कर Like, रहे हो. no. Intel information is always is the key for these guys to call for that judgment. It's so important for them to actually realize that they cannot afford to lose the scout too early or any time. As we speaking about scouts, Varvel, I didn't mention about them, cannot go in blind because key is the information for them how to rotate. Oh, hi. And देखो ये Liquid क्या or मार दिया D भाई. straight away being tapped down by the side of Push. Rico. And that's not great on the side of BTR. Push. It's definitely not how they want it to now to be. Yeah, this opportunity for them to rush in. Jimmy, very close to getting Ryzen, knocked down, out. and finally will be taken up by Yuhai. Ryzen holding his ground. Nice. DVD. Oh no, they're losing the plot right now. They traded back one, but BTR trades it again with two Swafel. knockdowns. Now Echo's coming in for the other side. Swabel is still alive, and Swabel has a DBS of his own because DBD Hi, Zix nice. almost getting Swabel onto the right. Swabel retreats back, gets knocked down, and now Zix 1v2. Going back to the side of DBD. BTR Ryzen cooking up the nade just to clear the corners downstairs. Akko might actually do the same. Try to flush Ryzen out. Akko still cooking it up. Don't want to self-explode there. A bit too long for him. More than 4 seconds possibly. Akko with the Bison. Now swap over to grenade again. Trying to flush Ryzen. The last member of BTR right now. Oh. He jumps down. Jump shot. Whoa. And Ryzen still managed to clutch this one out. Got one. Oh. Secures one, but too much. At least Anti-Ryzen, BTR secures one elimination out of that scuffle. BTR once again early elimination. But this is a dangerous game they're playing. Yeah, winning the compound, great for DVD, but losing 2 players in the process. Okay, it's quite a heavy trade-off there. But they eliminated BTR, and we all know right now BTR is down there in the overall charts when it comes to the bonus ranking. So this is definitely not good at all for BTR. Oh boy. I'm not sure how much, but they do have the opportunity to make do of how they will perform by the entire week. If they can manage to get themselves in the top 10 by the end of the week, they are more than safe to be in the grand Big finals. people, अरे Wild X ऐसा नहीं है. Dark the Conqueror, नेपाली teams अभी वहाँ break आ रहा था, तो अभी हम shift हुए यहाँ पे. Team secret. Now they're rotating a bit early on. I think they realize right South now Asia they're में break playing आया था अभी. alongside the blue zone or playing it very slow. It didn't work out हम for यहाँ the पे past shift 3 हुए हैं. weeks. For the Dark the past 2 Conqueror, अगर आपको and नहीं plus पता one है. more day here in week number 3. So maybe
the plan now coming up from Team Secret? We saw a bit of improvement with iShot adding in, and they were playing in the center. They're playing a bit early, so maybe that's the case coming up from Team Secret. They want to change up the tempo, playing a bit in the center this time. Maybe there'll be an improvement. I think it's like when you put on iShots, then yeah, they seem to be a little bit more confident to play in the middle. But when you put without iShots, so probably Jumper makes the full-on call, then he likes to play by the side. I want to add on to that thought about Team Secret's rotation as well, because they saw the elimination feed that BTR got eliminated. The last time we saw them, between the two teams, they were gate capped by BTR. So by knowing that BTR is out, I guess that's where they know that, okay, it's clear to follow the left bridge. It's like the same circle, just like we saw earlier today. GE have to give away those points. Not going to get any out of it. Giving away the information, yes. Getting a value of it, not so much. Boom, on the other hand, definitely spotted them out. RQ and Alter Ego. Surprisingly, the Indonesian teams love to have a go until the final weekend. We're talking about they're still sort of having this trail by all the Indonesian teams to cut across. It feels like they're going on the same path here. Every single map, especially in Erangel. Yeah, there seems to be like a trend at this point, right? Maybe because like what you say, because it's a similar circle. So they'll be like, okay, if it works, we do it again. But then again, other teams will be like, they did something that works, so let's follow. And that's how they kind of like indirectly follow each other. And speaking about following, DBD. Not really following anyone else, but they happen to be behind Hale Esports. Not the team that you want to meet, considering that you really, really need the points. एज इंडियन मैं नेपाल का सपोर्ट करता हूँ। बढ़िया 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 भाई, डाक भाई बहुत बढ़िया। बाय द वे जो भी नए लोग आए हो, अभी पीएमपीएल ऐसे चल नहीं रहा है एंड पीएमएसएल का मैच स्टार्ट हुआ है, तो हम पीएमएसएल देख रहे हैं इस करके। मैं पहले आपको मेंशन कर दूं, आप बोलो पहले। पीएमपीएल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। Their bodies for the other teams out there to get those points away. So Six and Yan have to be really meticulous about approaching this fight right now. Whether to go into the bunker or not, they might get trapped inside. It's gonna be a really tough one if that happens. Or just playing on the outskirts of it, because SLD is marching to this side. We're talking about might be 4 teams in the same corner. We do have Alter Ego, we do have Hill and DBD. SLD is just closing the distance. Even Boom, we can spot out around the corner. So they have to make sure they didn't extend themselves in the center for DBD. But if they can actually pull it off, it's going to be a big one for them. Yeah, I mean, we've seen multiple times, right? If you have only 2 players or even 1 player, if you go like in the middle and then you don't stay at like a compound or a really, really hard spot, you can actually get a good ranking. So maybe that's what DBD is currently thinking, right? Of course, we're still at stage number 2. The circle is still fairly big, but that could be their approach right now. But speaking about the circle as well, we'll be seeing the next phase of circle really, really soon. Team Secret, they are still playing somewhat by the edge, meaning that next circle, they need to be such it is. Hard shift आना चाहिए, मजा आता है। Intersection again. We mentioned it multiple times. The moment you saw an intersection on top of a circle, it means a lot of an open field, fat pace, flat plane. So RQ happened to be caught 79, and this has been 79 plays for their checkpoints almost every single map of Wrangle if this sort of circle happens. We saw this all that boys, all that क्योंकि बंदे ने मार्क दिया यहाँ पे random spray मारता है, fuck ने मारे वहाँ पे sprays and 7-9 eliminated भाई. Yeah, when it comes to this circle, you're right. It seems to be a trend that 7-9 really likes this location. So maybe that was also expected by RRQ. It's like, okay, 7-9 is going to come anytime soon. Let's be ready. Let's open up a certain formation. And the moment they come in, yeah, RRQ, they lost one. They traded it back. But 7-9, entire team eliminated because maybe it's the same thing that they repeat again. And we did talk about adaptability, right? So if we talk about adaptability, it's about, okay, let's try and make something, do something different, because if we keep doing the same thing, other teams would adapt to us. So maybe that's where 7-9 was punished for it. Speaking of punishment, GE, the one that actually been punished by Vampires, who's coming out from the back. Mini 14 just tapped away for Tony K. He definitely knows there's going to be somebody there. He was unsure about it before because he saw just a glimpse of it. Now they pop up the smoke coming up from GE Smile. He definitely knows it's going to be somewhere there. So he's not going to let it pass by. The moment you've been locked by this
high fraggers player, there's no way you can escape the crosshair lock. Side of Bacon time, we see a lot of players and teams resorting into this pits area because they do know for a fact the moment you pop out of your head, it's going to be a flat plane between the streets. There's going to be a lot of crossing of streets in the last few minutes. So it's best for them to play the outside first. GE will be charged by Team Secret now. Yeah, as much as Hale Esports want to be Team Secret, looks like it's going to be GE right now. Let's see if they can defend this area. Kid get naded down. And now Ichi traded back. Looks like a 3v3. But they're all in the next building now. So GE down to 2 players left. Aizen goes up with the DBS. Takes Zai. 1 left to go. It should be okay for Team Secret. And that is it. 1 more player from GE not in the compound. Oh, man. GE eliminated. That's going to be the entirety of it. But at least is a successful rush coming up from TS. But will it be successful enough for them to defend it with lesser time to even reset? Vampires charge in, coming out 2 angles. Boom passing by as well. From a different angle entirely. Surprising, another crossfire against 3 teams there. Tony can spot it out the window. Tosses straight into Isaac's spot. Try to fudge it entirely. Kit on the other end, tried to heal himself back up. But Isaac naded by the side of Tony K. Newsy coming out to his side of our boy. They are surrounded for Team Secret. Man, this is what we talk about, the timing from the Thai teams. They really know how to third party. They arrive just in time. And now Team Secret, they need to reset quickly. But before that, they will lose Aizen. Our boy in 1 house. The rest of them on the other house. So it looks like our boy's being surrounded. Our boy needs to win this fight somehow. Our boy gets Schweppes. And looks like needed down by Tony K. Looks like our boy goes down. Then that only means that Team Secret. Only 1 player left. Team close पे दिखी मुझे. Jumper. He can't pick up Kit though, but he needs to buy enough time. Oh, now he's Revive taking देगा his player position को. as well. Very small small window right now for him to actually pick up Kit, but that Molly. यार क्या Molly मारी भाई ने यार. This is a jumper. बच गया भाई. किस्मत. If only we have an equipment called fire extinguisher that can actually eliminate those fires, burning off Molotov in an instant, it would be great. But right now, for the side of Team Secret, it's not worth overstay themselves here. iShot just gonna flee. Faze. But we do have another rush coming up from Faze and Alter Ego. Yeah, Faze and Alter Ego now duking it out, and Octa will be taken down by Onzens, who's back in the fray now. But Faze Clan, oh wow. Looks like Alter Ego. Maybe because of Rosemary and Potato shoot from the other side. पता भी नहीं लगा. To take out the rest of Faze Clan. That happens so fast. Hopefully we'll be able to see the replay later on, but that's a good defense by Alter Ego. PBE, they will have to crossfire with another 2 teams, including Box and Hill, if I'm not mistaken. There you go. They're waiting on the low grounds coming up from the side of Hill. Tiger and Flash, and that's going to be one of the MVP just now, Flash. But in the forest we go. It's going to be Box versus Udo Alliance, having exchanged fire at the borderline. And PBE happened to be there, just landed themselves after they're rotating, and they decided, you know what, we want to stay in the forest for a bit more longer. And they might caught in this crossfire between these 2 teams, and these 2 teams definitely given away the position. I'm not sure how PBE will stay quiet. They definitely won't stay long, but Vampires just happen to rotate at the same time. Boom! Spot out Vampires. They pull over. They want to go for the fight. Oh, here Pml we start go. होगा. लगाते हो अभी तो स्टार्टिंग होगी. Maybe स्टार्टिंग में तो आपको पता ही long ज़्यादा because कुछ one खास होता player नहीं is leaving है. तो this लास्ट के area. सर्कल्स ही मेन रहते He's हैं. opening तो up अभी the थोड़ा सा flanks. वेट He's करो, थोड़ा सा U-turning वेट back. करो. Wonder if he ये really देख wants लेते to हैं मैच fight. हल्का फुल्का. But for Then PMP पे Vampires, it शिफ्ट does करते seem हैं. तो necessary 5 मिनट because रुक they're जाओ. just right in front of Oh, Boom. oh, oh. Shots being fired on to Yummy. They can take down Yummy. One of the starman of Boom. That will be going the aggressive. knockdown भाई that पर they need. TS के बंदे ने But खोल so दिया था. far not टीम पे yet. लगा रहा हूँ गॉड Let's मैक्स go भाई too लगा रहा हूँ. soon. There's टेंशन ना लो, Tony K. टेंशन ना लो. Knocks down लगा रहा Yummy. हूँ. PM पे लग जाएगा. बस थोड़ी सी देर रुक One जाओ. of the main fragger coming from Boom. Have to have help from his teammate Razy coming from behind. Almost clipped a lot on the side of Tony K. Last tick of health there. 1 HP. Never mind. Tony K taken out by Boo Boo Hoo. They're shutting down Tony K all rounder. But Boo Boo finish off. Newsy. There's going to be Nate hurting a lot. Double down. It's going to be on Razy. Razy needs help. Pombit have to pick up Yummy and now push forward. Buy stall time. Never mind. Stone clean up the job with straps as well. Boom eliminated. Once again. No. You know what? Vampire Esports didn't lose anyone, so they're still in a perfect condition. Why? So they're out with only 3 elimination points. Right now,
We did talk about DBD strategy, playing as a duo. They still have the circle. For Southhill now. Dark the Conqueror commentary क्या करो मैच देख रहा हूँ अच्छे से भाई पूरा like guys by the way PMPL हम लगा रहे हैं थोड़ी देर में अभी कुछ वहाँ पे खास नहीं होगा starting है तब तक यहाँ fight enjoy करो last moment यहाँ पे चल रहा है fight का हिल top पे चल रही है 44 point के साथ दो इस मैच पे 2 eliminations निकाले हैं what a dodge by Tiger Okay, flash को लिया PB ने off angle बना के not in good situation Hill currently क्या बात है Gets slowed down. Tiger, Tiger to clutch it. Rankin is next as the Momboy versus 1v1 with Tiger. Momboy don't have that much space. He got clipped by the blue next, and he don't have that much health utilities. Oh, and if Tiger wants to pick up his teammates, he got to do this quickly. But looks like he's going to prioritize that because Circle's on the other side. But also it's because Box Gaming Capone shot with the DP from afar onto Momboy, and that kind of saved them. But hey, making time Vampire. अरे स्टाइल को अगर रेन ओवर हो जाता Speaking of the pits fight, here we go again. Vampires, Bacon time. तीरी कर गई यहाँ पर Bacon का and once again 4-man है सिर्फ टोनी के यहाँ पे नॉक हुआ है Put in their mind that there's 10 elimination domination to team Vampire. Have no clue what's inside unless you nearby. कहाँ जा रहे भाई तीन push मारे तीनों successful. Team Secret, Boom, Bacon. With full HP. RRQ angle बनाया नहीं Valdemar ने नहीं दिया knock. Just gonna shot down the players. Perfect ने दिया. Oh yeah, RRQ will be happy to take that knockdown, but not happy. Also guys, अगर आप channel के अंदर नए हो, so make sure to take the like and subscribe to the channel. As a full squad, they might want to rush in, but because they're playing as a trio, so looks like they're holding back for now. And plus, they're being shot at from the other side. But hey, RRQ is moving in. Are they going to zoom in? Not yet, but Nabriko with the long range is going to give cover fire for Best G to take his position. Vampire right now, they got himself quite a number of smokes. Just hope they can actually VP inspired from someone नहीं भाई but massive यार VP बहुत बढ़िया but फंसेगी VP आज निकलने में फंसेगी आगे देखो क्या the smokes are too attractive for the players. Remember you saw smoke, you know अरे ए ने भी 1 2 3 कर रहा देखा तुमने क्या फेस का क्या भाई For Alter Ego they definitely have this compound. We have very sort of similar fights early on, but different teams this time. With Alter Ego barely making it into the circle, they do have the compound, yes, but how much longer, we don't know. But the teams that realize that, you know what, compounds might not be it, they realize that, yeah, outer fields is way better. Playing outside, you have more space. But at the same time, you don't have much barricade. Yeah, they're going to depend on their vehicles. But they also depend on their vehicle for the next stage because they're kind of stuck between roads. You need to be prepared to make that rotation. And speaking about rotation, RRQ, they left that fight, not interested, goes up north, up on the clear. But on the southern side, look at the number of teams. 4 teams close by each other. Absolutely not clear at all. Advantage but they have circle. अभी के time पे It's going to be bunkers area for the circle. That's the worst part of it. It's going to be multi-level of the brain box and DBD both realizes they got themselves the bunkers to work around. We do have another side. I think it's going to be Alter Ego. नीचे कमेंट got करके himself जरूर inside. बताना Still got 4 walls to take covers for Vampires on the other end, not being favoured at all. We talk about them having the roughest circle amongst all the other teams down there. And if they can make it, it even got himself a chicken. And that's a big statement. Oh yeah. Let's see if they can really pull off a surprise. Now, the challenge is for Vampire to pull off the next surprise if they can get across, because look at the crossfire by Alter Ego. In the compound, they can see Vampire. Rosemary on the off angle can see Vampire as well. So Vampire is kind of stuck. Probably the only option is to go down south, and that's their route. But before that, it's going to be Kenny that's going to take out Tony K. Speaking of Tony K, Pmpl Amchin by bus लगा रहा हूँ PMPL ही लगा रहा हूँ and the spray was remarkable. The tracking coming from Udo Line. देख रहा हूँ साथ-साथ मैं उसका भी देख रहा हूँ टेंशन ना लो टेंशन ना लो खत्म होने वाला है जॉब बस थोड़ी देर Alter Ego still staying indoors. about to end Sort of Udo Lines definitely had a big win on that. जब तक थर्ड सर्कल वहाँ स्टार्ट होगा उसके बाद हम यहाँ से got स्विच कर himself लेंगे a 6. Again, can DBD secures those chicken? Ooh, okay. I'll be holding my breath for that. It's playing as a duo. But now let's put focus onto the southern side. RRQ, still on the outside. They need to cross the road. But similar situation like Vampire Esports. Crossfire from Alter Ego is going to stop them from coming in.
side of SLD. Crushing into Agara Warren, box Meng bhai, stay down tuned, or stay take the tuned. Thoda sa bunkers. bacha, ruko He'll zara, try sabar to karo. close in the distance. Now, at least they got themselves bunkers, but will it be lasted long enough for the circle to be favouring them for the longest time? Orica have to cross the road. This is going to be a tough one for them. They pop the smoke, yes, but Alter Ego will not give them any sort of entry here. Fnatic just eyeing out to the side. The moment they push inside, Alter Ego, yeah, you do in a straight line of self Fnatic just now, and not just that, coming from behind, somebody's shooting them for Orica as well. Decided, you know what? It's not worth popping out the smoke, but Alter Ego Fnatic still see through everything. I'm not sure who shot on the other end. It's pretty Octa, Alter Ego, Scott Road. Hail, अरे Hail once again top 6 पे आ गई भाई. Esports, and they had the same fate, but another same fate as well for Hail Esports. Last moment, match is about to end. So far, we see that Vampire Esports the most elimination points in this round as of now with 10 elimination points. But the rest of them will add up still as Udo Alliance and DVD. Udo Alliance coming in from the other side. And it's going to be DBS gameplay by Yen with the DBS of his own. 6. Trying to just stall time here. They're being cornered every way possible. Udo Alliance trying to crush in, but it feels like a fail. DBS on Chamil's hand leading out. With Udo Alliance cooking up the nade cancel in the last minute. Now all they need to do with Udo Alliance keep tossing those nades, those throwables, but they are running dry. Canny, here comes another, just to stall enough time for the teammates to be backed up again. But DBD decided, you know, we want to go inside. We want to go into the bunkers. We want to get into the tunnels. It's just so tough for Udo Alliance to find those eliminations there. They're just blocking the smoke. While the side of Alter Ego, I feel like this is their game to win. They are the only one being favored by the circle. And the furthest away from the fight. Whoever wants to get into the circle, straight away, these elevations of Alter Ego will let them spot. By the way guys, next match में जिनको नहीं पता PMPL के अंदर ST #1k1 आने वाली है. अगर ST अच्छा खेले and vibe अच्छा ना खेले. Now Box Gaming coming up onto Udo Alliance and really wins the fight. And that's going to be another point in the bag. 2 points so far for Box Gaming. They still have Shamil though, but the nade, ooh, that was close. Canny. Hello Danish bhai, kya haal chal? 5 teams to go. SLD a full squad. Singers for Alter Ego a box. They need to leave. They don't have space here. DBD just gonna go underground, while Box gonna go on the high grounds, on the outside. But Udo Alliance cram in between. Box Capone spawning out. Winnie have to stand as well. Canny shot one down. One more on his right side. Randomly spraying the smoke with somebody else shooting him from behind. He couldn't even stand for Canny, but Box winning like how diamond. to get in. Ooh, maybe he needs to take Kenny out because Kenny's actually looking at Winnie. Kenny stands up. Winnie definitely heard that. Time is not on Winnie's side. He'll need to stand up at some point as well. But the entire Udo is waiting for him. भाई इन बंदों के अलग फसड़ है जो बचेगा उसको ए मारने वाली है. But now Kenny will be knocked out by Winnie. But finally Winnie been taken out by Kwang Ji from SLD. Here comes SLD waiting on the other end of the bunker. Waiting for DBD to show themselves up, but here goes Yan with the DBS, again with the DBS game. And he's getting 6 fine with that UMP. Giving a bit of support fire, 1-to-1 trade. Udo Alliance hurt those footsteps. He chasing the heck out of DBD, but now trapped himself with Udo Alliance. Oh, nice. Waiting by 6 minutes to make it out, clutch it out. Udo Alliance, last member, but Parajin, oh my god, they just passed. They just rolled ticks, but never mind. Still, Parajin wins that over. Oh, he managed to recover that quickly. That was good move there by Parajin. But looking at Alter Ego, they're coming in by Rosemary knocked down, so that should buy some time for SLD. Right now, SLD, could this be their chicken dinner? Because now Alter Ego left their compound. Potato looking through the long range. Can he get someone there? He sees Ghostu on the left. Shots fired out by Octa. Octa counter fire back upon. भाई one HP penalty, Rosemary knocked नहीं होना था. He happened to be so low. If not, it's gonna be half HP down. At least Fnatic got a bit of reset, but it's just such a hard hike for them to be frontliners of Fnatic and Rosemary right now. Mission failed for the side of Rosemary, but it's still fixable for now. But SLD do have the elevation. They're split into 2-2 formation for now to support fire, but the double nade down was huge coming up from Fnatic. Ooh, nice one onto Parajin. Right now they're just trading it back and forth, and looks like Parajin can be picked up.
Doesn't seem that Potato has the visual. Potato only knows that someone's on the left and there's going to be Gosu. Gosu can't move for sure. Right now the zone is closing in. Not sure if SLD has a vehicle, because if they don't, then they'll be exposed to danger. They'll be exposed to an open field. Please are shrinking here. He tried to heal as much. Then when they climbed out, Octa, support fire, Potato and Octa be playing at the back line here. As Fnatic and Rizmaid trying to finish off the front, they will nowhere near to be revived. I'm surprised that Fnatic by the way, Potato here comes. He got one. Got on Chuangji. Gosu. 40% HP down. Trying to revive his mate at the same time. There's no more circle after this. They have to force, because the blue zone will not favor either side. And both sides burning out quite alive. Octa trying to save Potato. We got last Faze on him. No helmet whatsoever. I'm not sure how much Potato have, but he definitely only got micro Uzi right now for Gosu. You know what? He's just gonna go in for the push. He doesn't care. He wants to wrap around here. Oh, could it land? Yo, that was close. Oh my goodness. My oh my, Alter Ego. Oh, shine like diamond chicken निकाल भाई. Oh, hold on 1 minute, guys. एक बार OP कर दो. By the way, we are shifting to PMPL. But what a match, guys. Alter Ego का चिकन लग रहा था, but क्या खींचा है. Let's go, boys. Let's go. And Sealy Sports coming under heavy fire. Viper down to 10 HP, but still nothing to worry about. They have a good position to hold on to. Guys, let's go. PMPL पे आ चुके हैं and सबको बुला लीजिए एक बार जाके सबको बुला दीजिए. आ चुके PMPL में 15 टीम्स. अभी तक फाइट कुछ एंगेज नहीं हुई है ज़्यादा. देख सकते हो अभी तभी हम बिल्कुल सही टाइम पे आए 4th स्टेज पे. एंड जोन लॉस लियोनिस वाला है. मैं दूसरी साइड पे देख रहा था यहाँ पे भी क्या सीन है. ट्रू लव सर, अब फाइट होना यहाँ पे भी स्टार्ट होगा. अब यहाँ की फाइट एंजॉय करो. Sus has been taken down. So multiple fights are happening as teams are trying to move inside the safety net of the circle. The rotations are coming in. Yes, the majority of the migration are in the city of Los Leones. It is going to be a fight of the grenades. Whoever is having the highest number of utilities, well, they're going to have highest frags. But look like I8, they're punishing the plus of raw officials as they take down Kancha as well. I8, I don't see them on a higher ground. They're on the ground floor still. Why? This is called the Los Leones zone, guys. PMPL vibes in real. SG की टीम है जो सिर्फ अभी एलिमिनेट हुई है. I think their frags have just. बाकी guys सबको बुला लीजिए यार. Even टीम हमने स्टार्ट कर दिया. So इसका वेट हो रहा है. So I8 find themselves in a very comfortable spot. Seal, yes, they are in the proximity to. और guys, where is ST? अच्छा इस मैच को ST नहीं खेल रही. Guys, ST को मैंने आपको बता दिया है. H4MV मतलब वाइब्स को कम खेलना और ST को 1 पॉइंट निकालना है तो ST #1 पे आ जाएगी. This is the overall scenario जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. Most of them are still surviving with four players standing. By the others, Apex Assassin को नॉक दिया. एंड जितने पॉइंट अभी SITM ऐड ऑन कर रही है आप उतना ऐड ऑन करते जाइए करते जाइए. लाइक SITM का 1 पॉइंट है. अब यहाँ पे उनको 2 पॉइंट लेने हैं. The artillery fire that comes in, the grenades, the dynamites that come in whenever we have an urban circle is always fun to witness but very hard to play. These kind of circles bring so much trouble for the teams, but wait for the curveball. The last moment the circle throws a curveball and all these teams in the city of Los Leones, they have to come out in the open, and then it becomes a very big challenge. And the team that is in the outskirts or somewhere far off from the city, they reap the benefits. We have seen a similar circle where the players of Stalwart Esports were on the top and they were draining death and destruction. So there is a possibility of that happening again. And this time D Venom, they are the one keeping themselves a bit away from the city, but Seal, well, for them, it's not going to be easy if circle goes away from them. Even if the circle doesn't go away from them, the way the players of I8 are converging, Seal, 1 grenade and guys imagine karo zone 4M TRZ पे चल जाए. That is coming in good position, but raw hi because from the southern side TRZ पे zone चल जाएगा. guys TRZ पे their position. Let's see 4MV, and they'll have a higher ground doing it. And 4MV will have that upper hand onto the players of Team Bad Intentions too.
because bad intentions, I think for now they're being बाकी तो नहीं bro, they're I8 ये being दूसरा shot है, on ये from I8 two दूसरा है. different Don't sides. compare Even that Roy is I8 with taking this some shots, I8. and And here the we players go of guys. TRZ are बहुत also ही interested in chaos that वाला battle. zone, So Bit बहुत is in chaos sort वाली of a fights. limelight इस here. zone के The बाद fourth आपको देखने को direction मिलने from which वाली they है were PMPL safe South for now Asia के might just अंदर. be acquired by And the players of crown to 4MB. hashtag So 1 Bit, overall ranking का they will crown be भी in a lot of guys trouble in the किसी future. एक टीम को जाने It वाला है all इस depends मैच on के the zone बाद. though. Let's And see where the here zone we goes. go And again. 4M, ये they chaos do have a पड़ने good spot. वाला है. 4MB though has the best possible spot. They'll have a vantage into the Again city. ये They'll chaos have a बढ़ने vantage वाला onto है. all the players बहुत that are सारी below teams them, and alive they'll है. have a इस party पॉइंट of पे इस frags to सर्कल के attend here. अकॉर्डिंग इतनी सारी टीम्स कंपाउंड टू कंपाउंड From the सीन northern एसटी front, को we have the बीटी. players of Stallion मीनवाइल है Esports coming in, and looks ओ like multiple third parties were happening as we had Sitim Esports, IGC, and D Venom, and looks like the numbers of Stallion Esports are not favoring them at all, and maybe they have been eliminated, or maybe one player is still जोन there सिटी पे नहीं on the जाता, northern front हमेशा छूटता beside है. Dobu ठीक है of guys, Sitim ठीक है. Esports. I want him Maybe Sitim to okay bro, Stallion ST का Esports are लाइनअप still क्या है bro? surviving, ST का लाइनअप but सेम what है are the भाई. players of IC है, Badminton doing TZ right now? है, There was no need Action for and Dalian Top. to leave this cover and move towards the players of Raw officials. ब्रो The एक remaining हर two एक रीजन players से एक have टीम a यार very good PMWI position in the PMGC तो circle. बहुत This टीम्स के was an स्लॉट है 40. unnecessary देखते हैं इस बार rotation स्लॉट that came कितने from the PMGC side के of लिए, bad तो intention, वहीं से चीजें and now पता they have लगेगी क्या this सीन has है क्या costed नहीं है. them the life of two players. But yes, 4MB, they can try and contest bad intention. They can try and contest the position of Raw officials, and TRZ, even TRZ are also looking so very promising right now. Let's see though. It all depends on the zone. The major shift is yet to come, and if it goes to the city, all these teams which were thinking will play through the ridges will be punished. And bad intentions, exactly. I don't know. एस्टिट्यूड यस मेरे भाई. अब मतलब आपको और सब्र करना पड़ेगा गाइस. एक मैच ही बचा है, इसके बाद एसटी का जो लास्ट मैच होगा अब उसमें ही पता लगेगा एसटी #1 एंड करती है कि नहीं करती है. and were punished for it. Situm though, Dobu gets इस a मैच good के बाद तो knock onto the कंफर्म नहीं player कर of रही है. Dead Eyes, guys, and he instantly falls back to cover. Now Turulov, he's trying to create a wall of smokes to get in and get that revival. The spray was good for a second, but Dobu, after missing those final few shots, now tries to get an 8, and these nades could be very harmful. नहीं मेरे कोई वॉच पड़ी होगी फाइनल्स की. विल ट्राई माय बेस्ट. अलादीन सिंधी भाई देखते क्या सीन बनता है, Kobe being called by आपको Dobu, बता दिया and जाएगा. that's a double 7 knock. को है ना 6-7 Double देखते हैं यार. knock coming PL in भी onto होगा, the plus of Dead PL Eyes. 7 This बजे is तक not होगा. looking उसके good मैचेस at all. कितने बजे There स्टार्ट is है? no chance the remaining players can come in and revive the fallen teammates, because it's going to be a suicide mission. So Dobi will get the confirmation, easy confirmation coming in, and with that, the last player has been pucked off by Mr. Smokey of Leo Esports, and Dead Eyes, they have been eliminated at 14 spot. Now 43 players remaining, 13 teams. Dobu having a height advantage. Yes, he can capitalize on the information. Yes, he can pass on that information to his teammates who are on the low ground, but regrouping with his own teammates is going to be a bit of challenge. Right now, they have the safety of the circle, so nothing to worry about. But all these teams in the city of Los Leones, I'm just worried. What if the circle goes south? If it goes south, I'm going to enjoy the circle so much, and all these teams are going to hate me for wanting such a circle. But hey, what's a battle royale game? What's a PUBG game if there is no action, there is no drama? For the drama, we need a southern circle going away from all these teams. But look at the position of Mr. Smokey. He's all by himself in the vicinity of Sitim Esports. That wall is what makes the difference between Mr. Smokey being dead and alive. Seal though, they are also in a good spot, and look at the zone. I think it has shifted. Which one is Bangladesh team? Bad intention, but still a lot of and buildings are inside the zone. Situm though have to Venom rotate. DEV They're है, not but inside. Mongolian Seal find roster खेल themselves in रहा a है. comfortable spot, but the building that they've chosen is the worst possible one, open from all 4 directions if you try to get on top of it. And that is the reason that they're not trying to get any of those flags. 4MB though in a fight. Refuge finally lands the DBS shot, confirms the frag, gets the revival. The good thing Yo for boys, 4MB, the they 4MB did not back, lose the knocked player. back on track. That's a typical 4MB. Without losing any player, they managed to annihilate the entire squad, and it was just 2 players. Actually, a single player which they have managed to find. Yes, 2 defeat points. We were anticipating this brush coming from the side of 4MB. The way they were rotating, yes, it was a very good spot where the players of bad intention were holding, but they didn't have the numbers in their favor. And 4MB, well, they capitalized. Doku going for the flank angle, having some other angle, but he finds Alpha,
No, actually, it is Zordi from the side of Raw who finds Alpha and Bad Intention. They have been eliminated at 12th spot. Now we have only 11 teams, 39 plus remaining 4, and we still having a very good spot. And Stalwart Esports, they have been eliminated. Things are looking so very promising for the plus of 4MV because this is something Blorder says. Every single time, any team that comes closer to the plus of 4MV, they'll showcase a very good performance. And with Stalwart out of the picture, this is a very good game for the plus of 4MV in the overall ranking. And so it is for Situm as well. Look at this, 5 frags to their name on the edge of the zone. I'd say when these zones end in the city, right? The best possible position is being on the edge because you know you cannot be shot in the back. कल की तरह स्कैम मत कर देना. कल स्कैम हो गया भाई. एक प्लेयर नहीं लिया जिसकी वजह से कल क्लीन स्वीप होता मेरा. जितने भी मैंने अपने कॉन्टेस्ट लगाए थे सारे जीता. जोसेफ लेना भूल गया. What do they make out of the situation is completely on them. लिटिल की जगह कल मैं बोल रहा था ना कुछ एक प्लेयर का सीन हो गया लिटिल का. तो कुछ करा नहीं. जोसेफ ले लिया था कल क्लीन स्वीप. कैप्टन भी नहीं चला. हार्दिक बनाया था. बट चलो observing the fights and making sure they have a count. And if they do find an advantage, that they'll pounce upon. Situm though, still not happy with the position that they have. Throwing some smokes, acquiring a little bit more real estate. Agreed. They need more real estate in their control, which the plus of IHC are having right now from the northern front. Yeah, I have to say, the most unpredictable team in the lobby is going to be IHC. One game, they come and they dominate so hard that they end up having 10, 12 or 15 finishes in their hands. So IHC definitely have the capability. Sometimes they fail, sometimes they shine, and when they shine, they reign supreme. And this time also, they are looking so promising in terms of the position they are having right now. As long as they are able to not get a knock onto themselves and call it caster's curse, because I can see in the mini map one of the player of IHC has been taken down. I hope they get an easy revival this time because the teammates are in nearby vicinity. On the other side, Situm, well, they are making too much noise. They're feeling confident is what I think. Dobo and Desert especially, they've got those frags for themselves. QB, I think with the support, and that's a brave move, or maybe a stupid move, because it's two different teams firing on you, and it's Situm who capitalize on it. Desert is the one who gets that frag. He goes down, yes, to the player of 4MB, but in a situation like this, the revival would be super easy. Covered from all 4 angles, from all 4 directions. They'll get that revive and they just have to move 32 meters inside the zone. No problems at all for the players of Team Situm. And they are moving forward towards a good game. Although the dark green circles in the middle of the zone, that is Team I8, have a good advantage. The problem is as soon as they start taking these fights, this is what happens. Their frags are stolen. Although this time it's not the case, but most of the times the knocks that they get aren't the ones being converted into frag by them. I really need to stop appreciating the team. The moment I appreciate IHC, they lose 2 players out there. Things are not looking so very good. Yes, they are trying to move inside the circle, but there is an open field which they have to cover. Smokes are being deployed, but how many resources can one have? On the other side, we have Domi taking down the plus of TRZ, who were having a height advantage. Domi has been taken down from the backlines. Mad Cat going down. They are at the mercy of the blue. TRZ not looking good. Refuse takes on claw from the side of Raw. Alex, perfect grenade comes in, making things so very difficult for the plus of TRZ to move inside the circle. Degree at the mercy of the blue. Again, one more grenade. The blue won't punish them. IHC will punish them. Godless will punish them. And with that, Alex get the confirmation as well. With TRZ being eliminated, we have only 11 teams, 31 players remaining. IHC increasing their defeat numbers, 2 defeat points, but still not in the very best spot right now. Mama's still surviving, I'm sorry, from the side of TRZ. And as I say, Firat takes him down and TRZ has been eliminated. Oh, I have to stop appreciating the teams, I have to say. All good though. They find themselves in bad spots is the reason they're being eliminated. Those are the moves you should not make in the final few zones. Seal though, they're also down to 2 players. Viper gets a knock onto D Venom, and IHC Godless's nade comes and finishes the frag. Someone else getting a knock, someone else securing the frag. That's just unfortunate for the teams who are doing the hard work. Rogue here goes Rogue, secures another frag. Alex in the open. Not sure why did he make the decision, but he gets punished because of it. And Team Seal, they're down to 2 players, but still kicking, still trying to get as many points as possible.
A perfect grenade right on the face of Rock from the side of Desert, takes him down, leaving Soulless all by himself. A 1v4 situation, there is no chance that he can go for the revival. On the other side, we have Bonnie taking down the players of Dobu, Certain Esports, and Soulless might go for the revival, might go for the rescue mission, but it's only 17 seconds to clock. And they won't be allowed because from the backlines, QB perfect grenade comes in and takes down Soulless as well. Sealy has been eliminated. Now we have Abrupt Slurs on our screens going up against the plus of Esports. Fistboy again a perfect grenade right on Sleepy. Gangsta on a sliver of HP. This grenade can be so very deadly, but it is not being locked to the perfection. But no, yes, Gangsta has been taken down and Chari all by himself. A 1v3 situation, Fritz. That's done. It's done. He's still being bombarded. So NB, they find themselves 2 frags. They have to make sure they do not lose players here though. That's the main thing. Chari is the Chari, and that's the elimination that we were looking for. They eliminate the whole squad of Abram Slayers and now are taking the compound from them. They will also be able to reset. That's a very important thing because I think Fistboy previously did not have the access to this M4. Situm though, they are putting a flurry of frags here. They're still 4 men strong. They're getting knocks left and right and are inside the zone too. What better could you ask from a team? 4 MV, Apex gets that frag onto the player of Team Raw, eliminating the whole squad. But as soon as I say that, NB, they retaliate, bring one of the players of Team Situm on his knees. For MV, this is their game to lose. Look at the position. Yes, they do have a good compound to the name. They have the circle. They have the entire southern control. And they are getting confirmation onto the plus of DE for Venom. And Rally has been eliminated. I8 having a good compound. But I'm very sure... Also guys, ये जो आपका मैच होने वाला है, जो आपकी स्क्रीन के सामने वो भी रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें STE नहीं खेलने वाली. STE अब डायरेक्टली आपका जो लास्ट मैच होगा खेलेगी. And Vibes जो होगा लास्ट मैच नहीं खेलेगी. Vibes आपका अगला मैच खेलेगी. तो yes, this is the scenario, overall scenario. और देखते हैं overall standing पे आज के दिन पे क्या आपको major changes देखने को मिलते हैं. So very good in this particular situation. NB Esports fighting with the blue along with the players of I8. For MB, finally they make a move. They're being forced out because of the play zone. The names are not finding their mark. Guys, मेरा ना time कम बचा हुआ. मैं ना team बनाया behind a tree, some spam taken. But then again they retrieve back to their source positions. Sorry for that यार. NB face. आपको पता है ये time बड़ा crucial है. 7 से 7:30 के बीच में. Engulfed from different teams, from multiple directions. 4 MV now sorry अगर chat में back. miss हुई होगी. I'm really sorry for that. In a difficult situation, but 4 बहुत ज़्यादा MV crucial lose time. to team I8. आपको पता ही है. Bonnie, great shots taken, and he also has a shotgun as a secondary weapon. So getting in close, trying to fight in their face is also not an option now. And 4 MV, they better survive here. Look at Apex, 4 grenades, single Molotov, but no heals कुणाल थोड़ा chat को वो करना. 4 grenades can be the device for the plus of I8, along with the plus of NB Esports. Fistboy being the optimistic one comes out in the open, gives a glimpse to Nova X, who instantly shut him down. And now the members of NB Esports are not supporting the case. Mondo with a grenade might try and find #3 point. But move is where the AMP is going to take down the player of 4 MB. वही तगड़े point उठा लिए. They have been eliminated. 4 MB ने तगड़े point उठा लिए भाई. And now it is going to give a very big opportunity to the players of I8 who are going to capitalize with MK14 takes on Mondo and the last I8 OP in the chat. चिकन डिनर लेके गई है भाई. यही चीज चाहिए थी I8 की तरफ से. एक बार I8 OP in the chat कर देना गाइस. I8 के लिए बहुत ज्यादा मजा आ गया. एक बार गाइस I8 के लिए OP in the chat कर देना. चैट के अंदर एक बार I8 OP हो जाए. बहुत ज्यादा बढ़िया. चिकन डिनर एंड ओवरऑल रैंकिंग में काफी ज्यादा ऊपर ये लॉन्डे अभी आने वाले इस चिकन डिनर के साथ. मुझे भाई अभी बनी कहाँ. अकेला आदमी थक जाता हूँ. लाइक एंड सब्सक्राइब.
PMSL देखना है कि नहीं देखना है, यस और नो? एसटी ओवरऑल #2 पे ही है एंड वाइब्स का अभी डिफरेंस और बढ़ गया है। वाइब्स ने टोटल कितने पॉइंट लिए बताता हूँ, 1 पॉइंट का गैप था एसटी को चैंपियन 1 मतलब ऊपर आने का 1 पे, बट अभी वाइब्स ने अच्छा मैच निकाल दिया। आपको बताता हूँ अभी कितना गैप है, एक बार ओल्ड स्टैंडिंग आने दो। ऐसा कुछ नहीं ब्रो, कुल बॉय ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये भी देख सकता हूँ मैं वो भी देख सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। जहां आप बोलेगे, जहां ऑडियंस बोलेगी अपन वहां जाएंगे। 6 एलिमिनेशन स्काई बाई के, एक बार स्काई बाई ओपी इन द चैट कर देना गाइस, एमवीपी हमारे स्काई बाई बने चैट के अंदर। भाई होगी भाई क्या खेल रहे हो ब्रो? D11 पे टीम बना रहा हूँ, थोड़ा आपको पता है थोड़ा क्रूशियल बनाना पड़ता है वो देख के। लाट्स ऑफ अस खेला क्या तूने? बढ़िया गेम। नहीं भाई, ये 117 की टीम मैंने 2 मंथ पहले बनाई है। इसका ड्रीम 11 में मैं सब्सक्राइबर्स के साथ खेल सकता हूँ, लाइक उसमें तो टीम बनती है ना, फ्री होता है, लाइक मेरी टीम तुम्हारी टीम के साथ बैटल करेगी, ऐसा कुछ एक ग्रुप बनता है ना उसमें, ऐसा कुछ होता है ना, फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं, ऐसा होता है वो। Here we go, the top eliminators guys। 6 एलिमिनेशन, 3 एलिमिनेशन, 4 4 4। स्काई, वुल्फ, फिस्ट, डेजर्ट एंड डोबू। ओवरऑल स्टैंडिंग एक बार स्क्रीन के सामने आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ कितना डिफरेंस बचा हुआ है एसटी को यहाँ पे आने के लिए। आएगी आईपीएल प्रूवन प्लेयर चुनो, डोंट गो फॉर यंग वंस। ये ब्रो और डिलीट कर दिया, ओके यस। गाइस कितना टाइम, बस 10 मिनट बचे, पूरे पूरे 10 मिनट बचे और मैंने अभी तक टीम नहीं बनाई है। मेरे पास भी PS3 ही है। हवा चल रही है, क्रिएट कॉन्टेस्ट से होता है ब्रो, पीएल बेकार लगता है। अरे हम प्रैक्टिस वाला रहता है बट रूम क्या चल रही है बात अपनी भाई, ऑडियंस अपनी बात चल रही है तुम्हारी। कितना मैच बाकी है? 2 मैच बाकी है ब्रो, एक पीएमएसएल करेंगे, एक पीएमपीएल करेंगे। लास्ट मैच पीएमपीएल करेंगे, ये वाला पीएमएसएल करेंगे। ओके SITM एलुमे 21 बहुत बढ़िया, 16 12 वाइब्स के 10 पॉइंट है, वैनम 8 10 पॉइंट 11, मतलब 11 पॉइंट का डिफरेंस है गाइस। वैनम 8, एलियो 7, रॉ 5 4। तो एसटी मतलब अगर एसटी को आज के दिन पे #1 आना है तो उनको 11 पॉइंट टेक ओवर करने, 11 पॉइंट का डिफरेंस है। एसटी को इस मैच पे 11 पॉइंट लेने एंड वाइव्स अगर 10 पॉइंट और ले लेती तो एसटी को 21 पॉइंट लेने पड़ेंगे। मतलब समझ लो एसटी तो इस मैच में खेल ही नहीं रही, एसटी लास्ट मैच ही खेलेगी डायरेक्टली। जितना इस मैच में वाइव्स पॉइंट लेगी, इस मैच में जो भी स्टार्ट होगा 4th मैच, उतना डिफरेंस बढ़ेगा। एंड हियर वी गो, द ओवरऑल स्टैंडिंग आपकी स्क्रीन के सामने 81 पॉइंट के साथ। इस वीक पे तो एसटी अभी टॉप पे है, मैप सेकंड पे है 73 पॉइंट के साथ। देन एनबी, T2K, डाडा गाइज, I8, हाई वोल्टेज, अब्रप्ट स्लेयर्स, 4 मिरेकल वाइव्स, रॉ ऑफिशियल्स। तो दीज आर द 1 to 10 टीम्स आफ्टर द मैच नंबर 3। इसके बाद 4th एंड 5th मैच है गाइज, एक आपका स्लॉट बैठेगा, एक खेलेगा। लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन। गाइस आई एम शिफ्टिंग, तो ये लाइक अपना
Guys, match started. This sort of a circle happens. It's going to be more than one places where a lot of players, but Hill knocking on DBD's door. Speaking of DBD, about there being ready or not, they definitely are not right now. Oh, Hale is way prepared to do this. So now with DBD left with 2 players, it's going to be Jimmy OP and Yen. That nade for Jimmy OP will get slow. So it looks like a trade back by Jimmy OP. Got 2 for himself. Flash will be taken down. But now the rest of Hill, they are still active on the next compound. But at least now they kind of even up the odds. Tiger will be picked up by Sky only. But DBD is now in the position to push down. On the side of Hill, is it going to be a fail or successful push? Just now Sky push and he got 2 knocked down. But now Boom happened to be there. Speaking of third party, here we go again. Razy with a mini 14, shoot from afar, might be around 150 meters apart. Climbing down, wow, that's a fast. Never mind. DBD finish off straight away by Tiger. There's going to be 1 nade to rule them all. Instead of DBD, it's done. He'll definitely execute them just like that. But instead of Hill, it's not done and dusted yet for them. 2 teams eyeing them out. They got some help from Boom there, so someone got to buy Boom dinner after this. It's good for Hale, obviously, because now they managed to secure the compound and they're still in this despite them only having 2 players. But it's all okay for Hale. Still a rush in that worked for them. But because now they only have 2 players, 3 elimination points, okay. But it's also opportunity for SLD to catch that number 1. SLD taking a bit of quiet rotation right on top of La Bandita. There's nobody else around there. It's going to be Los Leones kind of circle. Or even La Bandita. I have a feeling it might heart shift on the north, maybe. I don't like the terrain on the southern part because it's going to be a really tough one for these guys. Multiple level of terrains. A box coming into it. They will actually have to face Alter Ego and Semna at the same time. Speaking of Alter Ego, they are the one bringing the fight to a side of Box, and Box Junos want to get out from here. But can he be chased down by Rosemary? You know for a fact that Rosemary never backs out from a fight. Here comes a shot. Half connect, and Rosemary made a U-turn. Realized a bit too far. He tried to reposition himself, get on the flank. Oh, pedal to the metal, my friend. Managed to get away. And now Vampire Esports against Team Secret. Okay, let's see. Team Secret can take over this compound. So far, they're on the lower ground. Vampire Esports on the high ground. But another team seems to be shooting. Team Secret, they're taking damage despite Vampire Esports not shooting yet. So it could be from the other side. We got Faze Clan, we got SLD. Probably pressuring Team Secret. Newsy tapping it out with a sniper rifle. La Bandita do have 2 teams, including Team Secret, how you mentioned before. Newsy, the moment he pops out his head to just see what's on the outside, a lot of teams actually eyeing out onto him. Can't even see where those shots coming up from. PEBE very separated among themselves, spreading out quite thin there. Still within reach if they need help. Box spotted them out. Winnie wants to have a go to scout. Where are they? How many teams are they up there? And we'll relay back the information towards the rest of our roster. But BTR is so close by. If Box not being careful, they might caught themselves in a trap. Ooh, yeah. We got so many teams close by each other in that area. But we got 2 teams here. 3 teams. Make it at 3. As PBE, they have the high ground. They can still play by the circle to move slowly, still having the high ground advantage. But next circle might not favor them, so that's where they need to plan how they're going to get down. And as we can see earlier on, there's a team right below them. I believe they got the information because they saw the cars moving, so they know that that area is danger zone. They can choose to avoid it, but they choose to take the fight. Mini 14 that taps onto the side of Box. These elevations, Raimon making sure they will not get an answer at all for Box Gaming here. But for Box, all they need is just a couple of smokes. And just run around the cliff end at the foot of the mountains. Make sure he will get himself covered by those mountains for a bit. But Winnie have to get out from there. But the Blues are just making it even harder now. Raimon got 1 job to do. That's going to be eyeing out the advantage of Box Gaming. He realized he heard the audio could come up from those vehicles, but couldn't see through the thick smoke. Yeah, the smoke really saved Winnie this time, but the zone is on top of him though, so he can't spend too much time on there, and plus the zone will increase damage now. And the zone, not too bad. Somewhere in the middle. Udo Alliance has one of the best positions. SLD as well, looking good.
But right now, challenge is for PBE because they're kind of surrounded by other teams too. Raimon still gatekeeping the side of Shunos, but he's the one that actually been punished here. Plays his own finish off Winnie. Shunos realizes no more time to waste. He need to make a move, but at the same time, the moment he realizes they need to make a move for box game, it's a bit too late now. The gatekeeper is sort of BTR at the same time. There's gonna be Sam9 on the other end, but now they're closing in the distance. Alter Ego has arrived. Box more than one team to deal with. Sam9 is up there listening as well as Lavi being knocked out straight away. Shunos might be next. Rosemary on the hunt. Just as when they got away from PBE, now they need to face the wrath of Alter Ego. And that is it. Oh wait, that nade? Whose nade was that? Was that a delayed nade by Box? No, it was Octa the Rosemary. Guys, we talked about this multiple times. Alter Ego again. I mean, like, Rosemary actually did toss out double nade down towards the side of Box just now. But I didn't see Octa coming out that way strong. I'm not sure what's the issue there for Octa, but calm down, brother. That's their own teammate this time. It's going to be Rosemary. On the side of Boom, on the other hand, there will be gatekeepers on the southern part. They did realize it's going to be more than one team due to the audio given away towards them. BTRU High taking on the side of PBE. Right across him, there's going to be a bit of a shy peeky coming up from both teams here. Both are sharp shooters. This way is going to be tough for PBE. Look at the amount of teams around them, including BTR. They will push in anytime soon. But speaking about pushing, it's going to be GE pushing on to RRQ. Still a 4-man squad. RRQ a duo here with one support behind. They try to take down one, but it looks like it's going to be... Wait a second. Oh, vulnerable from behind. Take it out west. So there's going to be one out for GE. They need to close things up. One being knocked down for now. They need to save him. They need every man that is, but RRQ not willing to bow out. They want to take up the challenge. They want to force the fight no matter how hard it gets. And GE have to deny their entrance here by the side of RRQ. But Team Secret, if they start to move, they can take advantage. But Octa and Potato down to Rosemary now to clutch it out. It's going to be 2v1 and that's it. And Alter Ego will place himself after a 14th place. GE and RQ on the other hand, not ended anywhere soon. Oh, it might be soon now. Now that we only have Ichi left. He's within the circle though. Can he pull off a clutcher against RRQ? He still has the time, but that is it. Napeko with the nade from the side. Takes out GE, no points at all. And GE at number 15, not good. They need the points. Sort of RQ on the other hand, spotted out by Bacon Time. PBE and Boom taking those elevations right on the southern part of the Lost Learner Circle right now. And Sam9 burned off by the blue zone. And Deuce on the other hand, clipped on every angle. PBE and Sam9 squeezing both sides to the side of BTR. They are being hammed. Oh, here we go. Dap is the only man now. Let's see, can Dap pull this off? He does have to circle, but 45 more seconds before the zone closes onto him. But Ryzen will not wait that long as Ryzen goes in, but he's going to be victorious from the other side, taking advantage of it. That, his time is bought. Oh, Sam9. Same goes for Liquid. Slither of health remains, but PBE are forcing this so hard for both teams. Make it even PBE kind of in a death trap right now. They're not making a move to a side of a circle. They're going to be doomed. 11 more teams to go with only 10 seconds remaining till the 6th stage of the circle. RQ, they definitely heard the pin just now. They need to flee. They need to push forward. Lucky enough, he evaded those nades. Mort just next to the side of Bacon Time. While Hill, Tiger is still alive here. Sky is still in there. I think this is one of the longest fight there is between Hill and Boom. Oh yeah, it's been a while now. But it might end really soon as Razy comes in. But they're on the lower ground. He's going to go into the room. Oh, he missed the room. He's still focusing on the second floor, but they're all on the ground floor. Razy punished for that, for not checking the ground floor. But now his teammates will come in. Tiger still with the DBS, but Hexas is there to save the day. DBS on the kill feed. DBS, UMP, M4. Finish off only 3 guns now with Hexel, like how we mentioned them, down to 8 teams within seconds. RRQ even taking out Bacon Time, but for Boom, after done with 1 team, it's gonna be Udo Alliance next. Can he drop those
a smoke grenade just to make sure they can cross those streets. But boom, they don't have time anymore. Here comes the rush. Flax coming in first. They even didn't manage to just revive one. There goes Razy on his feet. Pmbl left. But Razy didn't have time to even pull himself up for those HP. SLD have passed by, but Exiles burn off those corners by those mollies. Oh, but the nade from Razy from outside the building. Ooh. 2 knockdowns back to back for Udo Alliance. This could be the moment for Hexas. Hexas has a nade of his own. But Kenny also has a nade. He's going to toss out to the second floor. Hexas! Short range nade. Takes down Kenny. Beautifully tossed indeed. Nice. So I was fighting for his life. He still got himself the fight. And his last member of Boom with the DBS. Is the DBS! What is going to be the mini 14 taken up from afar? HVV, what bro, is that HVV, shot from PMPL SLD? Oh man, oh man. Caster Udo Alliance. They got a second lifeline now. But now they need to defend this compound against SLD. And SLD has a full squad. Bro, look at those nades, Choo-Choo. They're going to get someone from this. Then definitely they will, as Pyrogen will take out Shamir. This is an opening for SLD. Oh, Udo Alliance leaving with only Flax here. You look too low to do anything about this. Goes to knockdown for now. But the rest of SLD is going to be 2v3. Flax trying to jump down the windows possibly. Adik look trying to buy and stall time here by tossing those nades on the stairs. But that's just it. Pyrogen with that molly burning them off. The best utilities to actually flush people out is always going to be the best one, Molotov. He has to come from Pyrogen, the man himself. And now SLD won that fight. But look at this circle. This is such an open area. We have 2 airdrops though within the circle. And let's see which team will go for it. Definitely not Faze Clan for now because they have the compound. They're kind of comfortable there. But it's uncomfortable for Team Secret. Look at this. Shrap's got a knockdown. Rankit and the rest of PB happen to be freely passing through the open field there, even though they are quite too flat of a plane. We managed to squeeze in with a minivan. On side of Team Secret, they are in the pet. Vampires pushing them and just keep the pressure onto them with those mollies, those burnings of vehicles all around the corners. Don't want to push in for more. They have to cut across Team Secret if they want to get in the center. Stone definitely heard the audio coming from Aisin of how he tracks him down. But Faze taking on Vampires, turning it from behind. Vampires, they have to deal with 2-way war here. Ooh, but speaking about dealing with war, Monboy now needs to deal with SLD. Right at the forefront, Monboy all alone. He gets the first knockdown. Kwang Ji comes in from behind. Smoke will be popped up. Monboy 50% of health. He only has 1 first hit, but he has no time to reset as they will come in. But he gets another knockdown to Kwang Ji. Wow! Beautiful defense by Monboy. The rest of SLD nowhere near. Monboy, whatever he got, he will use it to his best. With this shack and only haystacks, like you mentioned, Trunks did now have it another go. SLD feels like they're willingly tossing into the bodies in front of the side of Monboy. But you know what? Trongzin knows to make a rap out of it. Now he needs to just revive his teammate. While Vintoris put out SLD players, it feels like a walking trap where PBE was at before. And now they're just so hot to get into this. We talk about, yeah, you got the circle right now, but there's nothing else to barricade themselves except for those haystacks and the small shacks. Faze, on the other hand, provided they are in the circle, they don't even need to move due to the compound. Yeah, it's definitely an uncomfortable situation that SLD is at. Let's see if Faze Clan still will have the circle next. But I'm kind of surprised Team Secret still managed to hold on to their ground despite Vampire raining nades onto them earlier on. But the next phase will prove crucial for Team Secret as there's another team beside them. Shrubs not satisfied with this. He wants to go for more, going for the flank side even. DPE do have a full squad, same goes for Faze and Team Secret. Having a last push here, nowhere near DBD for today for this map in Marama, but for Faze on the other hand and Vampires, the Ties have full squad for both of them. And for Faze, they all have to wait for the right timing here, waiting for the next circle. One woman trying to take out the players. ये अलग scene है भाई. Team Secret, sorry, that's going to be SLD. Coming up from the side of a Team VP once again guys, VP का comeback आ गया. हम lucky है VP के लिए क्या? VP comeback. Yeah, they're okay for now.
I'll be holding my breath for the next piece of the circle though. खेलिए भाई Let's VP see. लास्ट Ooh, मैच तो Team भाई Secret मजा आ has गया a 3 push little 3 bit of execution circle, but won't be enough to fit all 4 of them. So the fight with Vampire Esports, well, they might not want to let go of that, but they need to be careful as well because on the other side there's RRQ. Gosu. I just hope they do have enough ammunition for the start of SLD right now. They can gatekeep as much as they want. Just hope they don't running out of bullets and utilities as they're trying to gatekeep people out. Stone and Tony K trying to scout out the rest of Team Secret. RRQ, they're playing this quietly as they remain as a duo. Newsy on the other hand, transitioning himself, pulled over right in the eyes of SLD. This is a dangerous game that News is playing. I'm not sure what's the interest here, but he's going to eyes in from afar. He's out in the open just now. Now the rest of Empires rush into SLD. They want to take out the people that's so obvious right now. It's going to be SLD Team for now. Secret But by the one Team getting Secret is a this nightmare for elimination, Vampire it will by be Team Secret from afar. Oh yeah, Team Secret now starting to pump it up. But how does Vampire Esports get away from this? Nade after nade being tossed out. And there's going to be Stone, but Stone counterfire upon Drong's in. Still alive. He can still pick up his teammate and they're within the circle, so he has time. Unless Vampire Esports chooses to rush in. But speaking about rushing in, looks like Faze Clan is making their move. If Vampire Stone been knocked down, now Team Secret taking advantage to eliminate them in this instant. Faze might actually do the same thing, like how Team Secret does now. Faze is taking on the other end as well. RRQ stuck in between Zangers for Vampires. Crushing these two teams now, compressing them in the center. RRQ the first one to bow down with one more player to go. Jumper trying to find all those shots coming out from where? There's too many of them. I know, right? It's just crossfires everywhere at this point. You can't really tell. But Team Secret, so far, they've been staying quiet for the most part of this round. And now they're starting to show themselves and they still have a full squad. They're moving on to RRQ. Best G is alone though. But Team Secret, not really interested with the backline because they need to move into the circle. But Best G might be taken out still. Ventura stopping Team Secret from moving in. And the circle will not favor Team Secret. Selfie taking over the side of Empires. Can they get a back-to-back chicken with 2 more players remaining? Strong eliminated. Taking off an entire team of Vampires by himself just now with the help of Team Secret on your screen, boys. Vampires nowhere to be seen. Down to Faze as a 4. They got the most mania where Team Secret had a 4 before, but 1 knocked down. Jumper trying to just distract all the attention, give the rest of the teammate to have a bit of a time to recover themselves, but they're a bit too segregated for the side of Team Secret. Faze trying to force them out and bait out their fire. Coming up from SLD and Team Secret just to know the positions. But Mormon, look at Mormon. He's outflanking everybody else on the side of SLD. Oh, wow. Okay. Hopefully he doesn't get knocked down. Recoil spray. It's going to be hard for him to be picked up. But right now, Faze Clan, they are split between 2 teams. So their focus is M7 पे कुणाल के 4x के spray 6x के spray देखोगे डर जाओगे doesn't look like they have a vehicle, so it's a little bit hard for मजाक them, नहीं कर रहा सीरियस बोल रहा but they're still able to get into the circle. But the next stage is going to be tough. A lot of open space between them and Faze Clan. In fact, that Faze Clan has opened up nicely लोगों के within शॉट the क्या circle. होते हैं M4 पे 6x को 3x strongly so now. Nice. Oh. Wow. कुणाली का शॉट है M7 पे 6x लगाना. Coming up from my boy to spray to a side of Mormon. Spotting out Mormon who healed himself back up. Kit on the other end bleeding out. 4 eliminations for Team Secret with 2 more players remaining. Trying to work around Faze Clan, who got himself quite a few there. We're talking about they are dominating over the circle. They have control over it. Team Secret always got a bit of a tag team, but Faze right across that picks a shot 1 more down Team Secret player. SLD goes to try to take advantage on the side of Team Secret as well. They're dominating on the side of Team Secret, but they have 8 on the side of SLD. I'm not sure how much they have for Faze, but right now feels like they're being caught on both sides. Faze and SLD both are eyeing out to a side of Team Secret. They decided, you know what, we need to take this mini event, find ourselves a couple of assets to take covers from. Yeah, and they're going to let our boy go, but now they're just going to rush into the middle of the field. Now SLD and Faze Clan between them, as Jumper will be knocked down to the last man. There's going to be Kid, and Ventoris knows exactly where he is, but before he's able to take him out, it's going to be Mela that secures the point for Faze Clan. Ventoris
Shine like diamond आज का दिन बहुत बढ़िया गया है स्क्रीन का 2v2 between SLD and Faze. No doubt. Both having each बहुत बढ़िया but Busu, goes in knockdown Ventorez, first. entry दिला दी Make the opener for the team. पहला It's going to be low on Melan HP. Ventorez is 1 It's a 1v1. back to square one. Krongs in versus side of Ventorez, but that's in Faze. What a gameplay by Team Faze भाई ओह सांसें रुक गई है गाइस सांसें लॉन्डो की सांसें रुक गई थी लास्ट में होगा तो भाई सीरियसनेस देख रहे हो गाइस गाइस एक बार ओपी इन द चैट कर दो व्हाट अ गेम प्ले गाइस व्हाट अ गेम प्ले बाय टीम फेज यार एंड नाइस वन टू टीम शाइन लाइक डायमंड भाई मेला भाई बोल रहे मैंने बोला था वहां पे तुझे मैंने बोला था वहां पे तेरे को बंदा है तूने वो ध्यान नहीं दिया अरे अरे कैमरे को पोज दे रहे भाई उफ MVP भाई वेंटोरेस भाई फुल सीरियस मोड 6 एलिमिनेशंस 1189 अरे 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 भाई फुल मस्ती चिल ऑन गाइस टफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है वीपी ने भी काफी अच्छा खेला इस मैच के अंदर इवन दो अगर आप देखते हो कितने सारे क्लचेस कितने अच्छे नेट्स एंड इवन दो मेरे को एक चीज अच्छी लगी यहाँ पे थर्ड पार्टीज जो ऑन पॉइंट हो रही है टाइमिंग पे वो बहुत अच्छी हो रही है काफी अच्छा भी लग रहा है देख के चलो भाई साउथ एशिया में कंपटीशन पे आ जाते हैं अभी fighting it out against the players अब of साउथ एशिया Pmwi. देखेंगे So पूरा lot of कंप्लीटली fights going on क्योंकि इसके बाद all हमारा around the मेरे को ये map. जानना है Situm इस मैच comes के in बाद to कि take हैशटैग down 1 a कौन player एंड of कर रहा है आज के 4MB2. दिन दैट्स इट Nima ये मैच though, 4MB के लिए great काफी play, इंपॉर्टेंट टू and मैन ऑलरेडी MB वो हो Sports, चुकी है जो they कि find एक themselves बहुत too ही much अच्छा संदेश and नहीं SG, है they did 4MB not के even लिए push right now. ओवरऑल गाइस सीन So काफी ज्यादा टफ है Skylights, अगर आपको they पता are in होगा a very good spot. एसटी They एंड have the वाइब्स के zone. बीच में And तभी हम the फोकस gods कर of रहे हैं PUBG टीम्स Mobile के just ऊपर gave them a drop मीनवाइल right काफी into सारी their hands, and that's an सारी टीम्स बेस्ट है MK14 यहाँ पे बस recovered. हैशटैग 1 कौन होगा ये Skylights, कियोस है they are मन में set जानने की for the इच्छा है chicken now, क्योंकि भाई and if they don't get मल्टीपल it, चीजें no one ईस्ट ने else यहाँ can पे be नॉक blamed दिया for है it. बॉनी भाई को रोवा भाई यहाँ पे नॉक पड़े हैं bringing नो problems फियर for the भाई ने players of फुल IES. हार्ड Two एडीएस players रखा have हुआ been है knocked दे down. There is एग्जैक्टली no नो की chance to go to सिचुएशंस revive. क्या है The वहाँ पे point प्लेयर्स है जो कि but नॉक Bonnie पड़े हैं can be फिर revived, but फेट्स no fear with that Info16 is still looking for the confirmation. GRS rolls holding a little shack. Sooner or later, he's going to get भाई जोन spotted जान down. मुझे कुछ GRS नहीं पता अभी not क्या in है the हल्का best हल्का दिख position रहा है right मुझे now. T2 आए हाय But T2 yes, के yes, मेरे को definitely एक और very वैसा good मैच याद आ position. रहा है T2 But के they are being surrounded यहाँ by थी अंदर T2 एंड kids. पीछे से As एसजी per हटिया over रहे there, थे and here is the पीएमपीएल का right मैच याद आ point. रहा है आई डोंट नो 4 आपको याद है कि gets नहीं the है बट confirmation as पुराना well, ऐसा and मैच 4 याद आ what रहा is है happening? They are एज losing close डीआरएस frontal थी शायद battles. उस Now टाइम they पे are down to a चिकन आया single player, that डीआरएस का Apex. T2 के ही Yes, थी यहीं पे होल्ड Apex कर can रही थी also do a lot in this situation considering his position. He can find few good knocks and confirmation onto the plus of DRS. ब्रो एसटी कहाँ है ब्रो एसटी इस मैच में नहीं खेल रही He एसटी is आपका still लास्ट मैच pestering जो है the वो वाले players of मैच में IE, आएगी but it क्योंकि is राउंड रॉबिन Rules फॉर्मेट है OG from तो एक ग्रुप DRS बैठता है who's जिस getting जो those ग्रुप अभी knocks. बैठा है उसके And अंदर एसटी भी IE, है I तो think एसटी they'll be विल surviving प्ले with ऑन just लास्ट one मैच एंड Bonnie, लास्ट sir. मैच पे Bonnie वाइब्स नहीं खेलेगी trying तो to get वाइब्स as का many एक ही position बंदा points बचा as एक possible एलिमिनेशन because लिया two है players in the shack मतलब 12 are पॉइंट out of the अभी game. तक 12 Nova, पॉइंट लेने his हैं एसटी frag को gets हैशटैग secured बनाना from है the player of अगर अभी Skylights. तक का They are ओवरऑल trying सिनारियो to बताऊं get as many frags as possible here, Skylights, and they almost have hit double digits, and still 23 players are remaining. I'm looking forward towards a 15 plus frag from the players of Team Skylights because of the position that they have. Look at the other teammates. They have got themselves inside the zone, and they are looking very strong with the support from the player. Basically, the overwatch that is being provided from the player of Team Skylights. NB, Apex they have a लास्ट गाय compound, स्टैंडिंग but that's the only 10 advantage. टीमें बची They're हुई है reduced to 2. Eos on 4M, next level Kuyo TRZ, again, a team with just 2 players who had an impact in the early game, but are now just spectators to the fights ब्रो थोड़ा happening nearby. फॉर्मेट समझा दो कौन से रीजन का बताओ There is a lot of फॉर्मेट fun कुछ नहीं है going ब्रो into the मैचेस game. खेलने Yes, हैं no आपको fear पर दिन पे because हर एक टीम को 4 trying मैचेस to get this मिलेंगे knock onto the और plus आपको of टॉप पे DRZ, आना है दैट्स इट and finally finds a राउंड knock रॉबिन onto फॉर्मेट है Rose. जहाँ पे एक There's ग्रुप no chance बैठता है for a revival. टोटल Easy 5 confirmation मैप्स will होते हैं बट come in, एक मैप but एक टीम का मिस City होता है ग्रुप Esports के अकॉर्डिंग Desert finds a knock onto CEO. 16 मैन की लॉबी बनती है 20 बंदे खेलते हैं इसीलिए इसीलिए टोटल मैच 5 होते हैं बट एक ग्रुप बैठता है तो पर ग्रुप हर एक ग्रुप बैठेगा मैच तो 4 मैचेस हो जाते हैं मीनवाइल आपकी स्क्रीन के सामने स्काईलाइट्स गेमिंग T2K eliminated by SITM not a good one not a good one a lot of single solo players Elementrix I8 Venom Vibes Hima bhai under their control, trying to challenge out the players of D Venom, especially the last player, Rayleigh, who is on the आप upper लोगों को ground, मानना but नहीं AJ from मानना the पड़ेगा back ये line चीज with सॉरी that Info16 कि एसजी का लाइक जो मैंने डीआरएस की बात करी थी उस टाइम
पे यही रोस्टर था DRS पे, तो उनका ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने देखा है, काफी अच्छे पॉइंट्स निकालती है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे यहाँ पे 11 पॉइंट टीम SG निकाल चुकी है, एंड SG का ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग है हमेशा से इस लाइनअप का। आज मेरा बर्थडे है, बाहर जा रहा हूँ फैमिली के साथ। टेक दैट, आई विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, अच्छे से मनाओ, फैमिली टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेजर्ट एक्स्ट्रा एक्स को नॉक करा है एंड लास्ट बंदा था, फिनिश भी होगा। स्काइलेस गेमिंग सेम मिला था। जब मैं आपको मूवमेंट भी बता देता हूँ, तब वो था जब स्काइलेस गेमिंग का ये रोस्टर DRS के अंदर था एंड वहां पे उन्होंने बैक टू बैक 3 कंटेनर निकाले थे एंड टेक ओवर करा था जियूस को। याद है वो मैच? एक जोन आपका इरेंगल पे या स्नाइप पे बना था, सेकंड ये जोन था जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, थर्ड एक और मैच था जो मेरे को याद नहीं, बट मेरे को 2 मैच क्लियरली याद है। यहाँ पे लास्ट में T2 का एक बंदा था, स्मोक हुआ था, बहुत बसट थी, केओस था एंड SG का लास्ट में आई गेस जियूस ही बची थी जिन्होंने वो अपर हिल जो नो फियर के पीछे वाली है वहां पे थी, जहां पे उन्होंने थंडर हो गया था एंड SG ने चिकन निकाला था। मेरे को अगर मैच याद आ रहा है, कम से कम ये 1-1.5 साल पुरानी बात है। यस, ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी बात है, शायद 1-1.5-2 साल पुरानी बात है जो मैंने आपको बताया, जब DRS ने सेम लाइनअप था जो SG में था, बैक टू बैक चिकन निकाले थे। मेमोरी थोड़ी शार्प है गाइस, बादाम खाते क्योंकि मीनवाइल he needs a frag here. He needs to fight it out against DRS on your screen, डेल्टा भाई एंड बहुत बढ़िया एंड ट्रेड पे नीमा भाई ने डेल्टा भाई को नॉक किया। But that's a trade you'll accept. You'll get that revival and it'll be a fight between these. ब्रो टूर्नामेंट कब चले ब्रो? इसका लास्ट मैच है, बाकी ये टूर्नामेंट Gaming, they are the unstoppable force right now. 11 defeat points already in their favor. The majority of the real estate is under their control. The split that is coming from their side is definitely working, beautifully working in their favor, and they are looking unstoppable once. Yes, their 2 players are so very close to the players of NV Esports. नेक्स्ट वीक सारे टूर्नामेंट खत्म हो जाएंगे। The remaining 2 players are providing the necessary cover इस fire वीक में from the आपका backline. PMPL PK At the खत्म same हो time, जाएगा, City देन Esports, they are PMPL with the इसका silent साउथ words, एशिया का not नेक्स्ट वीक making खत्म हो too जाएगा, much noise, not और grabbing रेस्ट any ऑफ द sort of वीक attention, लाइक but looks like जिनके भी Scalars धीरे Gaming, धीरे they इस do महीने have a तक vague इस idea where मंथ the में players आपके could मोस्टली be. खत्म हो जाएंगे। But लिक्विड right वीडियो now, पे चेक Nima कर has लो to be ब्रो, very क्या cautious चेक करना है before बताओ? peeking from that अम्मी angle लिक्विड because वीडियो है he ब्रो, got बताओ। a lot of damage from the side of, I believe, DRS Gaming over there. But DRS, well, they survived, all thanks to Scalars Gaming. That came as a blessing in disguise. But for how long can they survive? Because they have to move inside the circle. क्वालिटी you reduce Yes, किया it भाई। is few meters, but still, it's not going to be so easy with 6 teams and 14 players remaining in stage 7 circle. भाई कौन सी टीम डायरेक्टली PMW जाएगी? PMPL की विनर ग्रैंड फाइनल्स की, not league stage. Onto the player of I8. League stage is a part of a qualification. I8 meanwhile YP SITM Dobu ओके वाइब्स भी एलिमिनेट होगी गाइस, वाइब्स 2 पॉइंट लेके गई है, मतलब 14-15 पॉइंट चाहिए एसटी को अगर उनको #1 आना है आज के दिन पे ओवरऑल स्टैंडिंग पे। तो लास्ट मैच एसटी खेलेगी एंड लास्ट मैच हम लाइक जो है क्योंकि हम इस पे ही करने वाले, जो भी सीन होगा देखा जाएगा गाइस। बाकी आप अपने व्यूज नीचे कमेंट करके बताना। दिस इज द सेकंड लास्ट मैच आपकी स्क्रीन के सामने, 5 टीमें लाइव है, एसजी SITM TRZ RS एंड NB Esports। इट्स अ 4v3v 2v2v2 फाइट आपकी स्क्रीन के सामने। QB, he finds himself in a good spot. He cannot be shot upon in this area because no one is watching him except for his teammates. So even Situm is trying to challenge the real estate that the players of team SG has. DRS is completely stuck on one corner of the map, and if the zone does not support them, they might be the first team to fall from here. Could be possible, but it's the first time that we are witnessing such a big dull movement in the game at this stage in stage 7 circle, because all these teams like to go for the aggressive stance, especially after stage 4 circle. But now they do understand the gravity of the situation, that every single point matters a lot. It's only a few games remaining and you have to be in the top 16. You have to put your A game forward. NB Esports, Situm Esports, TRZ, these are all the teams that are struggling. Yes, DRS, they are in a very safe spot in the overall ranking of the league's plays. Scalars Gaming, they also need good points in their favor, otherwise any team can topple them over. This is the reason that we are seeing such a big dull movement, because all these teams are somewhere close to 14th to 20th spot, majority of these teams. But right now Scalars Gaming, well, looks like they have spotted down the players of DRS, and AJ with that smoke wall is trying to close in the distance, but Killer YT out there, and AJ knows exactly where he is. But the question is, does Killer YT know the grenades? Definitely now Killer YT knows. Can he survive the grenade? The barrage of grenades that are coming from the side of AJ. And finally he goes down, leaving Delta all by himself.
Don't know why Killer decided to go for that spot. I think DRS wanted to control more ground in terms of the players they had. They just had a very small area, and Killer, he will be defeated. He will be taken down. But they also have another player to deal with, Delta, and I think Mafia Ninja, in the voice that he had with the buggy, he spotted this player down and takes care of him. This is the 13th frag, eliminating the players of DRS, and even Dobu is down. So Situm, the team that could have challenged the players of Team Skylights, they also reduced this to Dobu. He will be sprayed through the smoke. 14 eliminations SG के पास, 4 बंदे भी अलाइव है, मैन पावर SG के पास, SG के पास मौका NB को वाइप करने का, पुश, यूटिलिटीज, 3 नेड्स, फेयर इज द माफिया निंजा, द नेड किंग, मिनी रेड जोन, अभी भी याद है। कि भाई if both are in SSC then any team will change their name. क्यों? हल्का फुल्का चेंज आ जाएगा, वो कर लेंगे अपने प्रोडक्शन वाले हल्का फुल्का, लाइक I8 क्रू कर देंगे उसको, I8 कर देंगे, या इसमें कुछ भी कर देंगे, वो क्या है इसमें, क्यों नाम क्यों चेंज करेंगे भाई, नाम तो नाम ही रहेगा। PMSL सऊदी अरेबिया डेट ब्रो मई में मोस्टली लेट होना है बहुत, शायद मई में होगा। लो भाई SG के 2 एलिमिनेशंस ऑलरेडी। Let's go Mafia Ninja भाई, nades and knock. Trying to find some opening and connection onto the plus of NB. They have a huge task at hand. They need to just Fist boy, बहुत बढ़िया need for as long as possible. बढ़िया need है, पहले बोला था आपको। That's a good nade that just burst down in the भाई, and AJ goes down to Skylights. Defaulter at the very last second, or do they? Nima, Mafia Ninja also goes down. Enemy, what a hold! What a hold on the choke point, and the favorites to win this game have been reduced to just 1. No Fear now will have a lot of fear in his heart, and let's see how he overcomes it. He cannot, because Kuyo TRZ, the nade just gets the flag, and the whole team just gets eliminated for MTRZ. Perfect third party coming in from the set of TRZ brings the demise of Skylights Gaming and NB Esports. And NB Esports, nice played NB Esports, बहुत बढ़िया, OP. It's a 2v2 situation and QB with the grenade is looking for SITM chicken, देखो क्या होता है bro. Rare X. मामा भाई knock, अब तो probability है, but देखो आगे क्या होता है. QB over there. QB along with his teammate Desert finding a knock onto Mamba and Rare. And here we go, chicken dinner goes to team SITM, but honestly saying SG का chicken होना चाहिए था, बट एनबी स्पोर्ट्स जैसा हम बोलते हैं, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एनबी स्पोर्ट्स ने पूरी गेम पकड़ दी। एंड गाइस, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको भी जानना है #1 इस मैच के बाद चेंज होगा या वाइब्स ही रहने वाला है, तो लास्ट मैच को जरूर से देखना। तो गाइस लास्ट मैच है, इस मैच को जरूर से देखना। टोटल 11 एलिमिनेशन एंड 21 पॉइंट लेके गई है। लेट्स गो बॉयज, एक बार हिट मेक श्योर टू द लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम सर्वर गाइस, जहां पे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। मतलब सारी चीजें इस पोस्ट से रिलेटेड गाइस, सारी चीजें अगर आपको कुछ जानना है जो भी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। 100 तो नहीं हुए बट 50 मेंबर्स हमारे होने वाले, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो। एंड मैंने वहाँ पे अपनी ड्रीम 11 की जो टीम बनाई, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, रुको मैं भेज रहा हूँ अपने। तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो, 50 मेंबर्स होने वाले। चलो मैं आपको अपनी ड्रीम 11 की टीम भी दिखाता हूँ, तो टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ जो मैंने लगाई है, देखो क्या होता है। ओ भाई प्रभ सिमरन भाई, ये तो हमने लिया ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। प्रभ सिमरन भाई मार रहे हैं भाई, प्रभ सिमरन भाई लिया ही नहीं, गलत। एक भाई ने हमारा प्रभ सिमरन भाई लिया हुआ है और वो हमारी मार रहे हैं भाई। भाई डिफरेंस हो चुका है डबल। जेसन होल्डर आगे भाई, जेसन होल्डर निकालो भाई। उन्होंने जेसन होल्डर लिया नहीं है, प्रभ सिमरन लिया है जेसन होल्डर की जगह। काफी अच्छा लक इनका चल चुका है। तो वैसे देखो मैं अपनी टीम भेजता जो मैंने
की वजह है मेरी। Where is my टेलीग्राम। भाई ज्वाइन कर लो, हमारे 43 हो चुके हैं अपने मेंबर्स हमारे चैनल के अंदर। एक यार हूँ मैं। चलो गाइस चैट बॉक्स के अंदर आ रहा हूँ। चलो भाई आगे आ जाओ चैट बॉक्स के अंदर आ जाओ। 12-13 पॉइंट का डिफरेंस है गाइस मोस्ट प्रोबेबली मैच के बाद। देखो क्या सीन होता है। आय हाय मेरा फोन हैंग मारने लग गया। आज ज्यादा स्ट्रीम कर ली। कितने घंटे की स्ट्रीम हो गया इस बताना। नहीं हैंग मार रहा भाई। स्ट्रीम ही नहीं ओपन हो रही भाई, क्या चक्कर है। हेलो गेम के लिए तो रेडी है सर। Thank you भाई। SSC is very less game between PMPL ऐसे I thought साउथ एशिया आराम से देखूंगा मगर इतना क्लोज रख देना अब SSC नहीं देख पाऊंगा एग्जाम की वजह। एनी रीजन फॉर जल्दी क्यों कर रहा है रॉबिश भाई। एशियन गेम्स यार आपको नहीं पता एशियन गेम्स की वजह से हो रहा है। मीनवाइल नो फियर भाई 5 एलिमिनेशंस बहुत ज्यादा बढ़िया। अप्रिशिएशन नीडेड। ओ टॉप एलिमिनेशन लीडर बोर्ड में बाय द वे 3 प्लेयर आपके SG के ही है। देन डेजर्ट फ्रॉम SITM देन नीमा भाई डैमेज भी ज्यादा नो फियर का मैट कैट एक नीमा भाई हाईएस्ट असिस्ट में भी है सैक गॉडलेस एंड मैट कैट एंड गॉडलेस भाई हाईएस्ट हीलिंग डन में भी है। सो गाइस लास्ट मैच मत मिस करना। लास्ट मैच विल बी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वन। तो आ जाने तेरा यार हूँ। रिकल वाइव्स 3 पॉइंट लास्ट मैच में मैंने आपको 11 बोला था 13-14 15 पॉइंट चाहिए। 15 मैच पॉइंट फ्रॉम दिस मैच 15 पॉइंट। किसी नए के आ जाने से गाइस आ जाओ चैट पे थोड़ा सा। here we go 81 still stalwart is in top for the weekly rankings। अगर आप देखते हो मैपटेक्स स्पोर्ट 73 पॉइंट बट द सीन इज द ओवरऑल रैंकिंग। क्या ओवरऑल रैंकिंग हमको इस मैच के बाद दिखेगी? क्या हमको ओवरऑल रैंकिंग इस मैच के बाद दिखेगी? सो दैट इज द क्वेश्चन। कितना लास्ट मैच ब्रो? लास्ट मैच के बाद लास्ट मैच बचा है। एक तैयार हूँ मैं तेरा यार हूँ। लो भाई लास्ट मैच आपकी इस स्क्रीन के सामने 30 यही टाइम है स्टार्ट होने का। तो भाई तो डिले चल रहा है फिर भी 5:30 है ना हमारा 15 मिनट आगे। तो 15 मिनट आगे मेरा 8:10 है मतलब हमारा 7:50 में मैच स्टार्ट होना चाहिए था।
चलो भाई, ए ग्रुप आपका इसमें बैठने वाला है, बी इंटू सी इंटू डी इंटू डू ग्रुप की आपकी बैटल रहने वाली है। दिस इज द लास्ट मैच एंड हम आपको बता चुके हैं 15 पॉइंट यहाँ पे एसटीई को निकालने, अगर उनको #1 पे आना है। अगर एसटी 15 पॉइंट नहीं निकाल पाती है तो वो #1 पे नहीं आ पाएगी आज के दिन पे, बाकी उनके पास 3 दिन और रहेंगे। एंड मैचेस गाइज आपके कल नहीं रहने वाले, मैचेस आपके स्टार्ट होंगे परसों, लाइक फ्राइडे से। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे विल बी द मैचेस फॉर द वीक 3 साउथ एशिया रीजन की अगर हम बात करें तो। गाइज लेट्स गो, एसटी 100 पॉइंट। ओके भाई, गाइस क्या लग रहा है इस मैच पे क्या होने वाला है? क्या एसटीई टॉप पे आएगा या वाइब्स ही रहेगा? हु विल बी ऑन #1? आज का बिगेस्ट क्वेश्चन। तू ही वजह है मेरी। का जुनैद अरे 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 जुनैद भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, ऐसी विकेट निकालो यार, एक और विकेट चाहिए भाई। नहीं, एक विकेट और निकाल दे भाई। लो भाई, आपकी स्क्रीन के सामने लास्ट मैच आज के दिन का, और आज के दिन की आज की आई गेस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रीम है। Ahmada is the place from where the plane path has taken off, and Landrilla is where it ends. It's again a little bit north-oriented plane path. The southern cities like Los Leones, Minas del Valle, Los Higos, it won't be easy to drop in those locations. But let's see, how do the teams adapt? How do the teams go around at different drop locations? Because again, in map of Miramar, you need more than 3 to 4 drop locations rather than just having one and sticking to it. So let's see how the other teams that usually drop in La Bandita, Impala, Los Leones, what decisions do they make, and where else do they decide to loot on? For now, all these teams don't have a dynamic drop location. They stick to their basic original drop spots, map text going towards the side of Torre Emuda. But yes, I do agree, sometimes having a dynamic drop location do give an extra advantage. You can bring in the surprise factor. When you have a target on your back, someone is keeping a bull's eye on you, you can definitely surprise them by going towards a secondary drop location. So yes, it is going to be favorable, but right now Skylar's Gaming again headed to their original residency in the city of La Cobreria. El Pozo will be occupied by the players of Raw Officials and Leo Esports, but this time the circle is going to be Southern Eastern Circle. So that means the players of Sitim Esports can benefit a lot from this. And D Venom also, because they like going towards the side of Piotr Piracio. I8, they will eventually go towards the city of Los Leones, and like I was saying, Fritz, भाई क्या बात है, जोन आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई, बहुत भसड़ू जोन है भाई, इसको हम भसड़ू जोन बोलते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट देखो कहाँ जाता है, वाटर शोज फेवर करता है, या फिर हमने अपोजिट तो ग्लोबल पे बहुत कम देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट खा गया हो कंप्लीटली। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग पे एक सर्कल पे बना था, बट उसके अलावा हमने देखा नहीं है। This time I'd like to see HG. भाई एसटी का ये फाइनल लाइनअप है अब। यस ब्रो, मेरे मलिक भाई यही फाइनल लाइनअप है। पीएमएसएल प्रो नहीं, लास्ट मैच है, इसको यही करेंगे ब्रो। आर एनी इंडियन प्रो प्लेयर प्लेइंग इन अदर रीजन? मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं ब्रो, जितना हमने देखा है वैसा तो नहीं देखने को मिल रहा जितना हमने अभी तक देखा है। एसएम में तो कोई भी नहीं है। So the thing that they get to try and play the map from देखा नहीं यार ब्रो, very important, and I'm not sure if they will और be नॉलेज able में to नहीं get है enough क्योंकि loot बाहर to के even win a रीजन single हमने frame. देखे नहीं, हम On the मोस्टली other hand, ऐसे देखते Raw, हैं, हम पीएल देखते they हैं। are very far डीपली अगर away हम from बात the करें zone, 2500 meters. वेस्टर्न So यूरोप, they really need to be quick वेस्टर्न with the यूरोप में loot हम and then move चैंपियनशिप inside लीग the की वहाँ zone. पे टीम सही थी नहीं थी। And we have first blood coming up from the side of Sitim Zero, with the Vector getting the confirmation onto the plus of Abruptly Sleepy. Abruptly, the split drop is not working in their favor. And now Zero better be prepared, because from the two sides I can see on the mini map, Abruptly are present. Chari might come in, or maybe Gangsta might come in. But right now Zero with that Vector, 38 bullets. No armor, no vest, nothing, no bandages, nothing, just a single weapon in his hand, is waiting patiently in that little shack area and holding on to his dear life, or maybe
looking for one more rock onto the players of Abrupt Slayers. Gangsters all alone. So but that's the information we have, right? Situm, I don't think so. They'll know that gangsters all alone and they won't be able to punish it. Chari's on foot. That is something interesting. I don't know if they do have good loot, because leaving a player like this completely alone could be very devastating if he gets eliminated early on. But yes, other than that, Situm, they've got one frag. ASL, they've already lost Leapy, so it's better to maybe regroup and try to loot together rather than just looting all alone, because this again will make you vulnerable to a lot of teams trying to maybe rotate in the zone. There is a possibility, but Abrupt Slayers, I am very disappointed. Okay, let's be honest. Abrupt Slayers, they were not performing initially in the start of the event. Then suddenly a Miramar game came in and they started raining death and destruction everywhere. Where they created a lot of mayhem in the game. They got a chicken dinner for themselves. After that, every single time in the map of Miramar, Abrupt Slayers performed really good in week 1. But week number 2, their misery continued. Week number 3 looks like it's not looking good for the players of Abrupt Slayers. Up until now, it's already 2 days done and dusted. भाई कल को भी क्या PMPL है नहीं ब्रो, कल Abrupt रेस्ट है. need to perform really good. On the other side, High Voltage, after showing one good game, they are all again missing. Yes, that they are. High Voltage, they got that chicken, and after that they haven't even been able to be consistent, not in top 5. So High Voltage need to buckle up, maybe capitalize on that good game that they had, and maybe finish this game on a positive note. And by positive, I mean getting at least 10 to 15 points. नहीं ब्रो, कल नहीं है. काफी important match ST के लिए guys, 15 point. ST has also been sitting out in a lot of games. They haven't been performing that great. Yes, they're consistent. Yes, we do find them in top 5. But then again, 7-8 points is what they have. They have a good opportunity to completely consolidate their lead on the top of the leaderboard. But this map of Miramar, let's see how does it go for them. And I totally forgot about Stalwart Esports. They are also in the lobby. And today they have not got a single chicken dinner. So there is a very high probability of Stalwart Esports. Because last Miramar, Stalwart Esports were coming from the northern front when they were taken out pretty early in the game. But they did showcase a very high fragging game. So there is a big chance that Stalwart will also be looking for a dominating performance again this time. On the other side, we have the players of IHC going for the loot, basic resources. They all have level 3s, level 2s, perfect grenades, first stage. They have everything in their backpack. So IHC is also looking very good. They are in the city PMSL है. कल का मुझे PMSL का आइडिया नहीं है ब्रो, पर rotation PMPL का because कंफर्म look तो at कल that, नहीं हो they रहा. are भाई you 1500 literally streaming meters 5 away plus from the hours. circle, Oh Prince. my god, is it true or not? Oh, IHC. The rotations have to come in quick. Yes, it has to come in quick. And Zol is already leading the charge. Pickaskri कहाँ गए? Pickaskri has the bro bus, गए. although that's the Pickaskri worst vehicle in the whole game to have. A slow-moving, fat vehicle which attracts a lot of shots onto itself and has very little HP to work with. Man, I'd rather prefer walking on foot if the situation wasn't this dire. But it is, and I think they did not find better vehicles, so they have decided to go with the big fat bus. Or again, just risking one player's life in that vehicle. That's good news too. If you lose, you just lose one. If the vehicle blasts. I8 though, on the other hand, they are in the zone. They have all the time in the world to loot, and that is what they're enjoying. And so are the players of Sitim Esports. They also do have the safety of the circle. They are also in the stay of Los Leones. Sooner or later, I8 will go up against the players of Sitim Esports or vice versa. But right now, Abrupt Slayers Achari is keeping a close eye onto the players of IHC. And looks like he's not going to engage in a fight. He's trying to hide because he's all by himself. Where are the remaining players of Abrupt Slayers? Out there in the open, Chari, this is not the position you want to be proning in. You have a compound, hide in the compound, and wait for the players of Leo Esports and other enemy like IHC to go for the rotation and leave you all by yourself, that you can go and move inside the circle. Abrupt Slayers, they are not looking so good right now. 206 meters to move in, and yeah, they've lost a player. Sitim was the team that had that early frag for themselves, and now ASL, they are struggling to even find a vehicle. Plus, there are so many teams rotating nearby that
one of these, I think, have already scooped some vehicles from that road. So ASL will find themselves on foot for the rest of the game, is what I believe. Other than that, the zone is again shrinking towards Los Leones. It's a repeat telecast of game number 3. Let's see if the team that won that game is again able to come out on top or not. Chances are there, but right now my eyes are onto the plus of Stalwart Esports, because Stalwart always goes from the northern rotation, and yes, they are on a very close proximity to the plus of high voltage. At the same time, from the southern western front, we have the plus of raw officials and ILC going for the rotation. They might cross paths with each other. And on the eastern coastline also, we have TRZ, Deadeyes, PL कल yes and मेरे भाई, कल Naptex PL होगा, कल coming PL stream करेंगे. from inside the circle. There is a chance they can also go up against each other, but Elementrix, well, today they are showcasing good 4v4 fights, but still they need more points for themselves on the other side of the map. Somewhere else, Desert has found a beautiful knock onto the plus of Leo Esports with a grenade, but the question is, can he find the confirmation? Oh, let's see if he's able to find that confirmation or not. Dobu also gets taken down, so Situm, they find themselves in a little bit of a troublesome situation. Elementrix though, in cusp, he has his eye on one of the teams, but let's go to the fight. Situm, Desert gets the counter knock. Will put high Hati Dami to bed and make sure he does not come and show his face in today's game. Liquid dealt a lot of damage, almost gets the knock if he's able to land even a single shot, but that he doesn't. And Jiro is able to get another knock. Situm, they lose a player, but they themselves find themselves in a good situation. The final fight, Jiro loses it out. Desert left all alone. Mr. Smokey and Sussex now have that upper hand in the fight. And the last player from the side of Situm Esports, Desert, has to make the mature decision and leave the fallen comrades bleed to death, because there is no chance that he can save them. Better fight for the placement points and try and survive for as long as possible. But right now, Sus has his own troubles as the players of high voltage are showing on his doorstep. It's a 1v2 situation. He's not looking good, and the remaining 2 players of high voltage can also chime in. But right now, they're providing the cover fire, the backup support from the backlines. And Sus is not looking so very promising. He has to hold on to his position, because the minute he's going to give any sound cue to the high voltage, they're going to rush towards him. But right now, Incus is the one in the process of high voltage with that mini. Well, Incus better not peek or give a glimpse to the players of high voltage. But look at the position of Sus. He's just waiting patiently for the player Jiggle to come upstairs, and that is when he's going to strike. Guys, ये कुछ recap तो नहीं हो रहा पिछले मैच का? पिछले मैच का recap तो नहीं चला ये? It's a 1v2 situation, not so easy to deal with. But here comes a backup. Here comes a. Guys, मुझे देखने दो, पिछले मैच का recap तो नहीं है कहीं? चलो नहीं है. They don't even know. By same zone. और TRZ देखो same holdings. In situations ST like किधर this, है? I've seen a lot of teams. ST same holdings. Bye. They think that we'll get a 1-for-1 trade, and that's the best thing we can do. But here you should take that long range. Guys, एक बार confirm करना, ये पिछले वाला मैच ही तो कहीं recap नहीं हो गया, because you have a player in their compound. Plus, if you get a knock onto the player of HV, and then your teammate surprises and gets the second knock, you'll be at an advantage. But I think HV, they have a rough idea. Yes, they do. And now they do. They know that there is an opponent nearby. They are trying to bait him out. The shots, they do get exchanged. No damage done onto Jiggle. And now he's trying to fall back. Sus, he'll be able to get in a little bit of a good situation where Mr. Smokey can provide cover. And there's a nade being pumped. Jiggle. The nade comes in, takes down Jiggle. And that should be the cue for the players of Team Leo to move in. This is the time when the Leo Esports can capitalize. Leos have to strike in, because high voltage, they are at the weakest point. As Jiggle is still leading, the grenade goes in and Dead से Jiggle बाजी finished. Assassin भाई बहुत प्यारा. 14 at the same time. Sus also goes down, leaving Mr. Smokey in a very close frontal battle with the remaining players of high ले voltage. ही लिया था guys. Smokey भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया एंटी. And with that, Anti-team Assassin भाई, HV Assassin भाई, and Smokey भाई बहुत बढ़िया. The plus of DE as well, and Elementrix locking horns with the plus of T2K. So many trades and fights are coming in after the circle shift. Leo Esports, well, they are looking good. They lost 2 players, but 5 defeat points in their favor. Yes, they do have good elimination numbers, but they need the placement points. They have to survive a bit longer. But right now, Jane with the grenade is looking for some opening onto Zordi over there, but looks like Zordi is going to survive for now.
different room. Different room is where the nade went in, and now Zordi just left the compound. So he is trying to dodge all these nades coming his way, and he has been successful in doing so far. But let's see, Jane. एकदम से क्वालिटी आई गई, 3 players एकदम from से T2K still standing. Suyog was रिग the भाई के person पास who आया got और taken down क्वालिटी भी very आई। early on. नेट तो गया भाई, And now they're नेट trying to तो गया pester यार, this last नॉक remaining player from Team Raw. नहीं आया है, Was good, but ठीक है। then again, I think Zordi is just hiding in a very small room in which the nade cannot reach, because he's not even taking a little bit of damage. And Hello? T2K, if they're so confident हाँ, that there is just one player, it's कौन ला रहा better है? to work as a team and push in that खा ले shack. फिर, It's a very small shack. No खा ले chances तू, of a खा ले। third party can happen. Or yeah, maybe team T2K is a little bit paranoid that there will be someone on the ridge behind them. All right. So it's a good decision from them. And Zordi, for now, he will survive. Look at the position of Rig and Elementrix. Rig is holding on to a open rooftop कौन से है? concrete, and from that uphill angle, हाँ? the players of Elementrix can spot एक दो him खा लूंगा। and bring him down so very easily. Yes, his entire focus तू is बोला on और to the player गई, Zordi मैं from the बोला single और side of गई। the official. At ओ the माय same गॉड, time, मतलब he मेरे has to बोलने check से हो his रहा है क्या? मेरे backlands बोलने से because चल रहा है क्या? Elementrix, नहीं they भाई, do ऐसा have a नहीं good होता position. भाई। But देखो right now, तो looking at सीन the होता है mini-map, गेम बनाने का। majority फॉर of the एग्जांपल migrations मैं आपको of the बहुत बड़ा teams are एग्जांपल coming देता from हूँ। the southern लास्ट side. मैच देख लो, ये That मैच is देख where लो, the players of T2K are also जोन present. कहीं ना कहीं सिमिलर The बने। players अब of टीम्स की Embroxers होल्डिंग्स देख लो, are सेम होल्डिंग है। एसटी also की there. एंट्री सेम है, IEC is there. So एसटी के there स्टॉप्स are होल्डिंग chances सेम है, of जहाँ so पे many स्टॉप्स third बनाए होते parties. टीम ने In all this वहाँ पे रुकना है। commotion, the team that टीआरजेड is की having होल्डिंग the देख best लो, उन्होंने rotation क्या at होल्ड कर रखा position है। सो is हर the एक टीम का खेलने का Stallions Gaming. तरीका ना सेम रहता Complete है, जोन western के अकॉर्डिंग periphery of the उसका circle. डिफाइन है कि हमको यहाँ रुकना है, ऐसे ऐसे करना है। How much अब more गेम utility बदलती है will the जोन के side of अकॉर्डिंग, वो है T2K invest सिचुएशन in के just a अकॉर्डिंग। single compound? It's either better to not throw any more समझ रहे हो? nades, but अब Rig, जब टीम as बार soon बार as he अपने came लॉबी out, खेलती tried to रही है, take ये that टीम knock एक onto दो the दो player, बार थोड़ी ना trying खेल to रही है, इतनी बार escape एक with the साथ खेल buggy, लिए। the तो back, टीम को भी the कहीं ना cover कहीं fire आइडिया was होता है there. कि The लाइक cover इस fire जोन was पे ये टीम provided उनको from यहाँ his मिल सकती है, इस from his जोन पे ये टीम teammate, यहाँ मिल सकती है। and the knock did not लाइक come. That's एक चीज मैं आपको I'd बताता say हूँ, they टीम are को they are a ऑलरेडी little bit पता है कि lucky, फाइट हो रही है, तो इस and टीम की अगर T2K टीआरजेड की फाइट हो रही है lucky to तो not उसकी get टीम की Rig फाइट taken कहाँ out हो of रही the होगी? game as अगर well. डी के साथ हो रही है D Venom, तो ऑब्वियसली वहां हो रही होगी। तो Krita, लोग ये he is बात now करते trying रहते हैं to गेम खेलते हुए। just come देखना into this कभी particular लाइक T1 compound that the प्लेयर्स players को of बात Team करते Kunio हुए भी। TRZ are holding. Now let's see जोन Kunio. के How अकॉर्डिंग is their टीम को पता defense? होता है अपने आसपास का कि क्या सीन है, क्या नहीं The है, कौन कौन सी grenade, टीम the होती है, कौन grenade कौन are सी the टीम ones आती है। being blocked खेल from the खेल के side ही of अंदाजा Mad होता Cat, है वो। trying to find some connection and opening वो onto the रटने plus की of जरूरत D नहीं Venom, पड़ती, because right now थोड़ा TRZ, नेट बुम yes, बम it's हो a गया। 4v4 एसटी एक्शन, situation. नॉक्ड They बैरन। have to find some knock, but Stalwart Esports being the silent one, finally they have started finding knocks onto the players of Maprex वैली Esports, भी and नॉक IC दिया, takes on not just बैरन one, एंड two वैली players from बोथ आर Maprex नॉक। Esports. Maprex टीआरजेड down to two वर्सेस players. They डी have to go वेनम for the ऑन योर revival. स्क्रीन। डिग्री Otherwise, के यहाँ Stalwart पे Esports is मौली not से going to क्रेटा spare भाई them, and नॉक right now हुए हैं। TRZ, क्या they have बात है? finally managed to bring एंड one ट्रेड पे kill यहाँ पे down डिग्री from the भाई side को of भी D नॉक Venom. लिया है। Frieza तीनों goes प्लेयर down to एक main साथ। star माम्बा player, भाई and का जो now ऑफ 3 एंगल है players काफी remain क्रूशल, in जो the कि फराद ने graveyard, ऑलरेडी joining यहाँ the पे hip. स्पॉटिंग कर One रखा हुआ है। grenade could bring the demise of many players. On the other side, TRZ, Degree has been फराद taken भाई ने down. पूरा यहाँ पे Maprex लाइक Esports पिंग has करके been रखा हुआ है। eliminated. मीनवाइल Kudos to डिग्री the भाई players को of उतने Stalwart में यहाँ पर Esports. All रिवाइव courtesy देने की to them, but right now प्रक्रिया चालू TRZ हो has to चुकी be है। careful डैडा गाइस of यहाँ पे third मीनवाइल party धीरे moving धीरे करके up ऊपर from the बढ़ने side जा of रहे Red हैं, Eyes, जिसमें अभी and आपने even a देखा होगा fourth टीम्स party यहाँ from पे the side नजर of रखे हुए हर एक TRS. एंगल के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। माम्बा It's भाई it's not just a hell zone. As soon as you step out, you will be fired on from 4 different angles. हाँ So they'll करते हैं have to भाई, be क्लच very गॉड careful भी while taking किया these था। fights. क्या Even बोल when रहे हो, you क्या are बोल रहे able हो to भाई? get those knocks onto your opponent, you need to रुकाया भाई, consider आप the क्या third बोलना party चाह रहे हो? factor before trying to push in and maybe eliminating the whole squad. So Team Kuyo, they've just gone for the 2-2 split in 2 different compounds so that the whole team does not get taken down simultaneously. But here comes the push from the players of Team DE Venom. And now it is Crucial fight है very TRZ के लिए। difficult for support to arrive. 4M, टीम्स बैठी हैं यहाँ पे Kunio थर्ड पार्टी TRZ करने के लिए। will have to be
very careful with this fight. They have to be. They can't afford to lose numbers in this situation when so many people are present. But right now, Rare X on a close battle, trying to find some opening with that AKM, going for a pre-fire, but there is no player present. Yes, there are so many smokes required, but Rare X finally finds an opening and takes on Tommy over there, trying to find the second one as well, and he certainly do so, but the last player of Venom DE eliminated. DE का वाला सीन चल नहीं रहा यार. वीक 2 पे जो मारा है ना DE ने, have to be prepared for the plus of DE because DE वो अलग ही लेवल मारा and it's just a perfect grenade right on the face of Matt. देखा guys, DE थर्ड पार्टी के लिए ऑलरेडी रेडी बैठी है, तो मैं ये बात कर रहा था. DI थर्ड पार्टी करा, मैट कैट यहाँ पे नॉक्ड है. So Kunyo might be able to come in with कल नहीं है ब्रो PMP, कल छुट्टी है प्लेयर. He gets the tag. Now the trades have to flow in.
Slayer, sir, is trying to go for the pre-fire, the pre-firing angle. Vicious is also going in for the support. Slayer gets taken down from Rare X's M4. And Kunyo now, they have an advantage because they'll have two different players from the lower third as well coming in. Mamba gets a double, and Dead Eyes, who thought that they had that upper hand in the battle, get eliminated within a blink of an eye. But now TRZ, they have the big weapon. One of the player having a Groza. Now they have been awarded by the upgrade in the loot by the players of Dead Eyes. Right now, looking the players of Raw, Zordi is fighting for his life. He's trying to move inside the circle. The players of Elementrix can spot him out, but right now Elementrix, they are busy engaging in a fight. T2K is also there, and Orange is leading big with an M416 close on the target, but he's going to lose that Elementrix is going to take him out. At the same time, the confirmation has been made, but back with the DBS, but it's a far off angle. Zordi Raw takes J over there down. At the same time, Abrupt Gangstar takes the remaining. Now Zordi gives a confirmation with mini tapped up shot, leaving Sandesh all by himself. But Sandesh has his own worries because the players of Abrupt Stairs are also in the close proximity. But Raw, what have you done? You have given away your position. Now migrating inside the circle is going to be a very big challenge for Zordi. DRS though. They find TRZ ने काफी अच्छा डिफेंड करा. I don't think so they'll have a problem to move inside it, but they try to take a fight. They try to gatekeep some teams, trying to rack up the numbers. Also guys, 318 लोग देख रहे हैं. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, so make sure to hit the like and subscribe to the channel. Also guys, join our Telegram channel. And Degree, he will be subject to यहाँ पे अनकट अनसीन e-sports का आपको देखने को मिलेंगे. सबसे पहले संदेश भाई, निमान दे भाई. दौड़े को लिया and रॉ को एलिमिनेट करा. संदेश भाई मान नहीं रहे. DRS, STE and IHC 4 मैन है. बाकी सारे अगर आप देखो 3 मैन, T2K 1 मैन. संदेश भाई अपने TRZ well defended. 7 eliminations team निकाल चुकी है. 6 eliminations by team T2K. 7 eliminations जैसे हमने आपको बताया. 5 elimination by team Leo. 2 men standing. Down the numbers of IHC takes on one player, but the question is, can he get the confirmation? But right now, Degree still trying to fight the players of Abrupt Players on uphill. It's not going to be so easy. कल से मेरे भाई कल PL playoffs रहने वाले. जो भी लोग पूछ रहे कल playoffs रहेंगे. और आज का मैच, अभी का मैच काफी इंपॉर्टेंट है. वाइब्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. एसटी के लिए कौन इस मैच के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग पे #1 पे आने वाला है. Mama still trying to give some peek, trying to find some glimpse onto the players of Abrupt Players, and Sandesh with that buggy is being the brave man that could result in his demise. By the way, अगर आज के दिन पे ना एसटी का दिन अच्छा नहीं जाता है तो ये वही सीन हो गया. एसटी का पहले दिन अच्छा खेलो, देन थोड़ा डाउन. अब 4th और 5th डे पे कमबैक करना. 3rd डे भी अगर अच्छा नहीं जाएगा 4th पे, नहीं तो 5th पे कमबैक करेंगे. सेम पैटर्न. Probably looking for a shack now so that he can find safe haven in that shack, but I don't think so he'll find it anytime soon. He has to settle off for the natural rage that he gets. Kunyo, they also are on the edge, so the first fight, if they move inside the zone, could be with Sandesh himself. ASL though would try their level best to just make sure Kunyo does not move from here. They have a very good height advantage, and they should make the most out of the situation. Degree, he is a little bit paranoid, and rightfully so, because ASL can peek from any angle. Vishal is just showing himself to the players of Kunyo, making sure no heroics could be attempted, whereas Chari, he has closed in some distance onto the players. And I have to take my words back. The brave move that came from the side of Sandesh of T2K has resulted in a position inside the circle. Now he is inside the circle and perfect position to gatekeep all these teams fighting on the periphery or towards the southern end. But right now, Leo Liquid is bringing down the numbers of IHC as he takes on Soil over there. But IHC Godless fighting in high voltage takes on Praveen over there. Liquid getting a confirmation on the Soil. So IHC, they are fighting on multiple fronts. They lost one player, but still 3 men standing and high voltage. is the last man standing for HV. But he survived that grenade, but फ्लैश डैमेज पड़ा. बहुत प्यारा नॉक एंड ट्रेड पे एंटी मलिक भाई से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ ये सीजन पे. द वे ही प्लेड, जस्ट अनदर लेवल का गेम प्ले हमको देखने को मिला है. ओके ब्रो, ओके लियो. But Starlord Esports going up against the players of Skylights Gaming, and looks like Nima has been eliminated. Unyo TRZ has 7 frags to their name, and they're still surviving with 3. So it's again another team to look out for. Stalwart with all 4 players standing,
They have that upper 1v2 or hand, not? but Oh what a shit! miss! What a miss from Vector. Mr. Smokey. I Vector. thought both the players were taken down in that situation, but it's all down to Chari. A nade being cooked. It's better to play with a weapon here, Liquid, and he misses the opportunity. Now Chari has an opportunity. Oh, ना anti-ASL. स्मोकी भाई के साथ पता क्या सीन हुआ? वेक्टर ही थी आई गेस। मोस्टली वेक्टर का रीलोड आपको पता है कितना गंदा होता है। एक मारा स्प्रे, वेक्टर का रीलोड फंसा, गन चेंज करने लगी, उतरे पे जैसे निकले बाहर वैसी एएसएल के बंदे ने दे दिया, बैकअप आ गया टाइम पे तो बच गए। ब्रो बांग्लादेश की कौन सी टीम है? मैंने बताया ना इंडियन भाई, आपको बांग्लादेश की बैड इंटेंशन है, प्रॉपर एंड टीआरजेड। टीआरजेड ने काफी अच्छा डिफेंड करा है। एसजी, एसटीई, डीआरएस, लीओ। On the other side, we have the players of DRS in a split position. Yes, they do have good position, but they have to engage in a fight. So Stalwart Esports, they are the Guys, क्या लग रहा है किसका चिकन आने वाला है? What do you think? This is their game to lose. Which team? According to this situation and positions, what do you think? कौन सी टीम का यहाँ पे चिकन आने वाला है? According to you, एक बार कमेंट करके बताना। T2 के लास्ट मैन संदेश पाजी लेफ्ट है, एंड अगर आप देखते हो TRZ के 3 बंदे हैं, अगर आप देखते हो RS 4 मैन है, STE 4 मैन है, एक एलिमिनेशन सभी प्लेयर्स के पास, इक्का दुक्का एलिमिनेशन सबके पास, काफी इंपॉर्टेंट मैच। वेक्टर रीलोड, वेक्टर का रीलोड सबसे गंदा है भाई। अगर तुमने ले लिया वेक्टर में तो ले लिया, अगर रीलोड फंस गया तो समझ लो तुम नॉक। इतना टाइम देगा ही नहीं दूसरा बंदा। And also Nirzad, all of these players still Even lobbing surviving in there. 80 meters, 90 meters to move inside the zone and no problem for them. Already the southern Also guys 415 लोग देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस फास्ट जल्दी से कर दीजिए। एंड अगर नए हो तो अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। आज गाइस सबसे ज्यादा मेहनत करी हमने, देखो स्ट्रीम कितने घंटे से कर रहे हैं, एक बार चेक करो। ऑलमोस्ट 6 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं, 2 से 3। माय गॉड, ऑलमोस्ट 6 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं गाइस। इस मेहनत के लिए, हमारे हार्ड वर्क के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गो बॉयज, एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। 50 हमारे मेंबर्स होने वाले हैं बहुत जल्दी। बहुत ही तगड़ा मैच है टीम्स के लिए, बहुत क्रूशियल मैच है आज का। Also guys, you can explore our memberships. Yes, membership explore कर सकते हो आप। अगर आप चाहो हमारे चैनल को सपोर्ट करना, so you can join our membership. Control. They have the information about so many teams, and the way they're holding all the different angles, Stalwart Esports are looking so promising. They have the best resources in their hands. The grenades, the molotovs, the first aid, everything is in their favor. On the other side, DRS not in the best spot right now, but IHC demo is going to bring down Liquid from Leo Esports and Sandesh. IHC को दिक्कत होने वाली है। Actually, he eliminated the last player of Leo Esports. I'm sorry, and Leo Esports is bye-bye. But Zed picks one player from DRS, Rules, who was going for a flank angle. Zed को देखा काफी बढ़िया खेल रहा है। They are down to 3 men. And TRZ up close front. Nizad ने अल्फा 7 की जर्सी पहनी हुई क्या? Last man standing for T2 Esports have been eliminated. कैसे होगी भाई? एकदम बढ़िया दीपक शाह, आप कैसे हो? To his name, Tops gets a confirmation on the rolls with many tap shots, looking for more onto the plus of DRS. TRZ फटे डेल्टा भाई, फटने वाले डेल्टा भाई शायद से। डेड आ रहा। that was डिग्री भाई बच गए, पुश कर दिया आगे टाइम पे। बहुत प्यारा गैंटे भाई ओपी भाई। गुड जॉब फ्रॉम एक्शन ने नेड का एजे का फिनिश निकाला। 7 एलिमिनेशंस निकाल चुके हैं एसटीई। अगर इस पॉइंट पे एलिमिनेट हो जाएगी तो 5 पॉइंट मतलब 12 पॉइंट एसटी अगर इस पॉइंट पे एलिमिनेट हो जाए तो लेके जा सकती है। 12 पॉइंट 15 पॉइंट चाहिए एसटी को #1 पे ओवरऑल पे आने को। They have a very good area on the map. Stalwart though looking to contest. Action paired and M4 with a DBS is looking to get in the close range areas is what I think. And DRS again going for the high ground. अरे अल्फा 7 की जर्सी है ना ये। अरे न्यूज़ ने देखो अल्फा 7 की जर्सी पहनी है। And DRS is going to be IHC. नोटिस करा अल्फा 7 की जर्सी मैंने ऐसे देखा है तो अल्फा 7 this situation. It's a Mexican standoff. टॉप एक्शन की होगी पक्का। Between all these teams. I see. Knocked. I'm telling you, Faze, this is the game for the players of Stalwart Esports. There is Finished. no stopping them, but Killer YTT is going to stop. Killer YT 5 eliminations 3 men. अब यहाँ पे इक्वल कर दिया 3v3v3। 2 मंगोलियन टीम के बीच में 1 नेपाली रीजन की टीम। For the winner chicken dinner, 7 defeat points already in their favor. DRS gaming, they don't have the majority of the realistic. TRZ OP, yes bro, TRZ OP in the chat कर देना, बहुत अच्छा इस मैच में खेला। And well played team TRZ. Getting defeat points as well. Nirzad
on the lower ground, and looks like Killer has an idea, vague idea, where Z could be, all courtesy to that smoke that has been deployed with the plus of Starlet Esports. But Gyante, well, he's not going to lob it to the perfection, so that means that Z has survived. At the same time, Gyante has given away his position. Stalwart and DRS, I think they're fighting it out, and IHC is all okay with it. Godless finally reveals himself to the players of DRS, but now with stage 8 closing, all these teams will have to move towards the center of the zone, because stage number 9 will force you to do so. And that is where the players of DRS will falter, because they're all grouped together and on the very edge. And Action realizes it and is trying to close in the gap. And Stalwart looking to take zone this guys ये है head on competition first with the zone खुद players of closing होना DRS start होगा and have their distance with IHC so that they have enough time to reset. Although majority of the fight is going to be a 2v3 against DRS, because Tops, he'll just wait. Demo, a great nade, will take down Killer, and now the remainder of the two players of DRS, they're trying to push in. Delta, pestered again, tapped out again. Demo will get the better of Delta. The trade is there onto Alex, but Gyante will be taken down. 8 elimination team ST. And now Stalwart they activate. Now they'll take this fight. ST #1 इसमें ST #1 overall पे. Perfect third party from Stalwart. And they get ST chicken dinner and ST I guess #1 पे इस मैच के साथ. I think so. पता लग जाएगा, अभी आ जाएगा. इस मैच के बाद ST #1 लग रहा है मुझे. 3 एलिमिनेशन 4 हाँ. ओवरऑल रैंकिंग पे ST #1 आ गई है. गाइस एक बार ओपी कर देना तीनों टीम्स के लिए, चाहे वो एसटी हो, आईएचसी हो, चाहे वो आपकी डीआरएस हो, तीनों टीम के लिए ओपी इन द चैट कर दो विद द लव एंड टीआरजेड ओपी इन द चैट टू. इस वे में उन्होंने खेला है 4 टीम्स के लिए. #1 पे ओवरऑल रैंकिंग पे जैसा आपको बोला था 11 पॉइंट चाहिए, 15 पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट निकाल दिया एसटी ने, चिकन निकाल दिया है. एंड न्यू #1 ओवरऑल रैंकिंग के अंदर साउथ एशिया पे टीम स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स आ चुकी है ऑफिशियली आपकी स्क्रीन के सामने. #1 ओवरऑल रैंक मतलब अब #2 पे आ चुकी है. वाइब्स अब जो 3 दिन आने वाले आगे का वो काफी ज्यादा क्वेश्चन रहने वाला है. एसटी आ चुके हैं #1 के ऊपर. और गाइज 500 लोग देख रहे हो. गाइज इफ यू आर न्यू टू द स्ट्रीम मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गाइज ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर. ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, इसको जाके ज्वाइन कर लो. हमारे गाइस 50 हमारे मेंबर्स होने वाले हैं चैनल पे. जाओ जल्दी से, लाइक हमारा डिस्कॉर्ड है, मैं स्पैम कर रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लो. 50 हमारे मेंबर कंप्लीट कराओ. एंड यहाँ पे गाइस 4 एलिमिनेशन निकाले हैं मिस्टर स्मोकी भाई ने. वो क्लच अगर आपको याद होगा बहुत प्यारा निकाला था मिस्टर स्मोकी भाई ने, असासियन वाला, बहुत बढ़िया. तो गाइस जाओ एक बार, ये हमारा लाइक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम को हमारे जाओ, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम. एंड न्यू #1 बन चुकी है टीम STE. दिस वाज द लास्ट मैच. बोला था 100 पॉइंट. यस, परसीजा आज नहीं थी. नहीं मेरे भाई, परसीजा आज नहीं थी, बट कल मोस्ट प्रोबेबली परसिया हो सकती है. गाइस कल मोस्ट प्रोबेबली हम PEL ही स्ट्रीम करेंगे, बट पहला मैच जो है हम PMSL से स्टार्ट करेंगे. PL क्योंकि हमारा लेट स्टार्ट हो गया. गाइस जाओ जल्दी से हमारे जल्दी से गाइस ज्वाइन कर लो. हमारा टेलीग्राम छोटा सा है. अगर आप टेलीग्राम चलाते हो जाके यूज कर लेना. एंड #न्यू #1 आपकी स्क्रीन के सामने. एंड ये मैं वहाँ भी कर दूंगा शेयर अपने टेलीग्राम पे. चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम्स वगैरह पे हो जाएगी. बाकी यस, बाकी अगर आपके कुछ पूछना है, कुछ भी चीज़ें हो, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो. सबसे ज़्यादा मुझे PL में हाँ
काफी अच्छा प्लेस पॉइंट निकाल रही है अब किल्स के साथ परसिया। ओके ब्रो, आज खेलती तो मजा आता परसिया को देखने का, बट परसिया थी नहीं। ओ तुम्हारे भाई ने जीत लिया भाई, तुम्हारा भाई जीत गया भाई। मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीत चुका हूँ। मेरा रैंक तो दिखा दो, कनाडा वर्सेस कैनवड। ओ भाई ये कैसे हो गया? हेल, कौन जीता गया मेरे को? सिद्दीकी भाई। ओ किस्मत हो तो मेरी जैसी हो गाइस, वरना ना हो आज के दिन पे कि भाई ओपी। भाई मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैं जीतूंगा, बट यूजी भाई कौन विकेट लेके गया स्कोर? जेसन होल्डर हमने देखा है एक्चुअली। तेज शर्मा, यार सैम करन क्यों नहीं आ रहा? 12 ओवर हो गए, सैम करन क्यों नहीं हमें कौन? ब्रो फेज का अग्रेशन देखो, लास्ट 2 के मैचेस देखा मेरे भाई, कौन सी टीम पे सेटल। अरे 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 अरे, अच्छा नहीं लगा गाइस। हियर वी गो, ओवरऑल रैंकिंग गाइस के सामने आ रही है, बट हमको देखना है। हाँ हाँ हाँ, फ्रेज का अग्रेशन। अरे अरे ब्रो रुको जरा, सब्र करो, आगे देखो क्या होता है। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए गाइस, आगे देखिए आगे क्या होता है। एक बार ओवरऑल रैंकिंग आने दो। लो भाई, द न्यू ओवरऑल स्टैंडिंग्स, जहां पे आपको देखने को मिल रही होगी स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स। स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स आपकी टीम 497 पॉइंट्स के साथ, एंड 4 मिरेकल वाइब्स जो है लाइक जिनके पास #1 का गैप था वो हो चुका है कम। तो दिस इज द ओवरऑल रैंकिंग जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, और इसको हम शेयर कर देते हैं किसके ऊपर? तो अपन शेयर कर देंगे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी, इसको टेलीग्राम के ऊपर गाइस शेयर कर रहा हूँ, आप भी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मॉडरेटर्स प्लीज अपना टेलीग्राम जो है जल्दी से स्पैम कर दो। Guys, this is the overall standing after a week 3 and day 2। तो स्टॉलवर्ड ई स्पोर्ट्स ओवरऑल रैंकिंग के ऊपर #1 पे आ चुकी है, #2 पे वाइव्स थी पहले, तो आज के दिन पे डे 2 पे टेक ओवर कर दिया है। लास्ट मैच पे चिकन था, एंड डीआरएस अगर देखते हो गाइस 3rd रैंक पे है ओवरऑल। अगर हम बात करें वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 जो ऑन गोइंग चल रहा है, देन डीआरएस 345, P2K 338, ISC 332, Skylights Gaming 322, Leo Sports 309, Maptex i8 and high voltage। तो these are the like performance जो overall है। एंड अगर आगे की बात करें, आगे की रैंकिंग का क्या सीन है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वेट करो। तो आगे से बढ़ाते हैं। एल प्रोबेबली अपडेट हो गया होगा। तो यस, हियर वी गो, द एनबी स्पोर्ट्स, Tadai guys, TRZ, Seal Sports, Venom, Abrupt Players, SITM, Raw and Elementrix। So these are the all teams, जो 20 टीम्स के पॉइंट है। एक बार नीचे रिएक्शन देके जरूर बताना इसमें आपके क्या व्यूज रहने वाले हैं। हैशटैग फुपर T2 के है ना? तो गाइज मैंने वीडियो शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम पे भी, जो मैंने अभी जितना भी बोला है, तो आप जाके हमारा टेलीग्राम जरूर चेक कर लेना।
तो दीज आर द डे, आज के दिन का ओवरऑल सिनारियो जो भी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, जो भी सीन हुआ है। बाकी और कुछ इन्होंने स्टैट दिखाए हो तो पीछे कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस एलिमिनेशन लीडर बोर्ड भी आपको शेयर कर देते हैं। एक मिनट, एलिमिनेशन आ गया। टॉप फ्रैगर्स डे 2। मैं सारे गाइज ये सारी चीजें मैं साथ साथ टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ। तो भाई ये चीजें मैंने भी डाल दी। गाइस हमारे टेलीग्राम पे गाइस सारी चीजें डालते रहेंगे। एक बार आपने अगर हमारे टेलीग्राम को फॉलो नहीं करा है तो जाके फॉलो कर लेना। आज के दिन का समरी सारा कुछ हमने डाल दिया है। तो गाइस दिस इज और टेलीग्राम, जाके ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम में मैं स्पैम कर रहा हूँ फिर से। और आज की जो रैंकिंग्स है पीएमएसएल की वो भी अपडेट हो जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर। अपडेट मिलेगा बीजीएमआई अनबैन लीक के रिलेटेड। यस, बीजीएमआई अनबैन के रिलेटेड भी लीक मिलेगा, सो आप ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन कर लो गाइस, सारे के सारे लॉन्डे 50 सब्सक्राइबर्स करवा दो हमारे कंप्लीट। आज के दिन पे कोई नहीं, कल के दिन पे 100 हिट करेंगे डायरेक्टली। क्या बोलती पब्लिक? यार शिट। बाकी गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे अपन लोग, ठीक है? आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी कल मिलेंगे मस्त मौज में। हट भाई। बाकी गाइस कल मिलेंगे स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक बार जाने से पहले हर्ट स्पैम कर देना। अब स्ट्रीम को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आज की स्ट्रीम हमारी सबसे लंबी स्ट्रीम है, 6 घंटा 16 मिनट। ओ माय गॉड, 6 घंटा 16 मिनट आपकी स्क्रीन के सामने। सो गाइस इस एफर्ट के लिए 117 लोग देख रहे हो, तो जल्दी से आके गाइस एक बार लाइक कर देना प्लीज, एक बार लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस ये खुला क्यों नहीं? डिस्कॉर्ड खुलना चाहिए ना। तो गाइस ये है हमारा डिस्कॉर्ड का अनसीन, देख रहे हो? ये हमारा डिस्कॉर्ड है, दिस द लिंक, जाके ज्वाइन कर लो। 47 मेंबर्स हो चुके हैं, इसको करवा दो आज के दिन पे यार कॉपी। डिस्कॉर्ड तो आप चलाते ही होंगे। तो गाइज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्पैम थोड़ा सा। ये हमारा डिस्कॉर्ड था, जाके ज्वाइन कर लो। ये हमारा डिस्कॉर्ड है, 3 बंदे चाहिए, 50 मार दो, आज जाओ। आज हमारी जनता इतनी एक्टिव नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल इसको 100 करवाएंगे। इस एफर्ट के लिए गाइस जाके कर लो। ये हमारा है व्यू इन टेलीग्राम, क्लिक करने पे। अच्छा डाउनलोड करना पड़ता है क्या टेलीग्राम? विंडो के लिए टेलीग्राम अलग से आएगा क्या? अच्छा ओके, चलो कोई नहीं, छोड़ो, देख लेंगे बाद में, कोई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। आज की स्ट्रीम को यहीं बट रिव्यूज टीआरजेड स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया भाई, आज के दिन का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हो। मंगोलियन साउथ एशिया टॉप यूनिवर्सल एमवीपी, यस भाई। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं स्ट्रीम को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो लाइव स्ट्रीम के अंदर। सो अपन एंड करें, कुछ नहीं पूछना। थैंक यू सो मच, बहुत देर हो गया आज करते हुए।
अल्लादीन बिन मैं जिन मैं बंधे सीन विच 2000 क्या तीन ऊपर मेरे जैस्मिन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मिन और let's go अल्लादीन बिन मैं जिन मैं बंधे सीन विच 2000 क्या तीन ऊपर मेरे जैस्मिन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मिन और नीचे मेरे कालीन मेरी किस्मत हो चाहती बराबर दो नो ओजोन लेयर पर हूँ बैठा मैं देख रहा तेरी मंजिल सो लो तेज तरार में ब्रेक से वॉर है बार्स घातक बजे लो लो मेरी जीप फिसलती स्लो इनकी चीख निकलती ओ नो सीट के सीट में बैठा ठीक जैसे धोनी हर वक्त करीब मैं जीत के बीच में जी के ये बनते पहाड़ी पर हरकत देख मुझे लगते बीच के वो लगते नीचे से टीचर पे कीचड़ इनकी तरह इनके फैन भी फुद्दू और फीचर फटीचर फेक फूकते फीके ये सभी पर हम हसल हर दिन चिल जैसे सर्दी ना करते गुंडागर्दी जितने साथ मेरे कभी गिन हिल टॉप के स्टिल बाप ये हिल ना सकती हिल हाँ कुछ मिजाज क्योंकि खुद पे नाज पर खूनी बार अगर हिंसा हो तो दिन दिन मैं जिन मैं बन गए सीन विच 2000 क्या दिन ऊपर मेरे जैस्मिन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मिन और नीचे मेरे कालीन अल्लाह दिन दिन मैं जिन मैं बन गए सीन विच 2000 क्या दिन ऊपर मेरे जैस्मिन और नीचे मेरे कालीन जनता भी बोले नागिन दिन मैं दिन दिन करूँ आज के दिन ऊपर मेरे जैस्मिन और नीचे मेरे कालीन शब्दों में जादू में जीनी आग निकले लफ्जों से बेकाबू हुआ विमी साथ है कट्टो दिल में छुपी बातें मैंने लिखी है शिटी रैपर्स नजरों से भागे बने भीगी दिल्ली अब उड़ाते इनकी खिली ये दिखावे के है शेर अपने आगे लगी चीटी जिसने इज्जत ना की थी हमने सोच करी सीधी ये चींदी अपनी बीवी को भी बोलेंगे अब दीदी यहाँ अंधे हो आप जनता बस देखे अब बंदे का नाम पहने नकाब ये इंडस्ट्री जाली यहाँ काम निकालो बजे घंटे पे आप कैसे देखे कोई ख्वाब हुक्म करो आका इनके चमचे है पास बाबा हिमाचल से लाए रियल ज्वाइंट ये सीन लगे फेक तो फिर करते हम साफ मत होश करे ये स्किल्स सच बोल तुझे क्या ना चिल शब्दकोश तुझे देंगे स्वपन घुसे ये खरगोश अपने बिल में संकोच ना दिल में जब संगीत बजे हर दिन ये घंघोर कलयुग पावा हम ना रुकेंगे अगर तुम साथ हो तो त्रिशूलधारी नंदी की सवारी चंद्र सी सुध रूप अर्धनारी मृत्यु को आंसू देते भांग प्रसाद लेते पल में सब कुछ बना और पल में कर नाश देते दिनों में जब भी दिखा अंधेरा है भोले की रातों में मिला सवेरा कंठ में विश्व से गहरा है अंत पे अंतेरा ही तो बसेरा जन्मों की चिंता न कर्मों की परवाह धर्मों में भेद न परी न परिहा आए जो एक क्षण बाबा के चरणों में पल भर की नहीं वो परसों की कृपा है जल जीवन कंकड़ा आधार से अनंत का डम डमा डम डमरू बाजे जय बूम शिव शंकरा हाँ बाबा को प्यारे सब भक्त निराले हैं रास्ते खत्म सब तेरे ही द्वारे है विकार हमारे अब सारे किनारे भटका भी बाबा अब तेरे हवाले हर एक दिन स्थान तेरे विभिन्न विभिन्न अनगिनत भक्तों को तुम शक्ति देते गिने न ऋण वस्त्र चालू वश कठिन मुंड माला चक्षु तीन ज्ञान के तुम राजा ये कलयुग भी ना चले भोले के बिन ये भूमि ये अंबर ये चांद सितारे देखे अनदेखे सब तेरे नजारे जो भी है तेरा है तुझी में सारे देवों के देव और भूतों के प्यारे भोले की भक्ति भावना भूल तू धौला धार में धरती की धूल जय जटाधारी जलंधर के जनक त्रिनेत्रधारी तेरा तीखा त्रिशूल हाँ फिर काहे का घमंड हिले ब्रह्मांड जब प्रचंड सबसे अलग सब में पनप झप के पलक मृत्यु दंड स्वर्ग नरक ना करे फर्क हाथ कमंडल गले में सर्प सर्व सत्य सूर्य बर्फ हर हर महादेवर तरफ